Hello. Namaste, assalamu alaikum. Welcome to Cricket for Us. And today we're going to be covering the fourth T20I, the final T20I from Karachi between Pakistan and England. We'll shortly start the stream with myself as the main commentary guy. And I've got the match running concurrently, so I will give you the updates as and when I get them. I know I might be a little behind just because of the online stream is a little slower, but all's well that ends well. But yes, today we aren't doing Urdu commentary. We're doing standard watch along commentary that I have done for quite some time from basically the beginning of the channel. So yes, thank you everyone for joining. Do appreciate it. If we look at where we are up to at the moment, we've got about 5 to 10 minutes until the toss happening, and then I'll give you any updates with regards to that as we go through. There's a couple of comments here. Sadiq Ali says Pakistan. Yes, I hope Pakistan wins as well. Thank you very much. Asya says Coke on Pakistan. I believe she may have meant come on Pakistan, but it's all good. I'm happy with that. Whatever floats your boat. And Reflect as a Human says Cameron Green is smashing Indian bowlers so badly. Yes, he is. I saw that just before I started, and indeed he is. He's going ballistic. He did go ballistic, and unfortunately, as soon as I mention him, he gets out. But 52 of 21. What a half century, man! Goodness me, he's super pace with the bat and genuinely showing the brilliance in this form. Also, just want to add the most T20I matches. Pakistan has now played the most number of T20I matches out of all the nations that play T20I cricket. Pakistan is number one with 200 matches. This is their 200th match, with India second, then West Indies, New Zealand, and then Sri Lanka. So Pakistan are setting up their win record isn't the greatest. It is above 60%, which is great. But 200 matches, a huge achievement. The first T20I was played back in 2006. So yeah, great sight. So hopefully Pakistan can bring on some good memories for this particular match and actually, take it to the win, take it till the end. It's going to be an interesting one. I don't know about many changes personally. I think the only change I see is dropping was bringing in Asif Ali potentially instead of not Haider Ali, but maybe Iftikhar, maybe Khushta, like one of those guys. I think Asif Ali might give a shot. There was talks about Usman Qadir being dropped and Abrar Ahmed being played instead. I do feel, and I spoke to Ramis about this yesterday, I do think Pakistan should consider giving Usman Qadir another game because it's in Karachi, and then when we get to Lahore, you play Abrar Ahmed for all three matches. However, knowing the way Pakistan loves to make sharp changes sometimes, they might just bring in Abrar Ahmed and then also bring in Naseem Shah instead of someone like Dahani, which I don't think they should do. I think if Naseem plays, but Dahani needs to stay in the side. But based on the previous performance, he got hit for 62 runs. He might be low on confidence. I don't want Pakistan to drop him. I think Pakistan should stick with him. Otherwise, it's not great. It's not great from a Pakistani perspective or a morale or a confidence perspective. Let's look at this. Average runs of wickets, right? This is from number 3 to number 8 in terms of wickets. Pakistan has the worst average and one of the worst strike rates, right? Again, I don't know if I can show you this or you can see this, but look at this. You can't see this. So Pakistan has 10 matches, an average of 17. This is in T20Is in 2022. So when the openers don't fire, Pakistan is horrendous, right? Pakistan is horrendous. They average 17 per wicket and they strike at less than 130, which is not ideal, especially if you're considering Iftikhar Ahmed and Khushtil Shah and Asif Ali and even Nawaz or Shadab, all those guys as potential finishers or hitters. It's not working for Pakistan. So we got to look at that and try and find a solution for it, because unfortunately it is what it is, and Pakistan needs to find a solution for this middle order issue. And there are lots of people who talk about the issues, but not many people actually try and address it. And I've been thinking about ways to address this, but unfortunately we haven't found a way to address it at the moment, right? Let's look at the pitch and weather. And you might be able to hear this.
I like how it's Uruj Mumtaz and Babar Azam and Moin Ali all walking together, looking at the pitch. That's an interesting way to do it. Starting with you first, I know the two of you have been having an off-air discussion of how difficult the surface is. Yep. Does it look any better? Yeah, it looks better than when they beat us, but the rookies are not easy for us to read anyway. But yeah, they played really well so far, all three of them so far. And I'm not expecting anything different now. Yeah, it does look like another 190-200 pitch, not gonna lie. Do agree with that. It does. I think that's a valid point. Pakistan last time wanted 160 to 180, but England completely disregarded that and scored over 220 runs. So yeah, if Pakistan bowls first, Pakistan would be looking to restrict England as much as possible, because it was a train wreck in the last game, right? The way England were dismantling the Pakistani bowling, it was a train wreck for Pakistan. Babar has a point. He's being asked, how does it feel about facing 150 km/h bowling, kilometers per hour bowling? And his response makes sense. Yes, we do have those types of bowlers too, but the way the consistency at which Mark Wood was bowling, it's one of the fastest overs I've seen in a very long time. In a very, very long time. I'll be honest, it's probably the fastest over by an Englishman ever. And I spoke to Aaron, the cricket connoisseur, about this, and he agrees. Yeah, it's possibly the fastest over in cricket for an Englishman. So that's great news in that case. Fazan Khan, good morning. How long are you planning on streaming? I'm planning to stream at least for the first innings, hopefully for the entire match. But I think at least for the first innings, and then I'll see if I am able to stay. If I'm able to stay, then yes, obviously I will hang around. We have the toss, everyone. Do let me know if you can not hear the commentary in the back. The aim is for you to hear the commentary in the back. Heads of the call. All right, England win the toss and they've elected to bowl. But we also want to really get batting and bowling first, so it doesn't really matter about every ball. You got 199, and the speculation was that should be a good score looking at the wicket. How far do you think would be a good score for you guys to chase down? But we obviously, we always believe if a team gets 200, then we're good enough to get more than that. If they get 230, then we're good enough to get more than that. So wow, that sort of mindset, because we feel like we have a very good batting lineup. England do have a very good batting lineup. Get some early wickets, hopefully, and then put them under pressure and try to restrict that score. You guys have been trying out a lot of different combinations, giving opportunities. At what point in the series do you think you'll be able to pick from your solid 11 or solid 15 for the World Cup? I think it's just getting game time. Some of the guys haven't played much and they're coming back from injuries. Someone like Alex Hale's just coming back in, so we don't want to rush everybody back in. But obviously, towards the back end, we want to up the ante a little bit and probably play our strongest side. We're playing a very strong side anyway, but the guys who have come in so far have done really well. So we're playing our strongest side as much as we can. Oh, okay. 3 changes. 3 changes. Wow. Comes in for Malan. David Willie comes in for Curran. Knew it. And Ollie Stone makes his debut for Mark Wood. Oh, instead Mark was not playing, but Ollie Stone is quick too. Love the cheer when Babar comes on screen. I think it's 180, 190 is defendable. So we are trying to run in the bottom pressure. Any team changes for you? We have 2 changes. You hear that Babar chant in the background. Love it. It's a big moment in Pakistan cricket. Wow. 100 T20I for Pakistan. You've played many. What has been your best match or favorable moment in your career for T20? It's an honor to lead the Pakistan team to 100 match, especially in front of the home crowd and home conditions. And favorite moment is, I think, this World Cup. Fantastic, Babar, and good luck for tonight. Thank you. And the news from the centre is that England have won the toss
and we'll have a bowl. Yep. So England win the toss, elect to bowl. England side, we have England's side. I'm going to read through it. Now, Phil Salt, Alex Hales, Will Jacks, Ben Duckett, Harry Brook, Moeen Ali, David Willey comes in for Sam Curran, Liam Dawson, Adil Rashid, Ollie Stone comes in for Mark Wood, because I'll be honest, Mark Wood is a really, really good bowler, but he needs rest. He's coming back from injury, but also if he doesn't get enough rest, he bowls terribly. So I totally understand where they're coming from there. And then we have Ollie Stone debuting. Ollie Stone is quick. He bowls good 140, 145 kilometers per hour and can go even quicker. From my knowledge, he can go up to 150 as well. But let's see how he goes against this Pakistani batting lineup. Reece Topley as well at the end. Bounce, height, he has everything. He is an X-factor bowler. He's recently developed, I mean in the last year and a half or so, he's developed good and very effective slower balls, which really help with someone who's bowling from that height. So 100% great decision. Good call by England to stick with players like Will Jacks and Ben Duckett, etc., but also bringing in someone like Ollie Stone, and Reece Topley is an absolute beast. So thank you everyone for joining. Please do like, share, and subscribe. Really helps the content, really helps me do this more often. And I know it's not showing yet on here, but England have won the toss. They have elected to bowl. Pakistan's team, Pakistan has made a couple of changes. I'll wait till it gets updated on Cricket Info before I tell you what those changes are. But from what I remember them saying, Asif Ali is in and Wasim Jr. is in. Wasim Jr. is in instead of Shahnawaz Dahani. Asif Ali, I'll have to listen who he's in for. Shouldn't be Heather Ali. It should be one of Iftikhar or Khushdil. I don't think they should go and dropping Heather Ali after 3 games where 2 matches he's actually gotten a chance and 1 match where he absolutely flopped, which was the match on Friday. So overall, I've got a feeling that Pakistan will be. This is a good team. This is a good 11 that they've picked. I'll wait until this gets updated. And yeah, got the toss there as well. So all good in the hood. There's a couple of comments here by Faizan Khan. Thank you very much, Faizan. As always, really appreciate that. Awesome, bro. I'll be back, and this is good. Pakistan need to be forced to bat first. That's been our weakness. It's hilarious. If you go back about 15 years, not even 15, go about 5 to 6 years, Pakistan has been better at batting first and defending totals, but as of late, it's been the other way around. So that's very interesting to see from a Pakistani perspective. So yes, it's good to get that weakness sorted out as quickly as possible. Zanka says, can't believe I just typed that. Remember the time? Yes. Oh my goodness. That's exactly what I was talking about. Right? Remember the time when Pakistan chasing would give the entire nation a heart attack? How the times have changed. Yeah. The only time I got a heart attack was the last game because Pakistan were chasing. And that's what we expected from Pakistan back in the day when they would bat second and lose early wickets and then would be panicking for 28 for 4. Hopefully, that doesn't happen again. And hopefully Babar and Rizwan can do stuff. Still surprised there's no Mohammad Haris in this squad, in this 11. Very surprised. I thought Rizwan required a rest, but Pakistan are choosing to ignore that for sure. Gregor Galway says, like Jax at 3. So do I. I think Jax is number 1, a beast with the bat, but also he's a floater, for lack of a better term. I've seen him bat lower order. I've seen him bat in the top 3, and he opened and scored really well in the first game, in the third T20I in this series as well. I'm glad, and people might disagree with this, I'm glad about Milan not playing. He can get into form, but he doesn't look as comfortable in Pakistan so far. So I think this is a good call, dropping him and actually bringing in Alex Hales, who will be opening with Phil Salt. So that opening partnership is instrumental to England. Alex Hales is a beast. Phil Salt is aggressive in anything. Both of these guys play a lot in Pakistan. They've played in the PSL multiple times for multiple years. They know how to do things, which is really annoying from a Pakistani perspective because you want to have some sort of advantage, but they played in Pakistan so much that, it's hard to think. Oh, there we have it. I'm sorry, but Heather Ali is out due to injury. So Iftikhar is in, Asif is in, and Khushdil Shah are in. That's great. I'm not too happy about that, not going to lie. Not very happy about this fact. But Mohammad Wasim Jr. is a good inclusion. I like him. I think he is a very, very solid bowler. Also, he does bat just a little bit, so not a bad shout whatsoever.
So yeah, Pakistan's batting first. So Pakistan's gone with Rizwan, Babar Azam, Shan Masood, Iftikhar Ahmed, Khushal Shah, Asif Ali, Muhammad Nawaz, Usman Qadir, Haris Rauf, Muhammad Aslan, and Muhammad Wasim Jr. I think Muhammad Wasim Jr. will bat at 9 or 8. England, Alex Hales, Phil Salt, Will Jacks, Ben Duckett, Harry Brook, Moin Ali, David Willey, Liam Dawson, Adil Rashid, Reece Topley, and Ollie Stone. So these are, again, great sides, both of them. From a Pakistani perspective, good side. From an England perspective, Ollie Stone is still an outstandingly good bowler. But Mark Wood, I think England is using the rotation policy very, very well. Not going to lie, their rotation policy has worked in the past, and we can tell it's good. It's going well. They're smart about how they utilize certain players in certain conditions. So I respect that. I respect the way they're going about doing things. So well done, England. Kudos to you. Right. So let's go back to here. So yeah, some intriguing changes. I do totally agree with you. It feels like an improvement. Wow, really? I don't. I think Asif Ali as a finisher makes sense, but in the middle order, I'm not too happy about that. But if Heather Ali is injured, I think Asif Ali coming in makes complete sense. I would have, again, opted with Iftikhar or Khushal Shah to be dropped or rested for this particular match. Just see how Asif and Heather and all those go for Pakistan. But we have to understand, if a player is injured, then we can't really do much, can we, right? If Heather really is injured, we can't really just try and do anything. In terms of recent form, I didn't realize this. Pakistan has not had the best time of it over the past 5 games. They lost to Sri Lanka. They lost to Sri Lanka again. Then they lost to England in the first match. Won that brilliant 200 chase, but then lost on Friday as well. So 4 out of 5 matches Pakistan have lost as of late. England hasn't had a great record over the past 5 matches either. They have beaten Pakistan twice, but prior to that, they lost to South Africa. Big margins there, 90 and 58. So yeah, Pakistan hasn't had a great, England hasn't had the greatest time of it over the past 3-4 months in T20 cricket as well. But in terms of 11s, I think we will see the 11 as a viewing perspective. Nope, we won't. Okay, let's leave it then. Let's leave at it. In terms of what we're going to cover today, so we're going to look at the 4th T20I. I was planning to kind of dive into the specifics about Haider Ali and, certain players, how confidence would be shot, but injury makes sense. But the Hani thing, right? Yes, he got hit for 60-odd runs, but you can't drop him straight after. That gives the player no confidence in his ability. He's like, oh, I have one bad game and they just dropped me. But you can't look at it like that. From a Pakistani management perspective, I think they should have stuck with him. But from a Dahani perspective, what Dahani should be thinking is, oh, they're not dropping me. We're doing a rotation thing. I play a few games, someone else plays a few games. Don't feel bad about it. But I know players do. I've met quite a few, especially through this channel, who do think, oh, because I've been dropped once, then I can't come back. What's going to happen? Confidence low, mentally they become a bit weak. But they need to understand it's not about dropping. It's about resting. It's about the fact that Pakistan needs to rotate their bowlers to see who's in the best form, who needs match time, and all that stuff. Wasim Jr. needs match time. Since I think he didn't play the Asia Cup because of injury. So he was out of that. Right, Dahani played the Asia Cup, but then he got injured. Then he came back. He played 2 to 3 games here. So you got to understand that. So very happy that Pakistan is rotating their players. Just not happy about the players they are rotating. But it's fine. At least you're getting some new faces in. I would have liked. Again, I mentioned this before. I thought Pakistan might go Abrar Ahmed, Usman Qadir, but it's good they're sticking with him. But I do think in Lahore, Pakistan needs to go the Abrar Ahmed route and give Amir Jamal at least the final game of the series. But Abrar Ahmed does need a shot. He played well in the KPL. He did well in the National T20. And he's developed a slightly mystery delivery. Mysteriously. He's developed a mystery ball that I haven't seen too much of. So I think for that reason, Pakistan would find him quite useful, especially going over to Australia. Injamul Mullah says, Asif Ali is a good player. If Fakhar Zaman is coming in this time, then team is very strong. Right, so Fakhar Zaman, he's injured right now due to the knee issue that he developed in the Asia Cup. So hopefully Fakhar Zaman can get fit, but I don't see Fakhar Zaman in the side unless
Pakistan is willing to drop Asif Khushtil or Iftikhar Ahmed. If Fakhar Zaman is fit, Pakistan might have to play Shan Masood at 4 and you have Fakhar Zaman at 3. Even though I think Shan Masood needs to play in the top 3 and I think Shan Masood needs to play in Australia and needs to keep playing for Pakistan in that top 3. Fakhar Zaman, if he's fit, I think Fakhar Zaman, Pakistan love to put Fakhar Zaman in the team. He kind of walks into the side. With Asif Ali, he is an aggressive player and he has shown that he is very, very good on his day. But he's not very good when it's not his day. And he's not even okay when it's not his day. That's the issue, right? That's the issue I have. There is something called the expert advice, by the way. So I'm going to listen to this expert advice. These two legends on my left. So Wasim Akram and Waqar Yunus are going to talk about some stuff. ODIs as well as test matches. Everything is there in front of you. I mean, kya kehne in figures ke baare mein, in numbers ke baare mein, average dekh le. They're not talking about important stuff. I thought they were going to give expert advice on this particular match. Let's not listen to this. Anyway, so on a positive note, Pakistan have made a couple of changes. England have made their rotation policy changes. And I've got a feeling if Pakistan is batting first, they need to target at least 180. They need to think about 180 and then build on top of that. They have had a weakness as of late about batting first, not being able to put a total on the score and then defend it. In these conditions, recently, it has been better for Pakistan to chase, except the last match and the final of the Asia Cup. Overall, though, they have preferred to chase. Now, England have put them in. England have put Pakistan in to see how Pakistan goes about doing things. Can they survive? Can they put on a good total, or can England restrict Pakistan once again? And Pakistan has to fight an uphill battle, right? You remember the first match, Pakistan batted first, scored 158 for 7. They were really good in the first 10. Again, they scored 80 to 90 runs. And then Babar's wicket fell. And then Shan Masood played a bad shot. Then Rizwan fell. And then wickets upon wickets upon wickets upon wickets. And then Pakistan mustered their way to 158 for 7. Now, we can't have the same thing in this particular match. Pakistan has to realize that they can't depend on Babar and Rizwan 100% of the time. You can depend on them like 70 to 80% of the time, but the middle order has to fire. They have the worst average in T20Is in the middle order. They have one of the worst strike rates in the middle orders as well. Less than 130. If you're thinking of like aggressive players in the middle order, that's not great. So Pakistan has to find a way to go away from that opinion that, I share, and a lot of actual people actually notice about Pakistan. So yeah, just hoping that they're able to change perception about one, batting first and the middle order. Really hoping for that. From an England perspective, whatever I say about England right now doesn't make any iota of difference, because even without Butler, Stokes, and Bairstow, right, and Wood for the sake of argument, right, this is still a freaking A team, right, from an England perspective. These guys, T20 players, T20 specialists, Phil Salt, Alex Hales, Will Jacks does everything, right? Ben Duckett does everything. Harry Brook does everything. Moeen Ali, T20 expert. David Willey, T20 expert. Right? Liam Dawson, he's been playing all around the world for many, 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 many years. Right? Adil Rashid, one of the best spinners in the world right now. Arguably, you might say, oh no, he's English, that's why he can't really, he plays against XYZ, he plays at home, all that stuff. Adil Rashid, look at his wickets, look at his stats, look at the way he bowls, look at the control he has. Adil Rashid is one of the best spinners in the world, in T20 cricket in particular. Ollie Stone, pace bowler, has bounce as well. So Reece Topley has this change of pace. Ollie Stone has this pace and bounce to both. So yeah, very, very excited to see England's lineup as well. Pakistan, we've talked about it multiple times. Not going to keep going on because it's going to start making me very, very worried. Ibrahim says, salams, how are you? I'm well, Ibrahim. How are you? Hope you're doing well. What are your thoughts? What is everyone else's thoughts? Please join me in the chat and ask questions. Let's talk about cricket, because I love doing this because of the chat functionality. Wherever you're watching it, it might be on this side, it might be below the video, however you're watching it. Really do appreciate the engagement. It really helps us have better conversation, and really that's the reason why I do this. I really enjoy doing it. So yeah, there we go. I think Pakistan will be able to score past 180, but I think the 200 mark would be difficult. Personally, that's how I see it.
Ibrahim Yusuf Umar says, what are your thoughts on the new rules ICC announced? Is this the new rules that came out, like they were announced like 9 months ago, but they are coming into play next month or something? Again, I said this on a private chat to like a group of our cricket friends with Aaron and Fazan and like other people. And I said this, the Mankad thing is the biggest thing that's come out of it. For a lot of people, for me, that's not too important. For me, the most important thing is the crossing. So if I hit the ball up in the air and I cross, the cross doesn't matter. The new batter comes in, they face the delivery. That to me is the biggest change, because that changes the entire aspect of cricket. Because this was a tactic that was used by many, many teams, right? So for me, that's the biggest gripe I have. A lot of the other rules that have been announced, so you know, the dead ball, if you during your run, you can throw the ball in, hit the stumps at the other end. That is not considered a run out anymore. It's considered a dead ball. Again, I'm okay with that. I don't have an issue. The only issue I have is with the crossing bit. But the rest I'm quite okay with. What are your thoughts? That's a good question, Ibrahim. What are your thoughts about this entire change in rules and all that kind of stuff? Because I'm quite happy with most of them, apart from the crossing one that I said. I'm just gonna reply to this message. But yeah, please do share your thoughts about what's gonna happen, and if you like the way rules are being announced and changed. I would have liked if they if this was official. I like the fact that they've now got a time limit about for T20 cricket. Again, I know they say, oh, the 90-minute limit, a 90-second limit was still in effect, but it didn't feel like 90-second limit was in effect. I like that they've announced it for Test cricket and ODI cricket, something that we've needed for a while. So very, very happy about that. But yeah, in the end, I'm just stoked by the fact that Pakistan and England will have a change in approach when the rules come in from the next game, not from the next game, but the 5th game onwards, basically 6th game onwards in this series. So it'll be interesting to see that the last time we see crossing based on hitting the ball up in the air and running, and the new batter not being the new batter, we're only going to see that for the last time next week. So this is a rule that I like, and it made sense to me, but it is something they've changed. So let's see how effective it is, how it changes the way teams kind of prioritize certain points. Again, it's not the biggest change in the world. It's just, as a cricket fan, it's something that I have noticed and I don't like. That's all. But would love to hear your thoughts. Would love to hear your thoughts as well, Ibrahim. And if there are any rules that I haven't mentioned, you can write them down. But the ones that come on the top of my head are the ones that I've already addressed. So thank you. Yeah, that's a really good point. Really, really interesting question there. Appreciate you kind of coming back with that. I do have the match on in 2 different places. So they are showing us the highlights of Harry Brook's freaking innings, the 81 of 30 odd deliveries. Harry Brook was brilliant. Harry Brook was sensational in the first match, in the 3rd match against Pakistan. He was the Harry Brook that we know and love from an England perspective, right? Yes, he's played for Lahore Qalandars, but you put that aside. You look at his career this year, his county. Oh my goodness. I'm going to show you guys. I'm going to show you guys how good Harry Brook has been this year, right? Not just this year. Forget his international career, right? Let me just show you. His stats might say, oh, this, that, this or the other. His first class average just says 35. I don't know how to look at his stats this year, but his stats this year have been sensational, my friend. He has been so good. Let's see if I can look at list A games. Oh, first class games. There we go. No, I can't really dive deeper into that. I will find it though. I will find it, guys, because I need to show you this, because he is so talented. He's had such a good time in international cricket, in domestic cricket this year, that it's just unfathomable if he does a bad job. So there we go. Let's look at this. Oh, they're going to show me T20s. I don't want T20s. But again, look at that. He scored 140 against the South African team, right? He didn't have a really good T20. By T20, I mean the 100. But before that, his county championship was outstanding. So he is in prime touch, and we saw that in the previous game as well. So yeah, very excited to see how he gets on in this particular match. Hopefully, Pakistan can get him out quite quickly, because Pakistan need to take wickets
quickly, very quickly, pick up like 7 wickets. Yes, I'm being very optimistic, but all of these players, all the players that England has are very dangerous. Moeen Ali scored a 50 of 20 deliveries as well. Speaking of 50s of 20 deliveries, Cameron Green scored a 50 of 20 deliveries this afternoon, against India. And I'll look at the India-Australia game shortly, but so far, the last time I checked, there was 62 for 2 in 5 overs, and Cameron Green literally took the power play by the horns and just like waved it about for ages. Ibrahim says, I think they are good, but the rule of running out the non-striker should be made clear. As yesterday, Dipti Sharma went through her bowling action and then ran the non-striker out. So I think that is still considered legal and in the laws, but they haven't highlighted it as well. They've just moved it from whatever it was to run out. So now if it's considered a run out, I think you can do it whichever way. But I think what you're saying is because she was in her action, she shouldn't be able to do that. I think that's not a rule that has been specified. So I agree. They should kind of make it as clear as day so people don't have an issue with it, right? Otherwise, people such as not just myself, but almost everyone in the world who watches cricket talks about this, jumps on the bandwagon, and you're one or the other. You're not in the middle. I'm one of the few people who's in the middle. Again, the law says it's legal. It's legal. But if the law didn't say it was legal and it didn't really say anything, I would say it's not legal, right? See what I did there? I just confused all of you. But yeah, thank you very much, everyone who's joined us. Please do like, share, subscribe, all that good stuff. Really helps the channel. Really helps me do this more often and makes me do it over and over and over again because this is a lot of fun. I really like doing this and I love the interaction between both myself and the people who are watching. So yeah, thank you for that. The match will begin in approximately 5 to 7 minutes, depending on which stream I'm watching. I'm going to watch 2 streams at the same time because one has a propensity to be cancelled or randomly stopped. So I will wait and try and do this for the other from the Sky Go branch. So hopefully that shouldn't stop. Just a point I want to make in terms of the poll that I have. So 106 people have voted so far, and 85% think that Pakistan is going to win. 84% think Pakistan is going to win this match. So this optimism is really, really nice to see. Again, I don't agree with this optimism, but I like it. I'm glad because I'm not that optimistic. I'm very worried about Pakistan in this particular match because you got Alex Hales back. You've got a Will Jackson form, a Phil Salt who isn't in form, but he can be in form very, very quickly, very easily. Then you've also got the fact that you've got Ben Duckett, who's in pretty good touch. You got Harry Brook, you got Moeen Ali, right? David Willey can bat a bit too. There's no arguments there. So yeah, England are in a good position. So very worried as a Pakistani bowler. But if I look at the English bowling, even though it's good, it's just not the best English bowling we could have seen. So I'm kind of appreciating that from a Pakistani perspective. Pakistan has to remember, quick in the power play. The 10 overs, they plan to do 80 to 90 runs. Plan 80 to 90 runs again. But if you're able to take those doubles, right, be able to find the boundary, find the gaps, just go for it. Because we need to score a minimum of 180, ideally 200 plus. And if Pakistan is scoring 200 plus, mentally, it'll give them a lot of solace that, oh, we scored 200 plus. We can 100% try and defend this really, 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 really well. The pitch will play interestingly. It's not the same pitch, but from what I hear and from what I read, it does seem like it's a pitch that we can still get many, many runs on like the previous few matches, right? Look at Ben Duckett. Again, a player I've already talked about multiple times. Not going to go into it, but Ben Duckett, absolute beast. He loves himself in Pakistan, man. He loves himself playing against Pakistan, as it seems. Ibrahim also says, have you seen ICC have also allowed for hybrid pitches to be used in ODI and T20Is? Please explain hybrid pitches. I have not seen that, Ibrahim. Please, can you just elaborate on the hybrid pitches thing? While you elaborate, Mohammad Rizwan, 66 T20I matches, 2,107 runs, an average of 52.68, 1850s, 100. I don't know why they don't show the striker. Oh, the striker's on the side. 128.48 strike rate. And then Babar Azam at the other end, 84 T20I matches, 2,903 runs, an average of 43.33, 26 50s, 2 centuries, and a strike rate of 129.95, very close to that 130 mark that Pakistan would like him to be,
on a consistent basis as an average. Opening up, though, he does bat around 134 to 135, which is good for Pakistan. And when him and Rizwan last till the end, yes, their strike rate goes to like 150, 160, 170, but they need time. Both of these guys always need more and more time. So hopefully, hoping against hope that Pakistan don't lose an early wicket and they're able to sustain this partnership for a pretty long period of time. All right, let's go. Let's look at what else do we have here? Right? No, we don't have anything that surprises me, so I'm quite okay with that. Rizwan is going to take strike. I've got a feeling that Reece Topley or David Willey is going to open the bowling for England. But we will have to wait and see, my friend. We have to wait and see. Thank you, everyone who has joined us, by the way. The match will begin in the next few minutes. Let's refresh that. Also, just on the Australia point, I know people might be interested. Australia are 103 for 4. You've got Tim David and Josh Inglis on strike. They've got 8 overs remaining. Fitz, Smith, and Maxwell didn't do much, but Cameron Green is the one that allowed some impetus there. Matthew Wade is still in the wings. Liam Dawson is going to open the bowling for England. Interesting. Liam Dawson going to open. Very interesting. Didn't expect that whatsoever. Didn't expect it at all. All right, so Liam Dawson to start things off for England. Arranged that hybrid allows for use of artificial grass to be put on pitch when preparing them. Ah, right, okay. I'm okay with that. I guess people might say, oh, that means that it's not that particular, those particular conditions on that from that country, but it's fine. I'm okay with that. I don't have a big problem with that personally, but that's cool. I like that. That's good. It allows for an equal footing moving forward. Right, Liam Dawson, my friend, who I've never met. But yeah, he's going to start off from the university end. You've got Mohammad Rizwan on strike. Dawson did bowl well in the previous, not the previous game, but the game before that. He got 1 for 25 in his 4 overs. So Pakistan have found him to be a little tricky to face. So let's see how this schmoes. Liam Dawson. Yeah, why is my stream a little slow? Not entirely sure. Dawson around the wicket to Mohammad Rizwan. Rizwan defends it to a fielder and just tells Babar, no run. We're not looking for a run here. Don't worry, Babar. I'm not going to ask you to take quick singles at this moment in time, but eventually he will ask him to do that because Pakistan definitely needs it. Ooh, yeah. It's on middle stump and just straightened up, so Rizwan just had to defend it back to the bowler. Next ball, yeah, my stream is slow. Sorry, guys, my stream is a little slow. Dawson to Rizwan. Rizwan sweeps it behind square on the leg side, and that's gone for 4. Woo-hoo. 4 runs. Good job, Rizwan. People clapping, people cheering, people screaming their heads off. Good sweep shot by Mohammad Rizwan there. I think he knew as soon as the ball went a little more leg side, this wasn't a conventional Rizwan sweep. Again, next delivery, it's on middle and off. Rizwan just defends it again. He doesn't look as comfortable when the ball pitches on middle and off, especially around when a slow left arm bowler is bowling around the wicket. He looks uncomfortable. Even if he isn't, he just looks uncomfortable trying to face that delivery. 3 balls done of this particular over. 4th ball coming up. Dawson to Rizwan. Rizwan comes down the track, plays it through square leg for a quick single. No, Rizwan wants the second, but Babar pushes him back. That's a single. Not too shabby, my friend. Not too shabby at all. Pakistan move on to 5 for 0. Also, the match has begun, and I don't know why this one's here. So let's put this stream back. But yeah, thank you everyone who has joined us. Please, if you are new to the channel, and even if you're not new to the channel, please do like and subscribe. Really helps the channel, really helps me do this more often. And then we can have more of these sessions where I commentate on an entire match. So thank you, everyone. And yes, please do like and subscribe. Dawson to Babar. It's on middle stump. Babar plays it just behind square. It's not gone too far. Quick single there. And Babar is off the mark of his first delivery.
Yep, quick single there. Good job, Babar. Rotation of strike is something the middle order for Pakistan doesn't do very often, especially this particular middle order. So if Pakistan is able to master that, I think they should be okay. I think they will be fine. They're able to rotate the strike very, very often. Both of these guys have run really well in this series. So let's hope they can pass that over to the rest of the team. Rizwan comes down the track, hits it through long on, mid on for a single. Pakistan moves on to 7-0 after the first over. Good over. A good starting off point, personally. 7-0, not too shabby. I'm not too upset about it. I was planning to do a bit of the Urdu commentary and the English commentary concurrently, but I don't think that's going to happen this time around. But it's something that I will look into moving forward because it's good. I think the Urdu commentary really helps with the demographic that I have on my channel. So it does really genuinely does help. But I will cover the first 6 overs, at least myself. Then I will switch over to the Urdu commentary for a little while. And just to reference something that I don't know if everyone watching has already has been here the entire time, or we've got any new people. This is Pakistan's 200th T20I, the most T20Is by any team in the world right now. Second is India with 181. So they are celebrating something really cool. So that's great to see. Reece Topley to open the bowling. The second opening bowler is Reece Topley, as I've said previously, from the pavilion end. And we have Mohammad Rizwan on strike. Topley is going to stay over the wicket. It's a full delivery. And the plan to Rizwan is always the same. You got to swing the ball into his pads early on because he's not as good off the pads early on, especially if you're a decently paced bowler. Okay. Even this delivery, yes, it pitched outside leg, but it was swinging into Rizwan and he didn't connect it whatsoever. It hit his pad, but it swung into him. Yeah, he's not so good with it. I remember, was it Kyle Jamieson and like a few other bowlers actually targeting Rizwan, and it works. It definitely works. Reece Topley to continue once again, but this time it's really down leg side, and Rizwan just taps it and goes to the fine leg boundary for another 4. So Rizwan has 2 boundaries. Pakistan moves into double figures, 11-0. That was not a good delivery from Reece Topley. Not impressed, I must say. In terms of what I was saying previously, so yeah, the Urdu commentary. After the power play, I will switch the Urdu commentary on for a little while. So don't worry. But then if everything goes well, then I will come back shortly after the fact. But it will be quite sporadic. It's not something I was planning to do in terms of the Urdu commentary side of things. I was planning to cover this all today myself. But, you know, things change, plans change, and then you have to change with the plans, my friend. You have to change with the plans. And got to screenshot that. But yeah, good delivery once again. He's decided to swing the ball into Rizwan, and that's probably the best way to look at it. Because Rizwan, however much I like him, he has a weakness against the ball swinging into him early on specifically. Eventually, he will start to middle it, but early on, he does struggle against the ball swinging into him. So yeah, that is a genuine fact that Pakistan has to consider. Sheikh Numan says, good vibes. Thank you, Sheikh Numan. Really appreciate it. Please do like and subscribe. Really helps the channel, really helps the content, and really helps us get even more and more people on the chat, and then we can interact even more. This time, Topley goes a bit wider on the off stump. Rizwan trying to cut that one through the covers, but it doesn't bounce as much as he expects, but it still kind of swings in. Just kind of swings in. But good delivery from Topley. That's kind of the delivery I wanted from him. Just so he's not too predictable, just swinging the ball into Rizwan. A little wider, and Rizwan wanting to capitalize, but doesn't connect at all. He's Topley to Rizwan. It's a lot wider, it's a lot fuller, and Rizwan pumps it through the covers, and that's gone for another boundary. 4 more to Rizwan, 4 more to Pakistan. Good shot. Very good shot, that. Jolly good show, my friend. Jolly good show. Yes, I just said jolly good show, but that's a good shot. Very good shot from Mohammad Rizwan. Vicky Clips says, hello, Asjad. I am shifting. Bah. You are shifting.
Shifting? What do you mean, my friends? Shifting back? I'm very confused. Also, hello. I hope you can clarify this point, but I'm glad you're here. Thank you so much. Reese Topley, this is the length, just back of a length into Mohammad Rizwan. Rizwan defends it to the fielder. 15 for 0 after 2 overs, Pakistan. If we look at what's happening, there's a conference, a mini conference, as always, between Babar and Rizwan at the end of every over. But it's good. It's good to see that they actually do talk as much as they say they talk on the field. So good to see that. Very happy to see Pakistan starting off pretty positive. Yes, Rizwan is still striking at 127, and everyone argues about his strike rate and blah, 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 blah. But we have to remember he has to take time just a little bit, but then he will start being a bit more aggressive. The idea for Rizwan is always to be aggressive, to be a bit more proactive than Babar Azam in the power play. It just doesn't always work. Ollie Stone from the university end, a beautiful Yorker to Babar Azam to start things off, and he plays it through square leg. Rizwan wants a second. Babar sends him back, a quick single, and yeah, Ollie Stone's first delivery was 142 kilometers per hour. So yeah, he is a quick bowler. Vicky Clips says, hi, Asjad. I'm shifting between this stream versus CFA. Both are awesome. Thank you, Vicky Clips. That is very kind of you to say. Anyone interested in Australia, please do check out CFA, Cricket for Americans. They're streaming the match there with Gabe. So yes, please do check that out. Thank you very much, Vicky. Really, really appreciate that. Much love and respect, as always. This is Ollie Stone's T20I debut. I didn't know that. It is his T20I debut. So good to see him playing for England. He deserves it. He's been unfit for so long. So I'm very excited to see him in this particular match. Running into Rizwan. Rizwan just deft touch through the short third man and the keeper's gap and goes for another boundary. Rizwan has now hit 4 fours out of his 18 runs. So yes, he's a bit slow on strike rate, but he's able to recoup that and is able to capitalize when possible. This was a little wider. It pitched and moved just a little away from Rizwan. He didn't look too comfortable, but it did look like he was trying to play it through third man on purpose. So good shot. 4 runs. Pakistan move on to 20 for 0. Thank you, everyone who's watching, by the way. Much appreciated. Ollie Stone, straight to delivery. Rizwan plays it straight to mid-wicket for a dot. Rizwan not too pleased with that shot. Of course he's not. He wants to get runs upon runs at all times. Mohammad Rizwan's mindset is, I want runs, right? Even if he bats with a slower strike rate, his mindset isn't like a defensive one. It's always, I want to be attacking. I want to try and find ways to get as many runs as possibly as I possibly can, which is a very batsman kind of mindset. So it's good to see that. Ollie Stone to Mohammad Rizwan. It's a shorter delivery. Rizwan pulls it to square leg for a single. Pakistan moves on to 21 for 0. Babar Azam on strike now. In terms of pace, yeah, Mark Wood in the previous match, his pace was just, he was hitting 150 plus consistently, which was great to watch. 155, 156 as well. So yeah, Ollie Stone isn't that quick, but he's still very, very quick. He is a rapid bowler, no doubt. To Babar Azam ducks under that one. The ball didn't bounce as much as expected. It was a bouncer from Ollie Stone, and Babar, because of what happened in the previous match where he literally just played it to third man, a slightly shorter delivery. Yes, Mark Wood was quicker, so Babar could have done that again, but I think he's just worried now. So he just throws his hands down and tries to sway out of the way, for lack of a better term. Babar Azam on strike. Last ball of Ollie Stone's over. Another shorter delivery. Babar Azam plays it through square leg. Are they going for 2? Yes, they're going for 2. Good running there by the 2 openers for Pakistan. 3 overs gone. Pakistan 23 for 0. Fazan Khan is back. Yes, my friend. Rizu and Babar have set the bar way too damn high for themselves. Now, even if they have a normal day, we complain. That's true. That's very true. I need Pakistan fans, including myself, to not worry and stress out Babar Azam and Mohammad Rizwan. Stress out the middle order as much as you want.
But those two have been doing so well for a year and a half. I feel bad for them. Like whatever they do, Pakistan, like Pakistani fans are never happy about it. Almost 2 years, not even a year and a half, almost 2 years since Rizwan started opening, because it was September 2020 when he opened in the national T20, and he was doing a great job. So yeah, it's been quite some time. Thank you very much, by the way, Fazan Khan. Really appreciate your comment. Just gonna add something here that yeah, okay, cool. All right, let's begin. Reece Topley to continue. Another delivery onto the pads of Mohammad Rizwan. He plays it. He tries to play it through the gap between mid-on and mid-wicket, but the fielders are quick enough to get on that one. So a dot ball to start the 4th over. Yeah, they're just showing how quick Mark Wood is. Especially if someone bowls a bouncer at Haris Rauf. Yeah, in terms of bounces, goodness me. Yeah, what they're trying to say is, yes, Haris Rauf is quick as well. And Haris Rauf, yes, he has been bowling quick deliveries. He's just not been hitting the 155, 156 mark or 150 plus as regularly in one over, because Haris Rauf does like his change of pace, which is good because he does become a bit wavered when he doesn't bowl enough changes of pace. But yeah, it's just telling you that, oh, Mark Wood is just rapid, is absolutely rapid. So totally understand that. But no Mark Wood in this particular match. He's been rested. So Ollie Stone comes in, makes his debut for England. Are they just going to keep showing me the same thing for a while? Okay, I think I'm going to screenshot this. And if screenshot comes through, then I can transfer it across to you guys and you can see exactly what they were talking about. Yeah, Reece Topley to Mohammad Rizwan. It's Fuller. Oh, beautifully stopped by short cover there. It was in the slot to be dispatched through covers, but it went straight to the fielder. A dot ball. Pakistan are 25 for 0 in the middle of the 4th over. Rizwan really wanted that boundary, you could tell. But he hit it straight to extra cover, not even short cover. Hit it straight to extra cover. Good shot. Good fielding. Not a great delivery, though. Not a great delivery whatsoever. It was too full. Exactly the type of delivery that Rizwan wants to get on top of. A shorter one from Topley doesn't bounce as much, but Rizwan is able to hit it to deep fine leg for a single. Pakistan moves on to 26 for 0 in the 4th over. Let me just check where Australia are for anyone who's concerned. So India come back with a bang. Matthew Wade gets out so quickly. So it's Daniel Sams and Tim David on batting at the moment. India have gotten Australia to 120 for 6. Again, not a terrible score in the 15th over, but with the start they had, they were 62 in 5 overs on the pads of Babar Azam, Reece Topley. It was a fuller delivery. I really thought they were going to go for 2, but they only muster up a single. 27 for 0. Last ball of the 4th over coming up. Let's see how this transpires, my friend. Let's see how this transpires. But that was there to be hit. Let's be honest. That was there for any of these batsmen to want to hit to the boundary. But it was a quick running by the fielder, the deep backward square leg boundary, to kind of pick that up quite quickly. Last ball of the over coming up. Rizwan on strike. Rizwan is 22 of 18. Babar is still 5 of 5. Again, doesn't matter. He hasn't faced many deliveries, but Rizwan is looking to be aggressive. And this time, Reece Topley balls a bouncer, but on his shoulder. And Babar and Rizwan's like, "Yep, I'm gonna hit this for 4," and smashes it for through, kind of like a fine leg for 4. So great job, Babar. Rizwan moves on to 26, and Pakistan move on to, what's the score? To 31. I know what Topley was trying to do, but the ball just didn't bounce as much as he would have liked. Therefore, it looks like a bad attempt. Yes, Rizwan wanted a 6, but a boundary is still good. 4 runs, any boundary is good. So 4 runs is still very, very good from a Pakistani perspective. Liam Dawson comes back into the attack from the university end. Babar on strike. Yes, Babar has struggled against spin as of late. Not all the time, but sometimes he definitely has. Dawson to Babar. Babar cuts that through point, and that's another boundary. 2 4s in a row for Pakistan. And yeah, I got to bring up Billy Bowden again.
That's 4 runs to Babar right after Rizwan hits a boundary on the last ball of the previous over. This was short. It was wide. It was about a foot outside off stump, and Babar got on top of that for a really, really nice cut shot through point. Liam Dawson to continue. Babar Azam on strike. Babar Azam plays with a straight bat, and a good dive from Liam Dawson. He stops that one. It was probably going to be a single, but he stops that one. Well done to Liam Dawson. And a dot ball straight after the boundary. So good comeback there. Babar did want to hit that through mid-off, but he just couldn't connect properly. But Babar Azam comes down the track, hits that through mid-wicket for a single. They both jog through for 1. Pakistan moves on to 36 for 0. Babar is now on 10, moves into the double figures. And Rizwan is on strike. Liam Dawson to continue, has 3 balls remaining. Moeen Ali going over to his bowler to give him a little bit of a talk. Let's see what he's said to him. Maybe a slightly more flighted delivery to try and stump Rizwan out, because I know that has worked previously in this series already. So, or maybe down leg side. So Phil Salt, who is a very good keeper, can... oh, there we go. I knew it. So this one was on leg stump, and Rizwan paddles it over the keeper's head for another 4 runs. Good shot. Good shot by Rizwan. So Pakistan has now scored 3 4s in the past about 5 deliveries. So this over has been very, very good from a Pakistani perspective. Good job. Good job there, Rizwan. That's exactly what Pakistan needs. Just need boundaries. A couple of boundaries and over will get the run rate going. And then the way they've been running together in this series is just outstanding. So can't really argue with that. Dawson to Rizwan. Rizwan once again moves onto the offside, trying to dispatch it through the leg, but plays it straight to mid-wicket for a dot. Oh, am I live? I hope I'm live. I don't know why it looks like I'm not live, which is really, really confusing me. But anyways, Rizwan connects for 2 more runs. 5 overs gone. Pakistan are 42 for 0 after 5 overs. Ibrahim says, what are your thoughts on South Africa 20, SA20 and Bavuma going unsold? You know, I feel bad for him, but it makes sense, right? Bavuma is not the most ideal T20I batsman, right? Or T20 batsman. So it's kind of surprising, but I do get it at the same time. The expectation that Bavuma will give you many, many runs, like he's not a Duplessis kind of player. He's not a Van der Dussen. He's not like a Markram. He hasn't got as much of an attacking game. He has an attacking game, but he's not that type of player. ODI, he's great. Test, he can be really good too. But for T20 cricket, he just doesn't have... I've seen him play really good knocks in T20s, not going to lie. But I think they just wanted some players who are just more aggressively mindseted, because for the future of South African cricket, they do want more aggressive players. So I think for that reason, it makes sense. Obviously, I feel bad for him, but I get it. I do get it. I'm not going to say, oh, it's really unfortunate. It is, but at the same time, it makes logical sense not to have him in the side or be picked. But unsold is kind of... does feel bad. Does feel bad, though. Fazan Khan says, by the way, have you heard any news about PSL 8 draft or auction or whatever they're... I think they are planning on an auction. I haven't heard anything about when it's going to happen as of yet. But they are planning... Last I checked, they were planning sometime in early January after the England Pakistan series is concluded, the test series. It will be after that, from what I heard. So let's see how that goes. Let's see how that goes, my friend. But yeah, Fazan Khan says, but as the national team captain, he should have been given a team, I think. Oh, yeah, that's a good point as well. Yeah, if he was given a team, that would have, fixed the whole thing. Think about what this does to the morale of the South Africa dressing room. The guy leading the side of the World Cup isn't good enough for domestic. It's not that he's not good enough. He's not, in their opinion, he's not as much of a marquee player, Fazan. That's the thing. That's the issue that they've got. Also, another boundary, low full toss and dispatched down the ground by Mohammed Rizwan. And yeah, that's another Billy show that we need. Mohammed Rizwan facing Ollie Stone.
Ollie Stone, a bouncer, and Rizwan plays it through to fine leg for a single. Pakistan move on to 48-0 in the middle of the 6th over. Not too shabby, I must say. Not too shabby at all. Love how Pakistan loves to talk about their sponsors. I don't see many countries that are not subcontinent countries do this, so it is quite funny when they do it. So nice to see that. Dolans. Oh, I love it. Where are we? There we are. Oh, that was a no ball as well. Yes, that was a no ball. No ball. Free hit coming up. Free hit coming up, guys. Ollie Stone to Babar Azam. It's a good delivery. No, it isn't. It's in the slot, and Babar dispatches. Oh, wait, it's caught, but it's a no ball. It's a no ball. Yeah, Dawson didn't realize it was a free hit. So, yeah, that was full on the pads. Babar wanting to dispatch it over mid-wicket. Didn't connect as well as I thought he did. I went straight to the deep mid-wicket fielder. And, yeah, they only took 1 run, which is not a bad thing. Dawson takes the catch. He's excited. He's like, yes, I've taken it. And he's like, oh, wait, snap. Yeah, it's a no ball. Because Duckett was walking over to him to tell him, yeah, it's a no ball, dude. Don't worry. But yeah, at least they get a single. That's good. Ollie Stone to Rizwan. Rizwan taps it to backward point, wanting a single. But Babar correctly told him, nope, stay back. Don't do it. Don't risk it. England fielders do hit the stumps quite often. This time, yes, Will Jacks didn't hit the stumps, but he could have. Obviously, he could have. Oh, my goodness. Skip that. There we go. So 2 balls remaining. Pakistan's 50 comes up, by the way. 50-0 in 5.4 overs. Not too shabby. Once again, over 8 run rates. So that's really good. Stone to Rizwan. Rizwan plays it through the leg side, through square leg. Running away to the boundary. Nope. There's a fielder there to stop that one. Just 1 run off that delivery. Last ball of the 6th over coming up from Ollie Stone. And we got to see. We got to take a look at the pitch. It is looking very shiny. Not going to lie. It looks like a very shiny pitch. It has been watered and rolled like crazy, right? Which tells us that it might be quite good for batting. It might just be very, very good for batting. So Pakistan needs to score a really, really big total, like as big as they possibly can. That's always the target, isn't it? But still. Ollie Stone to Babar. Babar plays that through the leg side. They're looking for 2. They're looking for 2. They're not going to get 2. They're not going to get 2. Don't even risk it. Don't even risk it for a biscuit, my friend. And that ends the power play. Pakistan 52-0 in the power play. That's pretty good. That's not too bad. Like after everything that we've talked about, Pakistan power play, they were 52-0. So not too bad at all. Not too bad at all. Look at the comments. Ibrahim says, what are your thoughts on Sharjeel, Sami Ayub rumors that they are going to be at? So Sami Ayub makes sense. Sharjeel Khan, it doesn't make sense to me. It never will. Sharjeel Khan in the side never makes sense to me. But Pakistan loves to do these types of things, don't they? Yeah, Sharjeel Khan doesn't make sense. Sami Ayub, young prospect. I remember looking at him a couple of years ago. In the under-19s when it was him and Arish Ali were around in the same team. Good, exciting prospect. Maybe it's too early, but why not? Give him a shot, man. Give him a shot. Pakistan needs someone in the middle order. Ibi Edit says we should win this series quickly so we can rest some of our big players in the last match. Oh, interesting. We can finally have you commentating after 3 matches. Thank you, Ibi. Really appreciate that. I am doing my best. I will have to go into I was planning on switching over to the Urdu commentary for the rest of the match, but because I'm enjoying myself, I'm gonna keep going. I'm gonna keep going, and at least cover as much as I can before I have to skedaddle or skadooshify before anything else. Adil Rashid to begin bowling. First ball of the over was a single, and yeah. There we have it, folks. Rizwan on strike. Rizwan 38 of 26. So after those boundaries, he really came into his own. That was good. Adil Rashid to Rizwan. That was a googly on leg stump, which is not ideal. So they get another single.
Let's see what Pakistan can do. This is very, very interesting. For everyone watching, please do like, share, and subscribe to the channel, to the video. Really helps the video go places. Lets people know that they like doing this. They like watching me do this stuff. Babar Azam goes onto the back foot, plays it through the covers, and another single offered. And yeah, Pakistan moves on to 55 for 0. So yeah, please do like and subscribe and all that good stuff. Really helps the channel. Really helps me do this more often on a consistent basis. Because I'll be honest, I'm unable to most of the time. Adil Rashid to Rizwan. Rizwan plays an interesting pull shot off the back foot to the square leg fielder. And Pakistan move on to 56. Rizwan moves into the 40s, 40 of 28. And Babar is 15 of 13 as we speak. As we speak. Let's go. There we go. Awesome. Adil Rashid to Babar. Babar plays it through mid-wicket. Again, they're going to walk this single. They've just decided that they're going to take it just a little slower against Adil Rashid because he is a very, very dangerous bowler, no doubt. If he says we shouldn't add Shajil because Shan Masood is playing brilliantly and Shajil hasn't played international cricket for a while. Yes, he hasn't. I'm just hoping South Africa don't become the next West Indies great T20 players who are in the leagues all over, but the national team is suffering. Oh my goodness, what a shot by Rizwan and what a fielding effort. What a fielding effort running from long on. That's only 2 runs. Should have gone to the boundary, but Rizwan played it through mid-wicket. Great fielding effort there. 7 overs gone. Pakistan 59 for 0. Sorry, Fazan Khan, for cutting your point off. But the national team is suffering. 2 World Cup champions, 2 times World Cup champions, players in every league, yet will have to play the qualifiers. Yeah, that's really unfortunate. That is unfortunate. And I hope South Africa definitely doesn't get into that same kind of issue because, you know, they are very talented. And it's never good to see a team like South Africa or West Indies or any of the big teams, for lack of better terms, right? Get this type of treatment eventually throughout their cricketing careers. So yeah, it's really unfortunate. Ibi says, is the Osman Shanwari? I've not heard anything legitimate yet, Ibi, so couldn't tell you. I hope not. I hope he's all right. I hope he's safe and all that cool stuff. But yeah, I haven't heard anything like that so far. Right. So just to let everyone know, thank you so much for joining. I am going to be around, but after the 10th over, I will be switching over to the Urdu commentary or the BBC radio one, depending on what I am able to do. But yes, I will continue on with the commentary, but it wouldn't be me. It'll be like the Urdu commentary or something. David Willey to Babar Azam on the pass. Azam plays it through the leg side for a single. And Pakistan moves on to 60 for 0. That's good. That's nice to see. 60 for 0 is a good score. Good score so far in the 8th over. Muhammad Rizwan is on 43. And yeah, 42, sorry. So that means there's going to be a single of this delivery. See, that's why I'm a little slow right now. David Willey to Rizwan. Rizwan plays it down the ground for a single. Right, I'm going to try and come back onto here on my phone because my phone has the more recent version of the match for some apparent reason. For that reason, I will switch back and all right, great. So David Willey to Babar Azam, and Babar Azam plays that very, very well through. Actually, no, he doesn't. He does. He actually guides it past the third man fielder in the gap between short third man and backward point. He guides it, and that runs away to the third man boundary. Let's bring Billy back, my friends. Let's bring Billy back. Fazan Khan says, you're like a ball or 2 behind. Yeah, I am now closer to the actual one. Thank you, Fazan. Thank you very much. I think the Sky Sports here is just really slow. It's just really slow. Oh, bouncer. An attempted bouncer by Willie. Why are you doing it? You're not quicker than 130 kilometers per hour. And Babar Azam gets on top and smashes it to the leg side for another boundary.
4 more to Pakistan and to Babar Azam. Good shot. Pakistan moves on to 69 for 0. Azam Khan said, you'll like what happens on the next ball too. Thanks, Zan. Babar Azam plays that through the leg side for a single through mid wicket. Yep. Pakistan moves on to 70 for 0. 1 ball remaining in the 8th over. Everyone says, what are your thoughts on Roman defending against? Here comes the wrestling question. So I think from a PR stunt, it's great. I think Logan Paul is good as a young up-and-comer in the WWE. But yeah, I don't think that should have happened. I think that's very, very stupid from WWE to do that. But I think they've done it on a crown jewel because it's like an overhyped, what do you call it? Tour show or whatever they call it. House show. David Willey to Rizwan. Rizwan plays it through mid-off for a single. Quick single there. Well done. 71 for 0. 8 overs gone, Pakistan. So yeah, I think it's not the best decision from a wrestling fan, but it's a good decision from a PR standpoint because there will be a lot of eyes on the crown jewel event and everything building up to it. So that's what he wanted to bring. That's what Triple H and Roman realized they wanted Logan Paul to bring to their table. So that's the case. That is what it is, isn't it? Let's put Urdu and English because I'm going to swiftly switch over from here onto the Urdu commentary shortly. But until then, you got me. You got me, guys. Mohammad Rizwan is 44 of 31. Babar Azam is 26 of 18. Adil Rashid to continue. For everyone watching, please do like, share, subscribe. All that good stuff really does help the channel. Appreciate it. Thank you very much. Yeah, I think the Urdu commentary will begin in the last 10 overs of this innings, and then I'll come back after the fact. I got to talk about it, you know. Truth be told, it's hard to manage time with a kid. And, you know, other stuff in life. Adil Rashid to Mohammad Rizwan. Rizwan sweeps that in front of square. Well, actually through mid-on for a single, 72 for 0. Fazan Khan says, by the way, how come National Stadium has been packed for this series but struggled to sell out during the West Indies tour late last year? I think, number one, Pakistan is playing England and Pakistan have done well. Pakistan has done pretty well in the Asia Cup as well. Plus the flood relief thing, all of that probably takes into consideration. And I think that decides why Pakistan is up here. Partnerships with most 50-plus scores. Let's look at the 100-plus scores. I think there's 7 between these two guys as well, isn't there? So yeah, that's good. That's really good. Babar Azam and Rizwan are on par with KL Rahul and Rohit Sharma with the most 50-plus T20I opening stands in... not opening stands, sorry. It's just most 50-plus score partnerships in T20Is. KL Rahul and Rohit, and Babar and Rizwan. Nice. Ooh, well played. Good deft touch from Rizwan. However, it's a dot ball. On top of that, West Indies. England are in the top 3, for lack of a better term. They're probably the best team, best white ball team, or considered the best white ball team in the world. Compared to West Indies, who are below Pakistan in the rankings as well. And they're... Ooh! Adil Rashid spun that one like a mile. Rizwan was quite surprised by that as well. Another dot ball. Good over so far from an England perspective. So that's one of the big reasons why England are just more special, you know, for a Pakistani crowd. Ibrahim says, yes, Extreme Rules card is looking good so far. Yeah, Extreme Rules is looking good. Not going to lie. Are you still working from home or have to? No, I am working from home. Alhamdulillah. I'm very happy about that. Working from home. Very excited about that. And hopefully I do continue with that. Last ball of the over, Adil Rashid gets swept to deep mid-wicket and Pakistan move on to 74 for 0 after 9 overs. Yeah, so I am working from home, but now because I've changed companies, they kind of do monitor this stuff. So I can't randomly be working and doing this at the same time, you know? But it is Sunday today. I can't believe it's Sunday already. Goodness me. Days go by so quickly. I'm going to try the Urdu commentary and see if it works. If it works, I'm going to switch it on at the end of this over, guys.
just to let you all know, so you don't get surprised by me disappearing. And yeah, Rizwan moves on to 46 of 35. Babar is 27 of 20. So strike rate wise, still doing a good job, both of these guys. Still doing a pretty decent job. Liam Dawson to continue to come back into the attack, honestly. And England have rotated their bowlers really well. I think Willie just got a bit ahead of himself, and that's why he was hit for a couple of boundaries in that over. So they had to resort back to Dawson, who has looked good. Around the wicket to Mohammad Rizwan. Liam Dawson. Rizwan plays it through mid-wicket for an easy single. Raheem says, what are your thoughts on Punk most probably? See, I've heard a lot about Punk not returning, right? And there's nothing official, but if he doesn't return, it'll be really upsetting because I really wanted Punk Omega eventually. But the AEW still has some stars that they are able to build the rest of their brand on. But CM Punk there was a huge, huge plus. Fazan Khan says, no, Asjad, not all days go by quickly. Only weekend days do that. That's true. That is so true. That is so true. Good shot there through the leg side and really good running from Rizwan and Babar. Once again, the running between the wickets for these two has been extremely, extremely impressive. It's been like this entire series. So great to watch, great to see. Even on deliveries that you might not expect them to get to, they find a way to hit it into the gap and be able to run so easily, so effortlessly. And get 2 more runs. Babar Azam on strike once again, hits through the same place, but this time a little harder. So it's hard to take 2 there. So just walk a single. Rizwan back on strike. Pakistan moves on to 78 for 0. Babar moves on to 30 of 22, while Rizwan is 47 of 36. Both striking around the 130 mark, exactly what I expected from both these guys, which is fine, which is perfectly fine. Mohammad Rizwan on strike. Liam Dawson. Rizwan comes down the track and it's gone over. Oh, thank goodness he didn't connect that very well because he chipped it and there was no mid-off. There was a long off though. So he chipped it just to mid-off for a single. He was planning to go high though. I'm glad he kind of retracted his bat and allowed it to not be scooped straight to the fielder. Fazan Khan says Babar and Rizu need to teach this running to the middle order. Forget hitting the ball. Yeah, that's true. That's true. Those guys can do that, but they need to rotate the strike more. The way they rotate the strike is almost invisible. Let's put it that way. It's non-existent. It's not there. They're unable to continue to rotate strike over and over again. And that's what really, really, really irks me sometimes. Oh, last ball of the 10th over coming up, and then we have a drinks break. Pakistan once again scores 80-odd runs in the first 10 overs. Pakistan moves on to 82 for 0 after 10 overs. Rizwan gets another 50 of 38. Well done, my friend Rizwan. 50 of 38. His 19th T20I 50. And we have drinks, my friend. So we have drinks. I'm going to go away for a little while. We're going to have the Urdu commentary starting shortly. But yes, 82 for 0 after 10 overs. Another game, another 50. Not boring at all. Not boring at all, my friend. Right, guys, thank you so much for joining. Please do like, share, and subscribe. Please do stick around because the Urdu commentary will be beginning shortly in about, let's say, about 7 to 10 seconds. So don't worry. We will continue with something. There will be ads. There will be some sort of ads that you'll hear, but don't worry. We'll get back to the Urdu commentary in light, big, salty, delicious and crispy bars. Bisconi Crux. क्योंकि हम चले तो पाकिस्तान चलेगा. पाकिस्तान का नंबर 1 टायर Panther Tires. Chale non-stop. Now shop, dine and travel with the convenience and luxury of Bank Islami Debit Mastercards. Bank Islami, serving you the right way. लाइफ हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं. जैसे फर्स्ट बॉल पे आउट,
हाशमी इसबहो फिट है तो हिट है। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। Give me crutch, 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 give me crutch. Light, big, salty, delicious and crispy Pas. Give me crutch. Visconi Crux. पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। डेंगू का मूजी मर्ज फिर तेजी से फैल रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं, क्योंकि अब मॉस्ट्रेट दस्तयाब है। मॉस्ट्रेट पपाया के पत्तों का खालिस निचोड़ आपके प्लेटलेट्स को बहाल करता है। मॉस्ट्रेट, डेंगू का मुअस्सर इलाज। मॉस्ट्रेट अवेलेबल इन टैबलेट्स एंड सिरप बाय हाइमॉन्ट। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। डेंगू का मूजी मर्ज फिर तेजी से फैल रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं, क्योंकि अब मॉस्ट्रेट दस्तयाब है। मॉस्ट्रेट पपाया के पत्तों का खालिस निचोड़ आपके प्लेटलेट्स को बहाल करता है। मॉस्ट्रेट, डेंगू का मुअस्सर इलाज। मॉस्ट्रेट अवेलेबल इन टैबलेट्स एंड सिरप बाय हाइमॉन्ट। बैंक इस्लामी वन टच बैंकिंग से करें ट्रांजैक्शंस अपने थंब इम्प्रेशन से, वो भी बिना एटीएम कार्ड और चेकबुक के। बैंक इस्लामी, सर्विंग यू द राइट वे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। पानी के वक्त के बाद 11वें ओवर का खेल शुरू होता हुआ आदिल रशीद अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। पहली गेंद ड्राइव किया इस गेंद को ऑफ स्टंप लाइन के बाहर ही गेंद था। गेंद आएगा लॉन्ग ऑफ पे खड़े फील्डर के पास बाबर आजम, जिन्होंने ये शॉट खेला। इस सिंगल के साथ बाबर आजम का स्कोर हुआ 32। 24 गेंदों में पाकिस्तान 83 बगैर किसी नुकसान के, जबकि इनिंग्स का ये 11वां ओवर चल रहा है। दूसरी तरफ इससे पिछले ओवर में 50 रन मुकम्मल किए अपने रिजवान ने। येट अनदर 50 फॉर हिम इन दिस सीरीज। इस बार बड़ी जोरदार और ऊंची हिट के लिए गए थे, लेकिन गेंद जो उनकी लेग थी वो आड़े आ गई और गेंद उस पर जाके लगा। अदरवाइज 2-4 रन तो मिल ही जाने थे। जी हाँ, फ्लाइट दी थी इस बार और ये गेंद हल्का सा हमने देखा ब्रेक हुआ। इस वजह से जो ब्लेड था बैट का नीचे का, उससे लगने के बाद अगली टांग के जूते पर जाकर लगा, जिसकी वजह से रिजवान अपना बैलेंस भी बरकरार नहीं रख सके। नीचे हल्का सा गिरे भी थे, लेकिन वापस खड़े हो गए। अगली गेंद के लिए आ रहा है, एक बार फिर उठा दिया है शॉट को। मिसक्यूट शॉट है, लेकिन खुशकिस्मती कि फील्डर डीप में थे और मिड ऑन पर ये गेंद आके गिरा। लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ते हुए आज को फील्ड करने के लिए 1 रन मिला रिजवान को, लेकिन कन्विंसिंग शॉट नहीं था रिजवान का। पाकिस्तान 83 बगैर किसी विकेट के। ये दूसरी बार हुआ है रिजवान से, इससे पहले भी इन्होंने मिड ऑफ पर ऐसे ही शॉट खेला था। अगली गेंद इसको लास्ट मोमेंट पे चेक किया, शॉट को बाहर निकल कर आए थे बाबर आजम इस शॉट को खेलने के लिए, लेकिन गेंद इतना शार्पली टर्न हुआ कि फिर इसको स्ट्रेट बैट के साथ ही खेलना पड़ा बाबर को। लॉन्ग ऑफ की जाने फॉर सिंगल। ही मूव्स ऑन टू 33 ऑफ 25। पाकिस्तान 85 बगैर किसी नुकसान के। आदिल रशीद एक बार फिर छोटे से स्टार्ट के साथ जल्दी अपना ओवर मुकम्मल करते हैं और इस मुतबा कदमों का इस्तेमाल। उठता हुआ शॉट रिजवान का, क्या ये क्लियर कर पाएगी बाउंड्री? यस इट हैज, इट्स अ 6। It's a Visconi Crux sixer. Light, big, salty, delicious and crispy Pas. Visconi Crux. लाइफ हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं। जैसे लास्ट बॉल पे छक्का, हाशमी इसबहो फिट है तो हिट है। राइट जी, तो रिजवान जिन्होंने काफी ऊंचा शॉट खेला था और बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े फील्डर ने कोशिश भी, लेकिन 6 रन हुए। अगली गेंद ड्राइव कैच पर पास जोरदार तरीके से लॉन्ग ऑफ की जानिब और यहाँ मौजूद है एलेक्स हेल्स, जिन्होंने इसको फील्ड किया। 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। पाकिस्तान 92 बगैर किसी विकेट के 11 ओवर्स मुकम्मल। Now shop, dine and travel with the convenience and luxury of Bank Islami Debit Mastercards. Bank Islami, serving you the right way. क्योंकि हम चले तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप।
पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। पहले भी कहा था अपने साथ डॉक्टर कॉफ लोजेंजेस रखा करो। ये लो, ये हुई दवा। डॉक्टर्स नंबर 1 चॉइस, डॉक्टर कॉफ लॉजेंजेस। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। डॉसन अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, आखिरी ओवर करने के लिए आ रहे हैं और समझाएंगे काफी बाहर गेंद स्ट्रेच करके अपने आप को ड्राइव किया इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की जानिब जहां बाउंड्री पर फील्डर मौजूद थे। बाबर आजम ने ये सिंगल हासिल किया, सो रिजवान ने सिंगल हासिल किया तो रिजवान का स्कोर हुआ 59-43 गेंदों में, पाकिस्तान 93। पाकिस्तान की टीम में आज 2 तब्दीलियां की गई हैं। धानी की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर खेल रहे हैं, जबकि आसिफ अली भी टीम में शामिल हैं। हैदर अली की जगह आज इनको शामिल किया गया है। डॉसन अगली गेंद करने के लिए उठता हुआ शॉट, इस मरतबा भी पॉइंट की जानिब खेला इस मरतबा बाबर आजम ने और एक बार फिर स्वीपर कवर एक्शन में आए जिन्होंने इस गेंद को बिल्कुल बाउंड्री लाइन के अंदर फील्ड किया और 2 रन बना लिए बाबर आजम ने। तो बाबर का स्कोर हुआ 35-26 गेंदों में, जबकि पाकिस्तान का स्कोर 96 बगैर किसी विकेट के। और ये 12वां ओवर है पाकिस्तान की इनिंग्स का। रन बनाने की औसत है 8.38 की। अगली गेंद के लिए आ रहे हैं डॉसन, विकेट में आती हुई गेंद और इस गेंद को स्ट्रेट बैट के साथ खेल दिया लॉन्ग ऑन की जानिब बाबर ने और एक रन आसानी के साथ हासिल किया। 96 हुआ स्कोर पाकिस्तान का। जी हाँ, बाबर आजम जिस तरह से शॉट खेलना चाह रहे हैं वो क्लियरली लगता है कि इनसे लग नहीं पा रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं नजर आती है। अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जब ये जा रहे थे अपने जो बैट था उसको पैड्स पर मार रहे थे, ये जो शॉट खेलना चाह रहे हैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। डॉसन की अगली गेंद, इस मरतबा इस गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ खेला है रिजवान ने फॉर अ सिंगल। ही मूव्स ऑन टू 60 और 44, पाकिस्तान 97। एक चीज जो यहाँ पर नोटिसेबल है, जो स्ट्राइक रेट अब तक इन दोनों बैटर्स का वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। 134 का स्ट्राइक रेट है बाबर का, जिन्होंने 26 गेंदों में 35 बनाए हैं और 44 गेंदों में 60 बनाकर रिजवान क्रीज पर मौजूद हैं और 137 की इनका स्ट्राइक रेट है। जबकि हम इसके बिल्कुल मुख्तलिफ देखते हैं इंग्लिश बैट्समैन का स्ट्राइक रेट। आउट हो जाएंगे, शॉर्ट गेंद थी, पुल किया इस गेंद को बाबर ने, मिड विकेट पर गया सीधा फील्डर के हाथों में और बाबर की विकेट आउट। Light, big, salty, delicious and crispy pass. Visconi Crux. पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। चलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पैंथर के टायर्स आपकी सवारी और जज्बे को रुकने ना दें, क्योंकि हम चलें तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। चलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पैंथर के टायर्स आपकी सवारी और जज्बे को रुकने ना दें, क्योंकि हम चलें तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। शान मसूद ने आने वाले बैटर हैं, लेकिन इससे पिछली गेंद पर विकेट आउट हुई बाबर आजम की, जो एक शॉट के लिए गए थे लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए मिड विकेट बाउंड्री पर और डॉसन ने विकेट हासिल किया। एक गेंद और बाकी इस ओवर की, जो कामयाब ओवर अब तक डॉसन का 31 रन दिए डॉसन ने और बाबर आजम का विकेट उन्होंने हासिल किया। 4 ओवर्स का कोटा अपना मुकम्मल कर देंगे इस आखिरी गेंद के बाद। नए आने वाले बैटर हैं शान मसूद, जो अपना चौथा T20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं। 153 का इनका स्ट्राइक रेट है, 72 इनकी एवरेज है और इनको आज प्रमोट किया गया नंबर 3 पोजीशन पर, क्योंकि आज हैदर अली टीम का हिस्सा नहीं है। पहली गेंद का सामना किया, रिवर्स स्वीप किया और गेंद उनके ग्लव्स को लगने के बाद फाइन लेग की तरफ गई है।
जहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक वो फील्ड करेंगे रन हासिल हो जाएगा शान को। तो पहला रन शान का, पाकिस्तान 98, 1 आउट, 12 ओवर्स मुकम्मल। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल द वे फॉरवर्ड। पहले भी कहा था अपने साथ डॉक्टर कॉफ लोजेंजेस रखा करो, ये लो। ये हुई दवा। Doctor's #1 choice, Dr. Cough Lozenges. बैंक इस्लामी ऑटो फाइनेंस से हासिल करें सेम डे अप्रूवल, वो भी 340 से जायद ब्रांचेस पर। बैंक इस्लामी, सर्विंग यू द राइट वे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। डेंगू का मूजी मर्ज फिर तेजी से फैल रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं, क्योंकि अब मॉस्ट्रेट दस्तयाब है। मॉस्ट्रेट पपाया के पत्तों का खालिस निचोड़ आपके प्लेटलेट्स को बहाल करता है। मॉस्ट्रेट, डेंगू का मुअस्सर इलाज। मॉस्ट्रेट अवेलेबल इन टैबलेट्स एंड सिरप बाय हाइमॉन्ट। विली आ रहा है गेंद करने के लिए शान मसूद को, और जगह बनाते हुए अपने इस गेंद को खेल दिया शॉर्ट कवर एरिया में। फील्डर मौजूद थे, रन बनाने का मौका नहीं था। एक अच्छी बात यह है कि शान मसूद बड़े बिजी नजर आते हैं और हर वक्त रन्स उनको दरकार होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से वो रन निकाल दें। जी हाँ, कुछ सालों से शान मसूद का गेम बिल्कुल चेंज हो चुका है और T20 में खास तौर पर जिस तरह वो बैटिंग करते हैं, बड़े कंट्रोल्ड शॉट उनके होते हैं और इस बार भी आते के साथ ही रिवर्स स्वीप उन्होंने खेल दिया था। डेविड विली एक बार फिर आ रहे हैं गेंद करने के लिए, डाउन द लेग साइड ये गेंद, इसको आहिस्ते के साथ खेल दिया शॉट मिड विकेट पर और खुद गए विली दौड़ते हुए इसको फील्ड करने के लिए। एक और रन का इजाफा हुआ पाकिस्तान के स्कोर में, जो हो गया अब 98 एक खिलाड़ी के आउट होने पर। और अगर आपको एक 12 की औसत से अगर यहाँ से पाकिस्तान रन स्कोर करता है तो 192 तक पहुंचता है। जी हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाकिस्तान की जानिब से एफर्ट्स दरकार हैं और इस वक्त जो पार्टनरशिप है वो तो मौजूद है, लेकिन ऐसे बैट्समैन पाकिस्तान के पास हैं जो लंबी हिट कर सकते हैं। बहुत बड़ी बाउंड्री है भी नहीं नेशनल स्टेडियम कराची में इन T20 सीरीज के लिए, तो मे बी पॉसिबल हो भी सकता है। रिजवान सामना कर अगली गेंद का और यॉर्कर पर गेंद किया था ऑफ स्टंप लाइन के बाहर, इसको तिरछे बैट के साथ खेला शॉट थर्ड मैन की जानिब। यहाँ पर फील्डर मौजूद थे आदिल, जिन्होंने इसको फील्ड किया, एक रन हासिल किया। रिजवान ने 100 रन मुकम्मल हुए पाकिस्तान की इनिंग्स के। पाकिस्तान 100 फॉर द लॉस ऑफ बाबर आजम। अपने 200वें मैच में पाकिस्तान ने 100 मुकम्मल कर लिए हैं। पाकिस्तान ने जो पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला था 2006 में, कि जिसमें पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद यूसुफ भी खेले थे, वो इस वक्त ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं, जबकि शोएब मलिक भी उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने ओपनिंग की थी। बहरहाल उन्होंने वाहिद खिलाड़ी ऐसे हैं उस टीम के जिन्होंने रिटायरमेंट अभी तक नहीं ली। वे भी आ रहा है एक बार फिर गेंद करने के लिए, जोरदार तरीके से हिट किया इस गेंद को शान मसूद ने मिड विकेट की जानिब, लेकिन एक बार फिर फील्डर अपनी जगह पर मौजूद। तो बाउंड्रीज नहीं मिल रही है पाकिस्तान को और यही एक बहुत बड़ा फर्क है जो नजर आता है पाकिस्तान की बैटिंग में और इंग्लैंड की बैटिंग में, कि वो जब आके बैटिंग करते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर होता है, वरस पाकिस्तान के बैटर्स का स्ट्राइक रेट अराउंड 130 140 चलता है, जो कि जाहिर है कि ऐसी सूरत में नाकाफी है। शान मसूद जिन्होंने ओवरऑल T20s में एज अ ओपनिंग बैट्समैन जो स्ट्राइक रेट है 128 का रखा, लेकिन चौथे नंबर पे भी बड़ा कामयाब रहे हैं, जिनका एवरेज 31 का है। अगली गेंद एक बार फिर यॉर्कर पे गेंद थी और रिजवान ने खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब। एक बार फिर फील्डर मौजूद है, सिर्फ सिंगल ही मिलेगा। तो अब तक इस ओवर में सिंगल्स की सूरत में रन मिले हैं पाकिस्तान को। बड़ा अच्छा ओवर वेली का जो उन्होंने अब तक किया, जिसकी एक गेंद आना और बाकी। और जो बात कर रहे हैं आप ज़ीशान के, पाकिस्तान की जिस तरह से हम बात करते हैं, अगर विकेट्स गिरती हैं तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने स्ट्राइक रेट को नीचे रखा है। इससे अब बाहर निकलना होगा पाकिस्तान को और कहीं ना कहीं अगर आपकी एक ही विकेट खोई है, बहुत जल्दी शायद हम देखें पाकिस्तान का जो इंटेंट है जो नजर आ रहा है खासतौर पे शान मसूद की सूरत में, कि वो बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं जाना चाहते, एग्रेशन के साथ बैटिंग करना चाहते हैं। विली की अगली गेंद, इस मतलब उनको फॉलो किया जो कि मूव कर रहे थे लेग स्टंप लाइन पर, इसको खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट एरिया में। डीप में से फील्डर दौड़ते हुए आ रहे हैं, इसको फील्ड करने के लिए 2 रन आसानी के साथ मिल जाएंगे शान को। ओवर मुकम्मल 13 के बाद 104 एक विकेट के आउट होने पर पाकिस्तान। बैंक इस्लामी ऑटो फाइनेंस से हासिल करें सेम डे अप्रूवल, वो भी 340 से जायद ब्रांचेस पर। बैंक इस्लामी, सर्विंग यू द राइट वे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। पहले भी कहा था अपने साथ डॉक्टर कॉफ लोजेंजेस रखा करो, ये लो। ये हुई दवा। Doctor's #1 choice, Dr. Cough Lozenges. पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल द वे फॉरवर्ड। क्योंकि हम चले तो
पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल्फला की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। और स्टोन ओवर की पहली गेंद, इसको पुल कर दिया है रिजवान ने और गेंद जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। It's a Bisconi Crux boundary. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Bisconi Crux. बॉल पटकी थी, लेकिन वही बात जो इन पिचेस पे हो रहा है कि वो उठी नहीं और बिल्कुल सीने तक गई है। रिजवान ने बड़े आराम से, इतना वक्त मिला उनको, पुल कर दिया 4 के लिए। अगली गेंद के लिए आ रहा है इस पर यॉर्कर लेंथ पर ये गेंद है, उसको निकालने में कामयाब हुए एक बार फिर। स्क्वायर लेग की जाने मिड विकेट से फील्डर दौड़ते हुए 1 रन मुकम्मल किया और दूसरे रन के लिए भी मुड़ गए हैं। बड़े खतरनाक अंदाज में अपनी क्रीज में आए हैं शान मसूद। इनको ड्रैग करना चाहिए था बैट, जो कि नॉर्मली प्रैक्टिस होती है, बट ये बिल्कुल सीधे सीधे दौड़ते हुए आए। हाँ, सही कह रहे हैं आप। आई थिंक इट टुक अ बिग रिस्क देयर। और मगर अगेन कमिंग बैक टू पाकिस्तान, 14th ओवर 110 पे 1 आउट। आप 128 की स्ट्राइक रेट पे बाबर आजम वापस गए हैं। जब आपने 12 ओवर में 12 ओवर तक खेलना है तो फिर आपकी स्ट्राइक रेट 150 160 पे तो पहुंचे। अगली गेंद स्लाइटली शॉर्ट और इस गेंद को भी पुल किया है, लेकिन गेंद जाएगा सीधा फील्डर के पास जो मिड विकेट पर मौजूद थे। सिर्फ 1 ही रन मिलेगा पाकिस्तान और रिजवान को। सो पाकिस्तान का स्कोर बढ़ता हुआ 111 और जो रन बनाने की औसत है वो 8.22 की है, जिससे पाकिस्तान अगर इसी स्कोर बनाता है इसी रेट पे तो 164 165 इतना तकरीबन बनता है। वही बात है। अब ये शॉट आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, आप रिस्क लें, आप सोचें, अपर कट मारें, पॉइंट के ऊपर मारें, थर्ड मैन के ऊपर मारें। आप जब उसको ऑफ स्टंप, शॉट आउटसाइड दी ऑफ स्टंप को पुल करेंगे तो फील्डर तो बैठा हुआ है स्क्वायर लेग पे, 1 ही रन मिलेगा आपको। स्टोन्स की अगली गेंद शॉर्ट गेंद और इस गेंद को पुल किया शान मसूद ने मिड विकेट की जानिब और आसानी के साथ ये सिंगल उन्होंने हासिल किया। इस 1 रन के साथ शान मसूद का स्कोर 369 अब शान और बैटिंग कर रहे हैं रिजवान जी। शान ने भी वही किया। आई मीन आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंगल बॉल है, ही इज अ लेफ्ट हैंडर, तो द बॉल इज एंगलिंग अक्रॉस हिम फ्रॉम द राइट हैंडर, बट ही इज ट्राइंग टू पुल इट ऑन द ऑन साइड। ऑन साइड पे उनके 3 फील्डर बाउंड्री पे खड़े हैं और मिड विकेट के ऊपर भी अंदर एक खड़ा हुआ है। आपको कितने रन मिल जाएंगे इस शॉट से? स्टोन्स की अगली गेंद बाबर रिजवान को, जिन्होंने इस गेंद को खेल दिया एक बार फिर स्क्वायर लेग एरिया में और मिड विकेट से फील्डर आए बड़ी तेजी के साथ और मेक श्योर किया कि ये दोनों बैटर्स दूसरा रन हासिल ना कर सके। सो इस 1 रन के इजाफे के साथ रिजवान का स्कोर हुआ 70। 50 गेंदों में 70 पर बैटिंग कर रहे हैं रिजवान। पाकिस्तान 113 एक खिलाड़ी का आउट होने पर। जो मॉडर्न डे क्रिकेट अब हो गई है उस हिसाब से जिस अंदाज में बैटर्स अब बैटिंग करते हैं, उस तनाजुर में अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग देखें तो वो फिर आपको बड़ी मीडियोकर लगती है। मैं आपको बार बार वही कहता हूं कि हम ओडीआई क्रिकेट के मिडिल ओवर्स खेलते हैं, इवन समटाइम्स इन द पावर प्ले। इस मर्तबा स्लोअर गेंद थी, इसको खेलने में कामयाब नहीं हुए। शान मसूद पुल करने गए थे, गेंद बॉडी पे लगी आके। ओवर मुकम्मल 14 के बाद 113 एक आउट पाकिस्तान। Angry young man, young heavy eater, non rubbish when you're tight line cheater. जीने के लिए खाने वाला, खाने के लिए जीने वाला हर कोई बोले बस give me crux, 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 give me crux. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Give me crux. Bisconi Crux. पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल्फला की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। लाइफ हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं, जैसे नो बॉल पे रन आउट। हाशमी इस बहो फिट है तो हिट है। आदिल रशीद अपने चौथे और आखिरी ओवर के लिए आ रहे हैं। अब तक 3 ओवर्स में इन्होंने 20 रन दिए हैं, कोई विकेट हासिल नहीं हुई है इनको और पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त 113। रिजवान सामना करेंगे आदिल रशीद की। इसने ओवर की पहली गेंद का फुल टॉस बनाते हुए इस गेंद को खेल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन की जानिब और गेंद आहिस्ता आहिस्ता रोल होता हुआ पहुंचा फील्डर तक जो थे एलेक्स हेल्स। 2 रन बनाने का मौका मिला रिजवान को। 2 रन के साथ पाकिस्तान 115, रिजवान 72। ज़ीशान, आपने जो पहले ओवर में निशानदेही की थी वही हो रहा है। बाउंड्री चली गई है कोई 3 गज पीछे
तो एक ये भी वजह है कि आज आपकी इतनी बाउंड्रीज नहीं आ रही हैं। आदिल की अगली गेंद जिसको इस मरतबा पुल करने के लिए गए थे एक घुटने पे बैठ के, लेकिन कामयाब नहीं हुए और गेंद गया विकेट कीपर की तरफ। किसी रन का कोई इजाफा नहीं। एक लेग स्पिनर लेग स्पिन बॉलिंग कर रहा है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप पिच कर रहा है, मजीद टर्न हो रही है, उसको आप लेग पे मारने जा रहे हैं। रिजवान सामना करते हुए अगली गेंद का और इसको स्वीप किया है स्क्वायर लेग की जानिब, लेकिन अनलाइक पाकिस्तान फील्डर लिया हुआ है इंग्लैंड ने यहाँ पर, सो सिंगल ही मिलेगा। बिल्कुल, जैसे दानिश ने भी उस दिन बात बताई थी उसकी बेन डकेट की कि 70 में से कोई 60 रन उसके स्वीप शॉट के बाउंड्रीज पे आए और पाकिस्तान ने उसका वो एरिया ब्लॉक नहीं किया जहां सबसे ज्यादा जा रहे थे। खैर वो चालाकी भी ये कर रहा था कि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट भी मार रहा था, मिड विकेट पे भी मार रहा था, बैक ऑफ लेंथ पे भी मार रहा था। ही वाज रियली मेकिंग श्योर कि वो गैप्स में भी मारे। चालाकी नहीं कर रहे ना हमारे वाले, जरा पोले हैं। उठा दिया है शान मसूद ने इस गेंद को, आउट होने का खतरा और गेंद फील्डर के हाथों में से आके निकल गई। ड्रॉप कर दिया शान मसूद को जैक विल्स जैक्स ने, और ये दूसरा मौका है कि जब गेंद उनके हाथों में आके निकली है। इससे पहले भी रिजवान का एक शॉट जो उन्होंने तकरीबन कैच कर लिया था, ये एलेक्स हेल्स ने राधा, और ये कैच ड्रॉप हुआ, लाइफ मिली शान मसूद को। और बिल्कुल हेल्स ने लास्ट टाइम रिजवान को ड्रॉप किया था जब वो 200 का टारगेट चेस कर रहे थे। He seems to be dropping catches. He seems to be the missing link in England's fielding. अगली गेंद और इस गेंद को कवर्स में खेला है शान मसूद ने फॉर सिंगल। ही मूव्स ऑन टू 6 of 9। पाकिस्तान 119 एक विकेट के आउट होने पर 73 बनाए हैं 53 गेंदों में। 137 की स्ट्राइक रेट है रिजवान की और 42 या 43 की स्ट्राइक रेट 62 की स्ट्राइक रेट है इस वक्त शान मसूद की। अगली गेंद और इस गेंद को डीप मिड विकेट में खेला है रिजवान ने फॉर सिंगल। इस एक रन के साथ रिजवान का स्कोर बढ़ता हुआ 74। पाकिस्तान 120 15 ओवर्स मुकम्मल। पहले भी कहा था अपने साथ डॉक्टर कॉफ लोजेंजेस रखा करो, ये लो, ये हुई दवा। Doctor's #1 choice, Dr. Cough lozenges. Angry young man, young heavy hitter, खाने का दुश्मन या टाइट माइंड हीटर, जीने के लिए खाने वाला, खाने के लिए जीने वाला, हर कोई बोले बस give me crutch, 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 give me crutch. Light, big, salty, delicious and crispy bars. Give me crutch. Visconi Crux. बैंक इस्लामी वन टच बैंकिंग से करें ट्रांजैक्शंस अपने थंब इम्प्रेशन से, वो भी बिना एटीएम कार्ड और चेकबुक के। बैंक इस्लामी, सर्विंग यू द राइट वे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सोहेब, अब ये बैटर्स लाइक फिल सॉल्ट, बेन डकेट या फिर ब्रुक बिल्कुल ही एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि जहां पर अगर आपका स्ट्राइक रेट 150 से कम है तो आप बड़े एवरेज बैट्समैन कंसिडर हो रहे हैं। भाई वो बात में उन्होंने मिलान को ड्रॉप किया है इसी वजह से, क्योंकि क्रिटिसिज्म ये आ रहा था कि मिलान इज नॉट बीइंग एबल टू स्कोर एट द सेम रेट एज ब्रुक एंड एवरीबॉडी, जबकि मिलान नंबर 1 T20 बैट्समैन रह चुका है। अगली गेंद और नए ओवर की जिसको खेल दिया था डीप स्क्वायर लेग की जानिब। गेंद एक टिप्पा खाकर पहुंची फील्डर तक और आसानी के साथ ये सिंगल हासिल हुआ। और अब अभी हम देख रहे थे जो स्ट्राइक रेट आने वाले जो बैटर्स हैं, खुशदिल हो गए या आसिफ हो गए या इफ्तिखार हो गए, इनकी भी जो स्ट्राइक रेट है वो तकरीबन 130 के अराउंड है। भाई अब ये देखें, अब 16वां ओवर आ रहा है, अब मेरे ख्याल में या तो खुशदिल आएगा या आसिफ अली आएगा। दे हैव टू सेंड देम अक्रॉस नाउ, बट कमिंग बैक दे विल ड्रॉप मिलान बिकॉज दे से आई एम सॉरी, ब्रुक इज चैलेंजिंग यू, डकेट इज चैलेंजिंग यू, यू हैव टू बी द वन टू बी ड्रॉप्ड। अगली गेंद जो कि यॉर्कर लेंथ पे किया था, इस गेंद को ऑफ सब लाइन के बाहर इसको खेलने में कामयाब हुए लॉन्ग ऑन की जानिब और सिंगल ही मिल सका सिर्फ शान मसूद को। तो शान मसूद भी आज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रन के लिए। 10 गेंद अब तक खेल चुके हैं। आई थिंक हुआ ये है कि दे फिगर्ड आउट कि शान की स्ट्रेंथ्स क्या थी। वो शॉर्ट ऑफ अ लेंथ गेंद को बैक फुट पे जाके जगह भी बनाने का टाइम मिल रहा था, प्लेसमेंट का भी टाइम मिल रहा था। आज देखें उन्होंने सारी गेंदें उसकी टखनों के ऊपर की। वो जितना पीछे जा रहा है वो उतना पीछे फेंक रहे हैं। दे हैव रेड आउट हिज टेक्निक वेरी क्विकली एंड वेरी एफिशिएंटली। तो शान इज स्ट्रगलिंग टुडे। रिजवान सामना करते हुए अगली गेंद का विली आया, गेंद करने के लिए इस पर बॉलर्स बैक ड्राइव और गेंद जाएगी 2-3 टिप्पे खाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। It's a Visconi Crux boundary. Light, big, salty, delicious and crispy bars.
Visconi Crux. Wow, very well hit, beautifully hit. Rizwan came down, बिल्कुल कनेक्ट किया, हाफ वॉली बनाई, बल्ले के बीच में लाया और सीधा खेला जहां पे आपके फील्डर्स नहीं मौजूद हैं. इट्स अ वेरी वेरी गुड शॉट. विली एक बार फिर आ रहा है, रिजवान उनके सामने. इस बार एक बार पहले से बाहर निकल आए थे और इस गेंद को यॉर्कर एंड पे किया. एक रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए जाना चाह रहे हैं लेकिन लॉन्ग ऑन की फील्ड बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हुए आया और सिर्फ एक ही रन हासिल हो सका रिजवान को. तो इस एक रन के इजाफे के साथ रिजवान का स्कोर हुआ 80. आज जो टोटल बाउंड्रीज अब तक लगी हैं पाकिस्तान की इनिंग्स में वो सिर्फ 12 चौके लगे हैं, जबकि एक छक्का लगा है पाकिस्तान की इनिंग्स में. और अगर हम पिछले मैच की बात करें सिर्फ 27 चौके इंग्लैंड की इनिंग्स में लगे थे. भाई वो एक छक्का भी कोई 10वें ओवर के बाद आया है. तो आई थिंक पाकिस्तान इज जस्ट टेकिंग इट वेरी कंजर्वेटिव. दे स्टिल प्लेइंग देयर 80s ODI क्रिकेट. एक बार फिर मेरी आ रहा गेंद करने के लिए, बहुत गेंद एक्स्ट्रा लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड और एक रन आउट मिलेगा पाकिस्तान को. दूसरी तरफ अगर आपको क्रेडिट देना होगा जो इंग्लैंड बॉलर हैं और फील्डर हैं जिन्होंने अपनी फील्डिंग के मुताबिक गेंदें की हैं और मजबूर किया उन्होंने पाकिस्तानी बैटर्स को कि वो उनकी फील्डिंग के मुताबिक बैटिंग करें. हाँ बिल्कुल, no doubt. I think that's a very good point because we seem to forget how well England have bowled today, both mentally as well as physically. Because mentally उन्होंने बिल्कुल जांच लिया है कौन सा बल्लेबाज क्या करना चाह रहा है हर गेंद पे, और फिजिकली उन्होंने फिर वहां डाली है जहां से वो शॉट नहीं मार सके. ऑफ लाइन के काफी बाहर रखा है इस गेंद को, फुल टॉस थी और स्ट्रेच किया अपने आप को शान मसूद ने. इसको खेला कवर्स में और सिंगल हासिल हुआ शान को. तो 11 गेंदों में 8 पर बैटिंग कर रहे हैं शान मसूद. पाकिस्तान का स्कोर 129. 16वां ओवर चल रहा है जिसकी एक गेंद आना और बाकी, और जिसके बाद बिल्कुल चेंज इन द कमेंट्री जहां आपके साथ होंगे दानिश, नईम, अब्बासी एंड अकील, समर. विली फिगर्ड आउट कि शान हर गेंद के ऊपर लेग स्टंप छोड़ के इनसाइड आउट खेलने के चक्कर में, सो दिस टाइम ही बोल्ड जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड शान हैड टू रीच आउट. इस मर्तबा इस गेंद को बड़े डेलिकेट अंदाज में खेला था फाइन लेग की जानिब. रिजवान ने एक घुटने पे बैठे फुल टॉस बनाते हुए बैट को मूव किया कलाइयों की मदद से, लेकिन सिर्फ सिंगल मिला. 16 ओवर्स मुकम्मल, पाकिस्तान 130, एक आउट. पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे आसानी वसूल करें. बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड. Light, big, salty, delicious and crispy Pas. Visconi Crux. पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे आसानी वसूल करें. बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड. चलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे. पैंथर के टायर्स आपकी सवारी और जज्बे को रुकने ना दें, क्योंकि हम चलें तो पाकिस्तान चलेगा. पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप. आखिरी 4 ओवर का खेल बाकी है. पाकिस्तान अभी भी बड़ी शॉट्स का मुंतजर और कराची का क्राउड इंतजार करता होगा कि कब रिजवान एक मरतबा फिर मोमेंटम हासिल कर पाएंगे. रीस्टॉप गेंद करने के लिए आए हैं, कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन उनकी सदा को देखते हुए गेंद को शॉर्ट ऑफ लेंथ कर दिया. स्लो वन की, घूम के पुल करने की कोशिश की लेकिन गेंद बैट के ऊपर से होती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास. एक और गेंद रहेगा गई, एक और स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकली. 130 पाकिस्तान बदस्तूर 1 के नुकसान. इलेक्शन से थोड़ा सा पीछे मौजूद थे रिजवान और खत्मों का इस्तेमाल भी किया था ये देखते हुए कि रिजवान आ गया है तो आउटसाइड द वेस्टर्न गेंद को कर दिया. यही खूबी है इंग्लिश बॉलर्स की कि वो बहुत ज्यादा आउटसाइड द वेस्टर्न गेंद कर देते हैं जिसकी रीच में बैट्समैन नहीं पहुंच पाता और फिर वो बॉल डॉट हो जाती है जैसे अभी हुई. रीस्टॉप लीग वंस अगेन, गेंद करने के लिए तैयार. यूनिवर्सिटी रोड एंड से ओवर द विकेट, ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की गेंद, क्रॉसिंग डिलीवरी, फिर इसको ऑन साइड पे खेलने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से खेल पाए मिड विकेट की जानिब जहां पर मौजूद थे डेविड मलान हासिल करने के लिए. एंड वंस अगेन सिर्फ एक फील्डर पॉइंट पर मौजूद था. अगर ये इस ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को शॉट खेलने की कोशिश करते उस जानिब, लेकिन ये इनका फेवरेट रीजन है जिसको उन्होंने क्लियर करने की एक नाकाम कोशिश की और सिर्फ 1 रन बन पाया. पिछले इस ओवर के आगाज से पहले जो 30 गेंदें फेंकी गई हैं उसमें सिर्फ 43 रन बने हैं और 1 विकेट गिरी है. और ये वो वक्त है कि जब ऑलरेडी चीजें मोशन में आना शुरू हो जाती हैं. 9 विकेट्स अगर हाथ में रखते हुए शॉट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो उसमें इंग्लैंड की अच्छी बॉलिंग के साथ साथ शायद पाकिस्तान की
पावर हिटिंग की एबिलिटी में क्लियरली कमी का एक मसला है, जिसको अगर पाकिस्तान रियलाइज नहीं करेगा तो फिर वो अपने आप को ठीक अंदाज से मुनासिब हालत में लेकर नहीं जा पाएगा। अदरवाइज आपको तो पता है कि कभी सुबह होती है, कभी शाम होती है, कभी हिट लगती है, कभी नहीं होती, कभी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद होती है, कभी स्टंप होती है, फिर तो मसले की बात ही कोई नहीं है। रीस्टॉप गेंद करने के लिए आ रहे हैं शान मसूद को, एक मरतबा फिर सही कनेक्ट ना कर पाए, रूम बनाकर खेलने के लिए गए थे, मिड विकेट की जानिब खेल पाए, दूसरे रन के लिए वापस पलटे, बाउंड्री लाइन से भागते हुए आए थे, हासिल करने के लिए एम टॉसन, अच्छी रनिंग, लेकिन शायद अभी भी काफी नहीं है। 1-3-3 for 1। शान मसूद जिन्होंने हमने देखा पिछले मैच में बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली थी, 65 किए थे, लेकिन इस बार कोशिश कर रहे हैं, इंटेंट मौजूद है, खत्मों का इस्तेमाल भी करते हैं शॉट लगाने के लिए, लेकिन आज के मैच में अब तक तो कनेक्ट नहीं कर सके हैं शान मसूद, जिन्होंने 11 पे 8 किए हैं। कोई बाउंड्री अभी तक शान मसूद ने नहीं लगाई है, कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले मैच की परफॉर्मेंस है अभी तक नजर नहीं आती। वो मिडिल स्टंप पे गेंद, वंस अगेन ये मिस क्यूट शॉट, बल्कि निचला किनारा लेने के बाद गई है डेविड मलान की जानिब, बाउंड्री लाइन से भागते हुए आए, दूसरा रन तेजी के साथ लिया। फुल क्रेडिट टू दीज टू मुल्तान के सुल्तान्स, जो कि रन तो निकाल लिया, लेकिन रिजवान अगर रन ले, डाइव लगाए और उसके बाद एक वक्फा ना लेना पड़े तो ऐसे तो हालात नहीं। डाइव लगाई जिसके बाद आई थिंक शायद फिजियो को आना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को एक दूसरा रन मुकम्मल करते उन्होंने हर्ट किया है या नहीं, ये हम आके आपको बताते हैं। फिल वक्त की खबर यह है कि 16.4 के बाद पाकिस्तान 135 पे 1 है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। Light, big, salty, delicious and crispy Pas. Visconi Crux. We stop lead to Shan Masood. Shan Masood is unable to connect. Once again, Phil Salt throws the ball back to the striker's end, hits the wicket, but Shan Masood is in. They take a quick single. Pakistan move on to 136 for 1. चूंकि गेंद वहां से तितर बितर होके चलेगी कवर्स की जानिब, इस वजह से ये भाग के बाय का रन बना लिया, लेकिन आप अंदाजा लगाएं ये डेथ ओवर्स की शुरुआत है और रीस टॉपली ने अब तक कोई चौका कंसीड नहीं किया इस ओवर में। एग्जैक्टली, रिजवान जो है वो रन्स लेना जानते हैं। इस बार भी जब सॉल्ट ने हिट किया है विकेटों के पीछे से, जिस तरह अकील ने अंडर आर्म ये थ्रो थी और आकर हमने देखा स्टंप्स पे लगी तो रिजवान को मौका मिला, जैसी थ्रो लगी उन्होंने रन यहाँ पर लिया, लेकिन इस बार जो है रिजवान को तिब्बती इमदाद दी जाएगी। फिजियो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुकम्मल तौर पे फिट नजर नहीं आते रिजवान, जो इससे पहले भी हमने देखा डाइव करते हुए उनको जो चेस्ट पे चोट थी वो लगी नहीं थी, लेकिन चेस्ट पे बोझ आया था उनके, जिसकी वजह से फिजियो आए थे। और इस बार भी हम ये देख रहे हैं कि एक दफा फिर जो रन इन्होंने लिया है, अकील थोड़ा सा उनकी जो खिंचाव है शायद थाई में या घुटने में चोट उनको लगी है। आई थिंक ये जो सीने पे बोझ की आपने बात की है पाकिस्तान के फैंस, और शायद रियलाइज करना चाहिए पाकिस्तान के कैंप को भी। अब हाइंडसाइट में, यानी कि अगर हम मुड़ के देखते हैं तो एक फैसला जो कि अब क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है कि ऐसे स्टार्ट के बाद ये जो खुशदिल शाह और आसिफ अली की सूरत में आपके पास पॉकेट साइज डायनामाइट्स मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते थे ताकि वो अगर एक तेजी के साथ चीज़ों को मोशन में लाते। शान मसूद आए हैं और अब आई एम श्योर कि जो इनिंग्स उन्होंने पिछले गेम में खेली है, इनफरादी अगर कोई किसी को डाउट था तो वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, लेकिन जहां तक टीम की इस वक्त हिकमत अमली का सवाल है, वो अनफॉर्चुनेटली खुद भी उस पावर हिटिंग का मुजाहरा नहीं कर पा रहे और ओवरऑल रिजवान भी उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। और ये वो पूरा वक्त है जो कि शायद जिस तरह से आप कहते हैं कि दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान में खलेगा, उन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज को जाया करके जो कि अवेल नहीं कर पा रहा था। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं अकील, ये खुशदिल शाह और आसिफ अली भी नहीं कर पा रहे हैं जिनको इससे पहले वो कहने का मकसद ये है कि ये वो थोड़ा वक्त लेते हैं अपने आप को सेटल करने में, खासतौर पर खुशदिल शाह। तो अगर तो आप उनको देखना चाहते हैं तो ये उनके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म था। अब फिल वक्त लंबा लेट गए रिजवान, तो हम एक ब्रेक लेते हैं सांस लेने के लिए। 3 ओवर और 1 गेंद बाकी, 136 पे 1 है पाकिस्तान अपने Pakistan is 136 for 1 in the 17th over. Rizwan does seem to be injured after taking that dive. Pakistan has lost only 1 wicket so far, which was Babar Azam, Liam Dawson bowling a shorter delivery. Babar Azam trying to dispatch it over deep mid wicket, but gets caught by the deep mid wicket fielder. He went for 36 of 28, but since then, since Shan Masood came to the crease, it has looked like Shan Masood has struggled to get runs off the bat. He is trying, but to no avail so far. He's 13 of 14, while Mohammad Rizwan is on 82 of 60.
he is getting his pads and gloves back on. So let's hope he's fit enough to continue this innings. He has played a good knock, but it's still not quick enough, especially in the last 5 in the death overs. 80 रन बनाए 60 गेंदों पर 136 का स्ट्राइक रेट है अकील समर। ये चलना शुरू किया तो शायद शाकीन दरमियान में परेशान हो गए हों कि कोई रिटायर्ड हेड का ऑप्शन तो नहीं आ गया। ओवर की आखिरी गेंद जिसको स्क्वायर की जानिब खेला है एंड दैट इज अ गिवन कि बाउंड्री वो नहीं लगा पा रहे। स्क्वायर की जानिब गेंद गई, फील्डर मौजूद थे हैरी ब्रुक्स सिंगल के साथ। ओवर मुकम्मल से 3 ओवर बाकी, पाकिस्तान स्ट्रगलिंग 137 for 1। पहले भी कहा था अपने साथ डॉक्टर कॉफ लोजेंजेस रखा करो, ये लो, ये हुई दवा। Doctor's #1 choice, Dr. Cough lozenges. क्योंकि हम चले तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप। पहले भी कहा था अपने साथ डॉक्टर कॉफ लोजेंजेस रखा करो, ये लो, ये हुई दवा। Doctor's #1 choice, Dr. Cough lozenges. पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 18वें ओवर का आगाज, मिडल स्टंप पे गेंद जिसको खेला है लॉन्ग लेग की जानिब। ब्रीस स्टॉपली वहां पर मौजूद थे, एक और रन बनाने का मौका हासिल किया। इट लुक्स लाइक अ वेरी लाउड थॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन शायद ये वो मौका है जब T20 क्रिकेट में ऑर्गेनाइज करने वाले ने कि ICC ऑप्शन दे दे कि अब आप अपने खिलाड़ी को रिटायर करना चाहते हैं, यानी कि बाद में दोबारा लाना चाहते हैं, तो वो जाएं और जो खिलाड़ी तैयार है पावर हिटिंग के लिए वो आ सकें। सो इट माइट बी अ वेरी लाउड थॉट, लेकिन आई थिंक ये बेहतरीन मौका है इस्तेमाल करने का उसको। ये खास तौर पे शायद पाकिस्तान को देखते हुए कर रहे हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है चौके लगाने के लिए। फुल टॉस मिल गई है, शान मसूद को कनेक्ट किया स्क्वायर लेग जाने, लेकिन आप हाल देखिए इस मरतबा भी एलेक्स सेल्स को बोल ना कर सके शान, जो कि स्क्वायर लेग पर मौजूद थे। एलेक्स सेल्स ने 2 ओवर पहले इनका कैच ड्रॉप किया था, लेकिन एट द बैक ऑफ माइंड उनके जहन में जरूर मौजूद होगा कि अगर ड्रॉप कैच के बाद भी बैटर ने कोई हिटिंग नहीं करनी है तो लेट्स टेक इट, नो प्रॉब्लम। राइट, रिजवान जिन्होंने अब तक खाली 1 छक्का लगाया है, इसके अलावा पाकिस्तान के कोई और बैट्समैन छक्के नहीं लगा सके हैं। 18वां ओवर है, पाकिस्तान की जानिब से बाउंड्रीज वैसे नहीं आई हैं, कुल मिलाकर 12 चौकियां हैं अब तक से। डेब्यूटेंट अलवी स्टोन अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं, मिडल स्टंप पे गेंद, अच्छी डिलीवरी, इन ऑल फेयरनेस टू द डेब्यूटेंट, टर्न कर दिया इसको बेन डेकेट की जानिब और बाउंड्री लाइन से भागे हैं। 1 रन बनाने का मौका मिला। बेन डेकेट को देखा तो एक ख्याल आया कि वो जो पावर हिटिंग आपको बेन डेकेट्स और विल जैक्स, हैरी ब्रुक्स जैसे खिलाड़ियों में दिखाई देती है, जिसमें जब बॉलिंग अच्छी भी हो रही हो तो वो अपने रिवर्स स्वीप्स और पैडल स्वीप्स और रैम्प और रिवर्स रैम्प के जरिए से हलचल मचा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान ये आज की शाम क्लियर हो रहा है कि वो शॉट्स मिसिंग हैं, क्योंकि जब गेंदें अच्छी हो रही हैं तो वो मैनूवर करने में जो कि इस अंदाज के बैट्समैन कर पाते हैं वो नहीं कर पा रहे। शान मसूद सामना कर रहे हैं वंस अगेन, ऑली स्टोन का डाउन द लेग साइड गेंद, फाइनली जमूर टूटा, खुदा खुदा करके बैकवर्ड स्क्वायर लेग की बाउंड्री को क्लियर किया है शान मसूद ने। It's a Bisconi Crux boundary. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Bisconi Crux. और ये भी एक खराब गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी जो कि डाउन द लेग साइड जा रही थी और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कोई था नहीं। पूरा फायदा मिल गया शान मसूद को कि इस पे बाउंड्री जो है वो लगा दें और उनको वो चौका भी मिल गया है। एक बार फिर तैयार है शान। 13 चौके लगे अब तक से पाकिस्तान की इनिंग्स में। ओवर द विकेट ऑली स्टोन गेंद करने के लिए राइजिंग डिलीवरी, बैकवर्ड पे गए, कनेक्ट किया है मिड विकेट की जानिब, लेकिन वंस अगेन ये जो इस गेंद को खेल सकते थे सदर से लेकर तारिक रोड के दरमियान कहीं भी, इन्होंने भी बमुश्किल इसको कनेक्ट किया फील्डर की जानिब। और ये वो मौके हैं जो कि क्लियरली पाकिस्तान अपने हाथ से निकाल रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन बैट्समैन मौजूद है, स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज हैं और हाथ से निकल रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ तारिक रोड से थोड़ा पहले ही खेल लेते, तब भी यहाँ पर बाउंड्री जो है वो मिल जाती, लेकिन बहरहाल अब तक पाकिस्तान का स्कोर है 145 पर 1। पिछले 30 गेंदों पे 40 रन आए सिर्फ। पेविलियन से दूर भागना शुरू किया है ऑली स्टोन ने अपने कोटे की आखिरी गेंद करने के लिए कदमों का इस्तेमाल किया। रिजवान ने बॉटम एज पे गेंद लगी है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब गेंद गई, दूसरे रन मुकम्मल करने के लिए आना चाहते थे लेकिन मना किया रिजवान ने। सिर्फ 12 गेंदें बाकी, पाकिस्तान 146 पे। लाइव हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं, जैसे नो बॉल पे रन आउट। हाशमी इस बहो फिट है तो हिट है। चलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पैंथर के टायर्स आपकी सवारी और जज्बे को रुकने ना दें, क्योंकि हम चलें तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप।
डेंगू का मूजी मर्ज फिर तेजी से फैल रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं, क्योंकि अब मॉस्ट्रेट दस्तयाब है। मॉस्ट्रेट पपाया के पत्तों का खालिस निचोड़ आपके प्लेटलेट्स को बहाल करता है। मॉस्ट्रेट, डेंगू का मुअस्सर इलाज। मॉस्ट्रेट अवेलेबल इन टैबलेट्स एंड सिरप बाय हाइमॉन्ट। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। कदमों का इस्तेमाल किया रिजवान ने, लॉन्ग ऑफ की जानिब खेलना चाहते थे लेकिन मिड ऑफ पर आड़े आ गए एलेक्स हेल्स और दाएं जानिब जाकर उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया। एक और गेंद, एक और अंडरस्टूड ये कंक्लूजन, एक रन और 11 गेंदें सिर्फ रह गई 147 पे। 50 रन की पार्टनरशिप मुकम्मल हुई है 39 गेंदों पर और साथ साथ इब्तिदाई 10 ओवर में पाकिस्तान ने 82 किए थे, जबकि जो उसके बाद अगले 8 ओवर से उसमें पाकिस्तान ने बनाए हैं 56 रन, यानी कि सिर्फ एक विकेट गिरी है। रन्स पाकिस्तान ने काफी सुस्त रवि से बनाए हैं, जो T20 का खासा है ही नहीं। शान मसूद सामना कर रहे हैं, ये मुल्तान सुल्तान के शान मसूद को मुल्तान के ही ओली डेविड विली ने गेंद की और इस लो फुल टॉस को में कनेक्ट ना कर पाए बाउंड्री के ऊपर से। क्लियरली पाकिस्तान लैग करता है पावर हिटिंग को। अच्छी गेंदें तो अच्छी, लेकिन बुरी गेंदों को भी वो नहीं कनेक्ट कर पा रहा। गेंद को खेलने के लिए हाई बैकलिफ्ट के साथ रूम बनाया था, लो फुल टॉस मिली लेकिन बमुश्किल खेल पाया बैंड डेकेट की जाने। 1 बाउंस, गेंद उन तक गई, 2 रन का इजाफा। राइट, शान मसूद से भी जो हम देख रहे हैं हिट है वो नहीं लग पा रही है, लेकिन दूसरी तरफ रिजवान ने अकील 65 गेंदों पे 87 किए हैं, यानी कि अब 65 गेंदें खेल चुके हैं, लेकिन 9 चौके और 1 छक्का सिर्फ उन्होंने लगाया है। अब तक तो गेंद जो है फुटबॉल नजर आ जाती है। मुल्तान सुल्तान की खैर कंट्रीब्यूशन हर तरह, ऊंचा खेलने के लिए गए थे ऑन साइड पर और आउट करार दिया। फाइनली मुल्तान सुल्तान और डेविड विली ने विकेट हासिल की। शान मसूद की मिजरी का खात्मा हुआ है, सिर्फ 1 चौका लगा पाए शान, 19 रन बनाकर आउट। 149 फॉर 1। आर दे गोइंग टू रिव्यू दिस? 5 सेकंड बाकी हैं इस DRS टाइमर में। नो वॉक शुरू कर दिया शान ने, इनिंग्स की 9 गेंदें बाकी। 149 for 2। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। चलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पैंथर के टायर्स आपकी सवारी और जज्बे को रुकने ना दें, क्योंकि हम चलें तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप। बैंक इस्लामी ऑटो फाइनेंस से हासिल करें सेम डे अप्रूवल, वो भी 340 से जायद ब्रांचेस पर। बैंक इस्लामी, सर्विंग यू द राइट वे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। पहले भी कहा था अपने साथ डॉक्टर कॉफ लोजेंजेस रखा करो, ये लो। ये उल्लाबाज डॉक्टर्स नंबर 1 चॉइस, डॉक्टर कॉफ लोजेंजेस। कोई और नहीं बल्कि खुशदिल शाह बैटिंग करने के लिए आ गए हैं, जबकि 9 गेंदें आना बाकी रह गई इस इनिंग्स की। शान मसूद जो 21 रन बनाने के बाद वापस लौटे हैं, 19 गेंदों का सामना किया था, तो रिजवान का साथ देने के लिए शान मसूद आए। हालांकि इस पे रिव्यू बनता था अकील समर, लेकिन शान मसूद ने लेना मुनासिब नहीं समझा। और मैं शायद ओवर ऑब्सेस्ड हूँ ये मुल्तान सुल्तान से। आप अंदाजा कीजिए कि बॉलर भी मुल्तान सुल्तान के, नॉन स्ट्राइकर पे भी, स्ट्राइकर पे आउट होने वाले भी और उनके बाद आने वाले भी खुशदिल शाह मुल्तान सुल्तान से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अब ये इससे कदा नजर कराची का क्राउड बड़ी शॉट चाहता है। 9 गेंदें बाकी हैं। 149 for 2। भागना शुरू किया यूनिवर्सिटी रोड एंड से। पहली गेंद पर जोरदार अंदाज से खेलने की कोशिश की, लेकिन इस ओवर पिच डिलीवरी को फिर बैंड डेकेट की जाने खेल पाए और वो वार्म अप पे वार्म अप होते जा रहे हैं। सिंगल बहरहाल मिला, पाकिस्तान ने 150 रन तक तो हासिल कर लिए हैं। ऑल इज नॉट लॉस्ट, अभी भी खैर गेम में दम बाकी है और अब रह गई हैं इस मैच की 8 गेंदें बाकी। 150 for 2। एक बात तो है कि यहाँ पर इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं विकेट हासिल नहीं कर सके हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो इस बात पे बहुत खुश होंगे कि उन्होंने जो रन्स हैं पाकिस्तानी बैट्समैन को बनाने नहीं दिए, विकेट्स हासिल नहीं किए, तो तब भी क्या, जो रन्स हैं एटलीस्ट पाकिस्तानी बैट्समैन खुल के नहीं बना सके। रिजवान 87 पे आउट रहे हैं। भागना शुरू किया था डेविड विली ने, लेकिन रिजवान ने दरख्वास्त की है कि दोबारा अपनी बॉलिंग के निशान पर जाएं। वैसे भी जब PSL आएगा तो उनके कप्तान होंगे तो इतना उनका एहतराम तो बनता है। पहली 50 33 गेंदों पे, दूसरी 50 में पाकिस्तान दूसरे गेयर में चला गया 42 गेंदों पे, जबकि तीसरी के लिए आया तो है तीसरे गेयर में, लेकिन अभी तो 5वें गेयर की बात हो रही थी। सुपर हाईवे पे चढ़ा होना चाहिए था पाकिस्तान को। 5वीं गेंद करने के लिए आ रहे हैं हमने आखिरी ओवर की। 2 रूम बनाकर एक मरतबा फिर बमुश्किल कनेक्ट कर पाए लॉन्ग ऑन की जानिब। वहां पर मौजूद थे फील्ड करने के लिए फॉरवर्ड आते हुए एलेक्स हेल्स। अनदर रन एडेड, सिर्फ 7 गेंदें बाकी और पहाड़ से जिम्मेदारी है खुशदिल शाह के आज का और शायद बरसों का बोझ है वो इन 3-4 गेंदों में उतार दें।
राइट, ओवरऑल जिस तरह से अब तक इंग्लिश बॉलर्स ने अकील बॉलिंग की है, कमाल की बॉलिंग की है, ज्यादातर हमने देखा फुल एंड डिलीवरीज की है और आउटसाइड द ऑफ स्टंप की, पाकिस्तानी बैट्समैन शॉट नहीं लगा सके, लेकिन कोई इम्प्रोवाइजेशन या कोई इस तरह के शॉट जो बनाकर खेलते वो भी नजर नहीं आए। विली की आखिरी गेंद एक ओवर, इसके बाद बाकी खूबसूरत यॉर्कर जिसको डिफेंड ही कर पाए, पॉइंट की जानिब गेंद गई, विली का ख्वाब जैसा कोटा मुकम्मल हुआ, एक ओवर का खेल बाकी, 152 for 2 पाकिस्तान। चलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पैंथर के टायर्स आपकी सवारी और जज्बे को रुकने ना दें, क्योंकि हम चलें तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप। बैंक इस्लामी वन टच बैंकिंग से करें ट्रांजैक्शंस अपने थंब इंप्रेशन से, वो भी बिना एटीएम कार्ड और चेकबुक के। बैंक इस्लामी, सर्विंग यू द राइट वे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ऑलराइट जी, तो सर्दी गर्मी इस दफा लगता है गर्मी का मौसम जो है थोड़ा अकील समर वो तवील होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान का स्कोर 152, 2 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ एक ओवर आना बाकी रह गया है, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन की जानिब से बाउंड्री आती हुई नजर नहीं आ रही है। अब तक जिस तरह से बैटिंग हुई है, हमने पहले भी जिक्र किया था, पाकिस्तान की इनिंग्स में सिर्फ एक छक्का लगा है, जबकि 19 ओवर हो चुके हैं और सेट बैट्समैन रिजवान भी मौजूद हैं जिन्होंने 66 गेंदों पर 88 रन बनाए हैं। यस, खुशदिल शाह किस खेत की मूली हैं, क्या टैलेंट रखते हैं, क्या पावर हिटिंग की उनके पास एबिलिटी है, आज दिखाने का मौका है। रीस टॉपली आखिरी ओवर करने के लिए आ रहे हैं, भागना शुरू किया है पेविलियन के पास से, ऑफ स्टंप के पास गेंद उठा दी, एक्स्ट्रा कवर की जाने पीले गेंद के नीचे आ रहे हैं और कैच कर लेंगे मोइन अली कप्तान खुद। खुशदिल शाह 2 रन बनाकर वापस, 5 गेंद इनिंग्स की बाकी, 152 पे 3 पाकिस्तान। डेंगू का मूजी मर्ज फिर तेजी से फैल रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं, क्योंकि अब मॉस्ट्रेट दस्तयाब है। मॉस्ट्रेट पपाया के पत्तों का खालिस निचोड़ आपके प्लेटलेट्स को बहाल करता है। मॉस्ट्रेट, डेंगू का मुअस्सर इलाज। मॉस्ट्रेट अवेलेबल इन टैबलेट्स एंड सिरप बाय हाइमॉन्ट। तो खुशदिल शाह साइड ऑफ स्टंप की एक गेंद थी जिसको कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन एज हुआ और आउट होने के बाद ये वापस चले गए। कप्तान मोइन अली ने इनका कैच लिया। खुशदिल शाह जिन्होंने 2 रन बनाए हैं, पाकिस्तान 152 पे 3, कोई और नहीं बल्कि आसिफ अली अब आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। 5 गेंदें इनको मिल रही हैं और इन गेंदों पे वो क्या करेंगे ये देखना है। यस, ये पाकिस्तान की वो इनिंग्स है जो कि डगर पे चल ही नहीं पाई। जो ओपनिंग स्टैंड पाकिस्तान को मिला वो था बाबर आजम और रिजवान के दरमियान 97 रन का, वो भी हवा हो गया। 11.5 ओवर में इन्होंने रन बनाए थे, जिसके बाद एक ट्रिक शायद पाकिस्तान ने मिस की जो बैटिंग ऑर्डर में तब तब्दीली कर सकता था, लेकिन अच्छी बॉलिंग इंग्लैंड की और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बैट्समैन की ये मैनूवर ना करने की एबिलिटी ने आज बैकफुट पे धकेला है। लेकिन बहरहाल अब जो करना है वो पाकिस्तान के बॉलर्स को करना पड़ेगा। रिजवान अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद हैं जिन्होंने 86 गेंदों पर 88 रन की इनिंग्स खेली है और एक दिलचस्पी की बात ये भी होगी कि क्या वो T20 इंटरनेशनल्स में अपनी दूसरी सेंचुरी आज मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं। 5 गेंदें इसके लिए बाकी हैं और अगर ऐसा कर पाए, यानी कि 12 रन इनके पास मौजूद हैं, तो फिर भी जाते जाते मोमेंटम शायद पाकिस्तान अपने हक में चुरा सकेगा। ओवर द विकेट रीस टॉपली ने कमेंट्री बॉक्स से दूर भागना शुरू किया है, लो फुल टॉस मिली है आउटसाइड द ऑफ स्टंप और खेल दिया एलेक्स हेल्स की जानिब, मिड ऑफ पर मौजूद थे। इस मर्तबा कोई गलती नहीं की, एलेक्स हेल्स ने मुस्कुराहटों का तबादला किया। मोइन अली और एलेक्स ने शायद वो कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह गए एक दूसरे को देखते देखते। 4 गेंदें बाकी, रिजवान 88 का टॉप स्कोर करके आउट, 152 for 4। डेंगू का मूजी मर्ज फिर तेजी से फैल रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं, क्योंकि अब मॉस्ट्रेट दस्तयाब है। मॉस्ट्रेट पपाया के पत्तों का खालिस निचोड़ आपके प्लेटलेट्स को बहाल करता है। मॉस्ट्रेट, डेंगू का मुअस्सर इलाज। मॉस्ट्रेट अवेलेबल इन टैबलेट्स एंड सिरप बाय हाइमॉन्ट। राइट जी, तो टोपले को खुद भी पता नहीं चला वो किस तरह से खुद हैट्रिक पर जो है अकील समर आ गए हैं। पहले खुशदिल शाह की जो विकेट है वो मिल गई थी और उसके बाद अब रिजवान एक ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश में, जो कि मिड ऑफ को क्लियर करना चाह रहे थे, उसके ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सीधा मिड ऑफ पर जो फील्डर मौजूद थे एलेक्स हेल्स, उनके पास ये गेंद पहुंची और रिजवान 88 रन बनाने के बाद वापस लौटे हैं। 67 गेंदों का सामना किया, 9 चौके और 1 छक्का। क्राउड बैक करता हुआ रीस टॉपली को, दिस इज इंटरेस्टिंग। हैट्रिक बॉल करने के लिए आ रहे हैं रीस टॉपली, सामने मौजूद है आसिफ, फाइनली लॉन्च किया है इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, तो कुछ जाते जाते पाकिस्तान को मिला छक्के की सूरत में फुल टॉस एंड अ फुल बूमिंग 6 बाय आसिफ। It's a Bisconi truck sixer. Light, big,
salty, delicious and crispy pass. Visconi Crux. हैट्रिक को किल करने के लिए इससे बेहतर जवाब और क्या हो सकता था। ये फुल टॉस गेंद मिली, बैक फुट पर गए इस फुल टॉस को खेलने के लिए और मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से क्लियर किया, 6 रन बना दिए। 3 गेंदें अभी भी बाकी, गेंद और पे स्लो वन जिसको जोरदार अंदाज से ड्राइव किया मोइन अली की जानिब तो तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल कर पाए। गो के शायद अब आउट ऑफ कॉन्टेक्ट से बात हो, लेकिन हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है आसिफ के लिए, जो पहली मरतबा PSL का फाइनल खेला गया था कराची में, वहां पर इन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई थी और अपने लिए सेफ जोन में लेके गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की चैंपियन टीम को, जो कि दूसरी मरतबा फातह करार पाई थी। बहरहाल 2 गेंदें बाकी हैं, नवाज आने वाले नए बैट्समैन हैं जिनको कम वक्त में ज्यादा कुछ करना है और एक मरतबा फिर रीस्टॉप गेंद करने के लिए तैयार है। इब्तिदा की थी बैक टू बैक विकेट्स के साथ, देन छक्का कंसीड किया है और फिर 1 रन। 5वीं गेंद आखिरी ओवर की, फुल टॉस मिल गई लेकिन उसको भी नवाज स्ट्रेट बैट से खेल पाए, सीधा लॉन्ग ऑफ पर मौजूद फील्डर अपने बाएं जाने पहुंचे हासिल करने के लिए। Alex Hales single added to the total 160 for 4. बाबर आजम जिनको ये लगता था कि शायद 180 और 190 जो है वो डिफेंडेबल है, लेकिन उस वक्त तक जो टॉस में उन्होंने फैसला किया था ये लगता ही नहीं है कि मोइन अली जिन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी थी, इस फैसला करने के बाद बाबर आजम ने उस स्कोर तक पहुंचते हुए नजर आए हैं। 160 जरूर किए हैं लेकिन अभी भी पाकिस्तान शायद अपने मतलूबा टारगेट से पीछे रहा है जो कि बनाना चाह रहा था। आसिफ के नारे बुलंद होते हुए क्या एक और स्लोर बन आएगी। रीस्टॉप इनिंग्स की आखिरी गेंद करने के लिए आ रहे हैं ओवर द विकेट, गेंद को खेलाया आसिफ ने और ये तो गए स्टेडियम के बाहर का सांस किया इधर या उधर, लेकिन जाते जाते हलचल पैदा करती है आसिफ अली ने। इट्स अ मैसिव टॉल एंड ब्यूटीफुल सिक्सर बाय द राइट हैंडर। It's a Visconi Crux sixer. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Visconi Crux. तो आसिफ जिनको यहाँ पर मौका मिल गया था, ये एक स्लोर वन थी और इसको आप पूरा फायदा उठाया, समझ गए थे, लिहाजा काफी बड़ा ये छक्का लगाने में आसिफ जो है वो कामयाब रहे। गेंद को डिस्टेंस भी मिल गया और एयर में भी काफी देर तक ये बॉल रहा। बिलाखिर आसिफ अली जिनको 3 गेंदें हमने देखा कि मिली और 3 गेंदों पे इन्होंने 13 रन बना दिए और अब पाकिस्तान का स्कोर 12,166, 4 विकेटों के नुकसान पर। कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग लाइन ऐसी है कि जो कहीं ना कहीं इस स्कोर को डिफेंड कर सकती है, लेकिन मत भूलें कि इंग्लिश साइड के पास ऐसे बैट्समैन मौजूद हैं जो इस टारगेट को चेस वक्त से Hello, I am back, and just to tell you guys, Pakistan get to 166 for 4, and this has been very difficult to watch. It's been scary, it's been crazy, and you know, what can I say about the fact that Pakistan have been hilarious in this particular match? kaise aayega match, koi bata do match. Javeria, so the match, Pakistan 166 for 4 in their allotted 20 overs. Mohammad Rizwan, the sole warrior, especially with Babar Azam at the top. Yes, they batted quite well. They scored 97 of 72, but that's when Babar Azam tried to be aggressive. That's when Babar Azam tried to go for a heave over deep mid wicket and got caught. That was the big problem. Right, he got caught, and then Shan Masood came, and Shan Masood today did not look like Shan Masood from 2 days ago. They figured him out. The English bowlers figured out how to bowl to Shan Masood on this particular track. The track started to slow down just a little bit. And for that reason, we saw this. We saw Shan Masood struggling, and then finally there was a beautiful delivery from David Willey, a Yorker on middle stump. LBW, Mr. Shan Masood had to go, and then this is the kicker. People are talking about should Shan Masood have been sent at 3? Of course he did need to be sent at 3. But did Khustal Shah need to be sent at 4? Was Khustal Shah necessary at number 4? No, he wasn't. Khustal Shah wasn't necessary at number 4. I think this is where Asif Ali should have come in. And yes, I'm not a huge Asif Ali fan. However, I have seen him do this on multiple occasions for Pakistan, be it in the PSL or actually now recently in Pakistan for Pakistan as well. He scored 13 of 3. Came in, 2 sixes, jobs are good, and Pakistan gets to 166. Yes, under par still, but it's a decent position to be in.
So Pakistan need to understand that in certain situations, when you've lost the plot, when you've got 2 overs remaining, don't send in Khushdil Shah, because Khushdil Shah needs more time to get in. Asif Ali, the problem with Asif Ali is he has 1 gear, and that is it. He can't defend, he can't play spin very well, but what he can do is smash the pace bowlers. And if they are off their line just a smidge, he's able to do it, especially in conditions like the UAE or Pakistan or Sri Lanka, basically in Asia. He is great, right? He might be really, really good in Australia, which is what I'm hoping for from what I've seen of him. So that's the hope at least. But that's the one bad decision I saw in this batting lineup. Now, next. Babar Azam and Mohammad Rizwan have to try and build a platform, which is why 97 in 11 overs makes sense, but you can't lose your wicket then. And that was the big kicker, because as soon as the Babar wicket fell, Rizwan expected Shan to do what Shan did 2 days ago. He couldn't, so Rizwan tried to be more aggressive. He couldn't because he wasn't hitting the ball. He was trying to hit the ball too hard, wasn't going anywhere, and England came back into it. Not just the pace bowlers, but also the spinners being very, very effective. Now let's look at the England bowling. Right, Liam Dawson, 1 for 32. We got Reece Topley in the end. Yes, picked up 2 for 37 at the end, but dude was bowling really, really well. Be it pace off the ball, be it the bounce, be it the length that he was bowling. Some of the line, yes, initially he wasn't as accurate, but eventually he became very, very accurate with his lines. Ollie Stone on debut, had to go for runs, made sense. David Willey, very impressive. Started off badly, but ended his spell really, really well. And Adil Rashid, as always, has consistently for England been such an important cog in the wheel. And there's no doubt why England depends so much on him, because he is that class. Now, when England has to come out to bat, they're chasing 167. England will be able to chase 167 quite easily. The way they've been batting, the way they've been playing, 167 isn't that big of a target. Let me just put this here. England needs 167 to win. We just got to remember that. Okay, England needs 167 to win, and Pakistan just needs to try and restrict the runs, pick up early wickets. Hales, Salt, Jacks, what's his name? Brook, Duckett, they all need to go quite cheaply, right? We have to, Pakistan has to think about that. Also, extras. Look at the number of extras England bowled. Just look at it. It's 5. 1 no ball and 1 wide and 3 leg byes. Pakistan has been consistently bowling between 15 and 25 extras, be it wides, no balls. Let's say 10 to 20. That's still a lot of extras, and we can't afford to do that from a Pakistani perspective. But from an England perspective, they'll be like, okay, we're only chasing 150 because Pakistan's going to bowl extras anyways. And you got Hales, who takes his time, but you got Salt, who can come out and just bash it from ball 1. So in the end, no, it's not the best total for Pakistan. No, it's not ideal for Pakistan, but it's not a bad score. It's not a bad score. It is under par, in my opinion, though. Fazan Khan comes back. I'm surprised how things, how this innings went. I still have faith in Shah. So do I. Yeah, of course. Is this just a case of him feeling his way back into international cricket and he will become more consistent? I agree with that final statement, but also the fact that this pitch became a little too-paced. And when it did, the England bowlers took advantage of it and cut off all the angles that Shan Masood was trying to get. Did you see the way that they kept trying to bowl into him and then trying to bowl away from him when Shan was trying to utilize the crease? They knew how to play around that. So England were very smart about their bowling. So I don't think it's we should worry about Shan Masood. I do not want Pakistan to worry about Shan Masood. You stay with Shan until the end of the T20 World Cup. I don't care if Fakhr is back, right? Shan Masood needs to be with Pakistan till the end of the T20 World Cup because he will be able to provide stability as well as be aggressive. 1 good match and 1 bad match and 1 okay match doesn't mean, oh, he can't do this, he can't do that. That's my take at least. But thank you, Fazan. Really appreciate that. Tayyib Hassan says, hi. Hello, Tayyib Hassan. Thank you so much for watching. Please like, share, subscribe, all that good stuff. Really, really helps the channel. Fazan says, yes, he was trying to play shots. To be fair to him, yeah, he was trying. It just wasn't working. So you can't blame him. Not the intent or all that stuff that everyone blames whenever Pakistan is playing, right? They're like, oh, the intent was off. This was off. This was this, blah, 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 blah. But yeah, 166 for 4. Not ideal. But I agree with this. About 60% chance that England's going to win today. SM says, I hate those people a lot who say that these players play for themselves.
They were not able to play shots. That doesn't mean it was deliberate. By the way, Asif should have been sent earlier. Plays the slow ball well. He plays the slow ball well. Yep, not going to lie. He does play the slow ball well. He plays the quick ball too, but not super quick like Mark Wood quick, but more like Reece Topley quick. He definitely does. So yeah, I would have liked Asif Ali at 4 today. Yes, he is inconsistent. So is Khushil Shah, but Khushil Shah needs more time than someone like Asif Ali. So it would have made sense to send in Asif Ali rather than the way Pakistan kind of went about doing things. Again, it's not wrong. It's just, in hindsight, it looks a lot clearer. But at the time, even I thought, okay, Khushil Shah not the best shot. Maybe Asif Ali would have made more sense. But it is what it is. The left-hand, right-hand combination should not have been considered at that point. It's only an over and a half. Okay, gotta send Asif Ali, or 2 overs, right? Whatever it is, gotta send Asif Ali in. Hazan Khan says for the World Cup, if Fakhr is fit, top 4 should be locked. Yeah, agreed. 100%. Babar is one, Fakhr Shan, and then you go for the rest. 100% agree with you. Also, India might chase down this 180 total. I'm not going to lie. Australia scored 186 for 7. Tim David did it. Tim David, 54 of 27. But since the wicket of Rohit Sharma and KL Rahul, the other 2 guys, Virat Kohli and Surya Kumar Yadav, as always, just doing a pretty decent job. So yeah, India might just take this one, and let's see if Pakistan can restrict England under 166, because it's going to be a doozy of a match. Thank you everyone for joining. Please like, share, subscribe. I will be moving across back to the Urdu commentary in a couple of minutes. It's gonna start. It's gonna be an ad, and then the Urdu commentary will start. But yeah, thank you so much, and yeah, catch you later. Enjoy the rest of the stream, and hopefully Pakistan can do something. By the way, just read this. Mohammad Asif, strike rate 433. That's all Pakistan needs all the time. Thank you, and enjoy the Urdu commentary, guys. Thank you very much. पहले भी कहा था अपने साथ डॉक्टर कॉफ लोजेंजेस रखा करो ये लो ये हुई दवा Doctor's #1 choice, Dr. Cough lozenges. Angry young man, young man eater, खाने का दुश्मन है lifeline eater. जीने के लिए खाने के लिए जीने वाला हर कोई बोले बस. Give me crutch, 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 give me crutch. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Give me crutch. Visconi Crux. पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से ज़ायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें. बैंक अल-फलाह, the way forward. लाइव हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं. जैसे लास्ट बॉल पे छक्का, हाशमी इस बहो, फिट है तो हिट है. क्योंकि हम चले तो पाकिस्तान चलेगा. पाकिस्तान का #1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप. डेंगू का मूजी मर्ज फिर तेजी से फैल रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं, क्योंकि अब मॉसरेट दस्तयाब है. मॉसरेट पपाया के पत्तों का खालिस निचोड़ आपके प्लेटलेट्स को बहाल करता है. मॉसरेट, डेंगू का मुअस्सर इलाज. मॉसरेट अवेलेबल इन टैबलेट्स एंड सिरप बाय हाइमॉन्ड. राइट, सो इंग्लैंड जिनको 167 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए, उनके दोनों ओपनिंग बैट्समैन फिल सॉल्ट और उनके साथ साथ एलेक्स हेल्स मौजूद क्रीज पर, जबकि गेंद नवाज के हाथ में. मोहम्मद नवाज जो पहला ओवर करने के लिए तैयार है, और इंग्लैंड की जानिब से भी आज लेफ्ट आर्म लियाम डॉसन ने बॉलिंग की शुरुआत की थी, और पाकिस्तान के लिए भी आज बॉलिंग का आगाज कर रहे हैं मोहम्मद नवाज, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है. सामना करने के लिए तैयार बैट्समैन उनका, दैट इज फिल सॉल्ट. पहली गेंद, और इस पर दबा कट करके इस गेंद को निकाल दिया एक्स्ट्रा कवर की जानिब से 4 रन के लिए. It's a Visconi Crux boundary. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Visconi Crux. अनलाइक पाकिस्तान, इंग्लैंड को जो पहली गेंद मिलेगी जोन में उसको मारेंगे. वो सिंगल डबल के लिए नहीं खेलेंगे. सॉल्ट सामने कर रहे हैं एक बार फिर मोहम्मद नवाज का. इस मरतबा इस गेंद को वापस खेल दिया नवाज की जानिब. सॉल्ट ने कोई रन हासिल नहीं हुआ है, लेकिन इंटेंशन बिल्कुल वाज़ेह है इंग्लैंड की कि वो स्कोर को हर हाल में चेस करना चाहते हैं. और वैसे भी कोई पाकिस्तान बहुत बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हो सका. आज शुरू में
जब बात हो रही थी तो बाबर आजम की इंटेंशन 180-190 रन की थी, बट इवेंचुअली पाकिस्तान एंडेड अप विद 166 रन्स। अगली गेंद इस पर घुटने पे बैठे और उसको उठाकर खेला है उन्होंने स्क्वायर लेग की जानिब, एक टिपक आके गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। It's a Bisconi Crux boundary. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Bisconi Crux. A poor ball from Nawaz actually, because ये over the wicket कर रहे हैं to a right hander. He's a left arm spinner. और अगर ये एंगल करेंगे और गेंद पड़ेगी लेग स्टंप के बाहर, so it's only going to go where it went. अगली गेंद एक बार फिर वही स्टाइल का शॉट और इस पर डीप मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए जिन्होंने कोई गलती नहीं की है कैच करने में, और नवाज ने विकेट हासिल कर ली। फिल सॉल्ट की कैच किया इसको मोहम्मद वसीम ने। पाकिस्तान को पहले ही ओवर में कामयाबी। इंग्लैंड 8 for 1। क्योंकि हम चले तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टाइम पैंथर्स, चले नॉन स्टॉप। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल्फला की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। लाइफ हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं। जैसे लास्ट बॉल पे छक्का, हाशमी इस पर हो, फिट है तो हिट है। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल्फला की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। डेंगू का मूजी मर्ज फिर तेजी से फैल रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं, क्योंकि अब मॉस्ट्रेट दस्तयाब है। मॉस्ट्रेट पपाया के पत्तों का खालिस निचोड़ आपके प्लेटलेट्स को बहाल करता है। मॉस्ट्रेट डेंगू का मुअस्सर इलाज। मॉस्ट्रेट अवेलेबल इन टैबलेट्स एंड सिरप बाय हाइमॉन्ट। बैंक इस्लामी ऑटो फाइनेंस से हासिल करें सेम डे अप्रूवल, वो भी 340 से जायद ब्रांचेस पर। बैंक इस्लामी, सर्विंग यू द राइट वे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। Salt took on Nawaz once again. एक चौका ऑफ कवर्स के थ्रू मारा था, दूसरा बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे स्वीप किया था। इस दफा उठाने गए थे। He was aware of the fielder at deep mid wicket, but I think वो कॉन्फिडेंट थे कि उनके सर के ऊपर से निकाल देंगे, निकाल नहीं सके और आउट हो गया। हिल्स सामना कर अगली गेंद का, बैकफुट पर आकर इस गेंद को आहिस्ती के साथ खेला हिल्स ने मिड विकेट की जानिब और स्ट्राइक को रोटेट किया। नए आने वाले बैटर हैं विल जैक्स, जिन्होंने ज्वाइन किया हिल्स को, लेकिन पहले ही ओवर में ये विकेट हासिल की है नवाज ने, लेकिन इंटेंशंस बड़ी वाज़ेह थी फिल सॉल्ट की। और ये भी एक चीज है कि इनकी बैटिंग लाइनअप इतना स्ट्रांग है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि अगर उनका इस प्रोसेस में, यानी कि मार धाड़ के प्रोसेस में कोई विकेट भी गिर जाए, और क्योंकि जो आने वाले बैटर्स हैं वो जो एक टेम्पो बना हुआ होता है उसको टूटने नहीं देते हैं, और होना भी यही चाहिए। इट्स अ टीम गेम। नवाज आखिरी गेंद करने के लिए तैयार है। सामने कर रहे हैं उनका विल जैक्स, जो पहली गेंद का सामना करेंगे, और जैक्स ने इस गेंद को खेला स्ट्रेट बैट के साथ मिड ऑफ की जाने। फीडर मौजूद, कामयाब ओवर मुकम्मल, 9 1 आउट इंग्लैंड। लाइफ हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं। जैसे नो बॉल पे रन आउट, हाशमी इस पर हो, फिट है तो हिट है। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल्फला की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। पहले भी कहा था अपने साथ डॉक्टर कॉफ लोजेंजेस रखा करो, ये लो, ये हुई दवा। Doctor's #1 choice, Dr. Cough lozenges. राइट, 9 for 1, और अब मोहम्मद हसनैन को लेकर आए हैं गेंद करने के लिए। 25 मैचेस में 22 विकेट्स हासिल की हुई है मोहम्मद हसनैन ने। सामने करने के लिए तैयार उनका एलेक्स हेल्स। पहली गेंद इस ओवर की, इसको पटखा था और पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट की जानिब, और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। It's a Bisconi Crux boundary. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Bisconi Crux. A bit ambitious इस पिच के ऊपर पटखना गेंद को, ये कमर के ऊपर से नहीं उठी, जबकि हसनैन one of the fastest bowlers in Pakistan and in the world, जब वो पटक रहे हैं और गेंद नहीं उठ रही है तो खुद ही सोच लें पिच का क्या हाल है। एंड हेल्स हैड सो मच टाइम
पावर प्ले है, याद रहे एक ही फील्डर स्क्वायर लेग पे था ऑन द बाउंड्री एंड दिस रेस टू द मिड विकेट बाउंड्री। हसनैन की अगली गेंद के लिए आ रहे हैं, इस पर तो इस गेंद को उस एरिया में खेला रिकॉर्ड, विकेट पाकिस्तान को मिलता हुआ शॉर्ट मिड विकेट पर। जो फील्डर मौजूद थे आगे की तरफ डाइव करते हुए उन्होंने इस गेंद को कैच कर लिया और एलेक्स हेल्स की इनिंग्स का खात्मा। हसनैन गॉट हिज फर्स्ट विकेट, पाकिस्तान गॉट हिज सेकंड, इंग्लैंड 13 for the loss of 2 wickets. Angry young man, young heavy hitter, खाने का दुश्मन या lifeline cheater, जीने के लिए खाने वाला, खाने के लिए जीने वाला, हर कोई बोले बस give me crutch, 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 give me crutch. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Give me crutch. Bisconi Crux. क्योंकि हम चले तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टाइम पैंथर्स चले नॉन स्टॉप। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल्फला की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। लाइफ हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं। जैसे फर्स्ट बॉल पे आउट, हाशमी इस हो, फिट है तो हिट है। बैंक इस्लामी वन टच बैंकिंग से करें ट्रांजैक्शंस अपने थंब इम्प्रेशन से, वो भी बिना एटीएम कार्ड और चेकबुक के। बैंक इस्लामी, सर्विंग यू द राइट वे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। क्योंकि हम चले तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टाइम पैंथर्स चले नॉन स्टॉप। Wow, what a catch, what a catch. Pakistan have got their second wicket. Actually short ball थी और last minute के ऊपर Hales tried to sort of be double minded because पूरी तरीके से उन्होंने जान नहीं लगाई शॉट में। एक हाफ कॉक शॉट खेला, मिड विकेट शॉट, मिड विकेट पे बॉल उस्मान कादिर के काफी दूर जा रही थी। It was a great catch because he dived to his left and below और बिल्कुल इंचेस से गेंद उठाई from the ground. So it's a लाजवाब कैच, no doubt। 13 पे 2 इंग्लैंड, दूसरा ओवर। बेन डकेट ने आने वाले बैट्समैन जो सामना करेंगे अब इसने इस ओवर की अगली गेंद का विकेट में आती हुई गेंद थी, इसको दिफाई अंदाज में खेला। विल जैक्स काफी आगे निकल गए थे रन देने के लिए, लेकिन फिर वापस भेजा उनको। बेन डकेट ने तेजी से अपनी क्रीज में वापस आए, लेकिन जितनी तारीफ की जाए इस कैच की जो लिया उस्मान कादिर ने उतना कम, इसलिए कि एयरबॉर्न हुए थे इसको कैच करने के लिए। गेंद उनके बाएं जानिब से जा रहा था और उन्होंने आगे की तरफ डाइव किया, हवा में इस गेंद को उन्होंने कैच किया, बैलेंस को उन्होंने बरकरार रखा। यूजुअली ये होता है कि गेंद आपके हाथ में आ तो जाता है, लेकिन जब आप गिरते हैं जमीन पे तो जो बम्प आपको लगता है उसकी वजह से गेंद निकल जाता है हाथ से, लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया कि गेंद उनके हाथ से ना निकले और मजबूती से उन्होंने गेंद को थामे रखा। डाउन द लेग साइड ये गेंद, इसको पुल किया है फाइन लेग की जानिब। यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं, जब तक वो इसको फील्ड करेंगे वसीम, एक रन आसानी के साथ मिल जाएगा बेन डकेट को। सो डकेट इज ऑन 1 and England now 14 for the loss of 2 wickets and we are in the second over. Pakistan must build on this 2 quick breakthroughs that they've got. 2 over 1.4 overs हो चुके हैं, 14 for 2। इस वक्त है कि आप प्रेशर डालें इनकमिंग बल्लेबाज के ऊपर, लूज बॉल्स ना दें। कहना आसान है, आफ्टर ऑल पावर प्ले का दौर चल रहा है इस वक्त और दोनों बल्लेबाज जैक्स और डकेट आर इन सुप्रीम फॉर्म इन दिस सीरीज, बट स्टिल पाकिस्तान हैव टू फाइंड अ वे कि जरा से इनको बांध के रखें ताकि इनको कोई रिस्क लेना पड़े शॉट खेलने के लिए। दोनों के स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर है, जो करियर स्ट्राइक रेट है, और इस गेंद को जो कि ऑफ स्टंप लाइन पे था तिरछे बैट के साथ खेले पॉइंट की जानिब विल जैक्स और यहाँ मौजूद शान मसूद जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका नहीं था, तो स्कोर इंग्लैंड का 14, 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। This is what quick wickets does to you. Jacks normally might have just lifted that over cover क्योंकि एक शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर बाउंड्री पे एक फील्डर खड़ा हुआ है, एक लेग साइड पे खड़ा हुआ है, बट नॉर्मली जब 2 विकेट्स गिरी हुई हैं तो वो जरा सा सेफ शॉट ही खेलेंगे। आखिरी गेंद के लिए आ रहे हैं हसनैन और बॉल कर दिया हसनैन ने विल जैक्स को। दिस इज द 3rd विकेट फॉर पाकिस्तान एंड हसनैन गॉट हिज सेकंड। Will Jacks departs, England in trouble after 2 overs, 14 for 3. डेंगू का मूजी मर्ज फिर तेजी से फैल रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं क्योंकि अब मॉस्फेट दस्तयाब है।
मॉसरेट पपाया के पत्तों का खालिस निचोड़ आपके प्लेटलेट्स को बहाल करता है। मॉसरेट, डेंगू का मुअस्सर इलाज। मॉसरेट अवेलेबल इन टैबलेट्स एंड सिरप बाय हाइमॉन्ड। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। लाइफ हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं। जैसे फर्स्ट बॉल पे आउट, हाशमी इसबगो फिट है तो हिट है, क्योंकि हम चले तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। पहले भी कहा था अपने साथ डॉक्टर कॉफ लोजेंजेस रखा करो, ये लो। ये हुई दवा। Doctor's #1 choice, Dr. Cough Lozenges. पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। और again, what a lovely ball by Hasnan that got the wicket. Now it's 14 for 3, third over beginning. वसीम आए गेंद करने के लिए, पहली गेंद इसको निकाल दिया, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की जाने बेन डकेट ने फॉर अ बाउंड्री। It's a Bisconi Crux boundary. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Bisconi Crux. I have a feeling England are going to keep going the way they have been going for the power play at least. उसके बाद शायद वो सिंगल डबल की गेम पे आए, वो पावर प्ले को मिस नहीं करना चाहेंगे, उसकी अपॉर्चुनिटीज। गेंद जो थी, जैसे इस पिच की खासियत रही है, उठी नहीं ज्यादा और जैक समझ रहे थे कि जरा सी उठेगी, पुल करने गए थे, बॉल नीचे रही, बोल्ड हो गया। अगली गेंद बड़ी शानदार गेंद वसीम की, गेंद पड़ने के बाद हल्का सा बाहर की तरफ मूव हुआ, लेंथ डिलीवरी थी, कट करने के लिए गए थे बेन डकेट, लेकिन गेंद गया उनके बैट के नजदीक से होता हुआ मोहम्मद रिजवान के ग्लव्स में। टोटली डिफरेंट सिचुएशन जो डकेट और ब्रुक्स इस वक्त फेस कर रहे हैं, जो इससे पिछला मैच था जहां उन्होंने भरमार लगा दी थी चौके छक्कों की, उस पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, उनको प्लेटफॉर्म मिला था, लेकिन इस वक्त इंग्लैंड 18 for 3। इस वक्त इन्हें प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। अगली गेंद, इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग की जानिब खेला है, फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा होगा यहाँ पर। सो डकेट का स्कोर हुआ 6, ब्रुक जिन्होंने भी किसी गेंद का सामना नहीं किया है। इन दोनों के दरमियान पिछले मैच में 139 रन की अनब्रोकन पार्टनरशिप हुई थी और आई थिंक 61 गेंदों में शायद उन्होंने ये 139 रन ऐड किए थे, लेकिन और दोनों ही नॉट आउट रहे थे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है इन दोनों के लिए कि अपनी उस पार्टनरशिप को यहाँ कंटिन्यू करें, क्योंकि इंग्लैंड को इसकी जरूरत है। एब्सोल्युटली। और आई थिंक मोइन अली के बाद जरा सी लोअर मिडिल ऑर्डर शुरू हो जाता है। इंग्लैंड डू नॉट बैट वेरी डीप, ये अपने पहले 6 बल्लेबाजों के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं। वसीम आ रहे हैं, एक बार फिर सामना कर रहे हैं उनका, ब्रुक आए गेंद करने के लिए, ब्रुक ने इसको आस्तिकी के साथ खेला और गेंद आएगा आहिस्ता आहिस्ता रोल होता हुआ स्क्वायर अंपायर की जाने, मिड विकेट से गए फील्डर दौड़ते हुए, जिन्होंने इसको फील्ड किया तो पहला रन हासिल किया अपना ब्रुक ने। ही इज ऑन 1, इंग्लैंड 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इंग्लैंड विल मेक श्योर कि अगर चौके छक्के नहीं मिले, दे रोटेट द स्ट्राइक, बिकॉज एक तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन खेल रहा है, ऊपर से दे हैव टू कीप पुट द प्रेशर बैक ऑन द बॉलर्स, और वो उसका यही तरीका है कि रन्स ऑन द बोर्ड। वसीम एक बार फिर अपना पहला ओवर कर रहे हैं, वसीम सामना कर रहे हैं इस पर उनका बेन डकेट। डकेट ने इस गेंद को आहिस्ती के साथ खेला पॉइंट की जाने, फील्डर मौजूद और रन बनाने का मौका नहीं था। नवाज थे फील्डर जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया और कोई रन हासिल नहीं हो सका। तो ब्रुक 1, डकेट 6, इंग्लैंड 20, 3 खिलाड़ी आउट, फिल सॉल्ट, एलेक्स हेल्स एंड विल जैक्स। राइट, वसीम स्टिल बॉलिंग विद इन हिमसेल्फ। आई थिंक ये एशिया कप में इंजर्ड रहे, उसके बाद ये पहला मैच खेल रहे हैं अपना, and although bowlers don't take as much time as batsmen do to come back into form, आईसी के साथ खेला इस गेंद को और बड़ी तेजी के साथ रन मुकम्मल किया। हालांकि फील्डर बड़ी तेजी के साथ गेंद पे लपके और उन्होंने इसको थ्रो भी किया विकेटों पर, लेकिन अपनी अपनी क्रीज में आने में कामयाब रहे दोनों बैटर्स। तो ओवर मुकम्मल, 3 ओवर्स के बाद 21-3 आउट इंग्लैंड। Now shop, dine and travel with the convenience and luxury of Bank Islami Debit Mastercards.
Bank Islami, serving you the right way. क्योंकि हम चले तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टाइम पैंथर्स चले नॉन स्टॉप। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाही 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। क्योंकि हम चले तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टाइम पैंथर्स चले नॉन स्टॉप। आज इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए 167 रन बनाने हैं। असलैन आ रहा है अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद के साथ और सामने उनके डकेट जिन्होंने इस गेंद को खेला मिड विकेट की जानिब। फील्डर मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 21, 3 विकेट्स के आउट होने पर इंग्लैंड विल हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि 2 लूज शॉट्स के ऊपर उनकी विकेटें गिरी हैं, एक मिस जजमेंट ऑफ द पिच के ऊपर गिरी है। सो आई थिंक व्हाट दे नीड टू रियलाइज नाउ इज कि पिच में इतना टेरर नहीं है जितना वो अपनी अनसर्टेनिटी से पैदा कर रहे हैं और दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू बैट अ बिट लो। असलैन एक बार फिर सामने उनके बेन डकेट और इसको थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं खेल रहा है। शॉट स्क्वायर लेग की जानिब खुशकिस्मती थी उनकी कि फील्डर नहीं था वहां पे, अदरवाइज गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में मौजूद थी और बहरहाल सिंगल उन्होंने हासिल कर दिया। सो इंग्लैंड का स्कोर बढ़ता हुआ 22, 3 विकेट के आउट होने पर। और आज पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, हालांकि ख्याल ये था कि शायद आज पाकिस्तान 180, 190 बनाने में कामयाब होगा, लेकिन अच्छी बॉलिंग इंग्लैंड की जानिब से जिन्होंने पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट किया। 166 के स्कोर पर 4 विकेट्स आउट हुए और बैट्समैन ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके मां सिवाय रिजवान के, जो पाकिस्तान की जानिब से टॉप स्कोरर रहे 88 रन बनाकर। वसीम की अगली गेंद और इस गेंद को बैकफुट पर आकर थर्ड मैन की जानिब खेल दिया, गाइड करते हुए बड़ी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ हसनैन की जानिब से, राधा वसीम की जानिब से, जिन्होंने इसको डाइव करते हुए रोका और एक सर्टन बाउंड्री रोकने में कामयाब हुए। सिर्फ एक ही रन हासिल हो सका इंग्लैंड को, जिनका स्कोर हुआ 23। ग्रेट फील्डिंग बाय वसीम, रियली डाइव्ड हिज वे और बहुत तेजी से जा रही थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप था, डिलिबरेट इसको बैट टैप डाउन किया था टुवर्ड द फाइन थर्ड मैन पोजीशन, कोई स्लिप नहीं है याद रहे। एंड वसीम डाइव टू हिज लेफ्ट एंड स्टॉप द बॉल, बड़ी दाद हासिल की। हारिस रऊफ भागते हुए आए उनके पास। इट्स वेरी गुड दैट गुड फील्डिंग इज एनकरेज्ड बाय टीममेट्स। हसनैन एक बार फिर सामने कर रहे उनका बेन डकेट, गेंद करने के लिए इस पर तो रैम शॉट के लिए गए और कामयाब नहीं हुए। गेंद गया विकेट कीपर रिजवान के ग्लव्स में, लेकिन अपनी इंटेंशन उन्होंने दिखा दी है कि वो अपने जो अनकन्वेंशनल शॉट्स हैं उनको वो अब ट्राई आउट करेंगे। बेसिकली पावर प्ले वो छोड़ेंगे नहीं, ये इंग्लैंड की खासियत है कि जैसी भी सिचुएशन हो पावर प्ले को उन्होंने मैक्सिमाइज यूज करना है, फिर देखा जाएगा। 14 ओवर पड़े हुए सिंगल डबल के लिए और अनलाइक द पाकिस्तानी ओपनर्स जो डरते हैं कि कहीं विकेट ना गिर जाए, दे आर एडवेंचरस, देर से कि देखा जाएगा ज्यादा मैच हार जाएंगे, बट जो पावर प्ले है उसको हमने यूज करने का पूरा इंटेंट दिखाना है। हसनैन की अगली गेंद, इस पर यॉर्कर लेंथ पे गेंद की फॉलो किया उन्होंने, बड़ी शानदार इंटेलिजेंट बॉलिंग बाय मोहम्मद हसनैन। बेन डकेट जो अपने लिए जगह बना रहे थे और मूव हुए थे लेग स्टंप लाइन के बाहर, फॉलो किया उनको और यॉर्कर लेंथ पर इस गेंद को रखा और मजबूर किया कि कोई रन हासिल ना कर सके। दैट वाज अ डॉट डिलीवरी, वंडरफुल डिलीवरी एट ऑल, बिकॉज़ डकेट जो के अग्रेसिव इंटेंट्स के साथ आगे बढ़ रहे थे और बिल्कुल टखनों में गेंद की और बिल्कुल यॉक कर दिया उनको। एंड देयर वाज हार्डली एनीथिंग, डकेट ऑलमोस्ट फेल ओवर, इतनी जबरदस्त गेंद की थी, लाइन भी अच्छी, लेंथ भी अच्छी, पेस भी अच्छी। बड़ी अच्छी गेंद कर रहे हैं अब तक हसनैन, दूसरा ओवर कर रहे हैं, 7 रन देकर 2 विकेट्स अब तक इन्होंने हासिल किए, जबकि नवाज ने 1 ओवर किया जिसमें 9 रन देकर उन्होंने विकेट हासिल की थी सॉल्ट की, और हसनैन ने विकेट हासिल की हैं एलेक्स हेल्स और विल जैक्स की। सामना कर रहे हैं उनका डकेट, आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा इस गेंद को जगह बनाते हुए निकाल दिया बड़े शानदार अंदाज में बैकवर्ड पॉइंट की जानिब फॉर अ बाउंड्री। 4 ओवर्स मुकम्मल, इंग्लैंड 27, 3 आउट। It's a Bisconi Crux boundary. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Bisconi Crux. डेंगू का मूजी मर्ज फिर तेजी से फैल रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं, क्योंकि अब मॉसरेट दस्तयाब है। मॉसरेट पपाया के पत्तों का खालिस निचोड़ आपके प्लेटलेट्स को बहाल करता है। मॉसरेट, डेंगू का मुअस्सर इलाज। मॉसरेट अवेलेबल इन टैबलेट्स एंड सिरप बाय हाइमॉन्ट।
पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। क्योंकि हम चले तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टाइम पैंथर्स चले नॉन स्टॉप। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान वसीम ओवर में दूसरे ओवर के आगाज के लिए मिडल स्टंप पे गेंद इसको खेल दिया मिड विकेट की जानिब। इफ्तिखार पहुंचे हैं गेंद को हासिल करने, एक रन बनाने का मौका। बेन डकेट ने स्वीपर के नाम से शोहरत हासिल कर ली है पिछले 2 मैचेस में, लेकिन जो शॉट उन्होंने पिछली गेंद पर निकाला चौके के लिए, क्या प्लेसमेंट वाकई। अब ये देखें कि शॉट आउटसाइड द लेग स्टंप, वो 5वें स्टंप पे थी, लेग स्टंप पे पीछे हटे हैं एंगुलर बैट के साथ, और किसको बीट किया? एक शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट। मतलब कितना गैप होगा दोनों में? 5 गज का होगा, 10 गज का होगा, और वहां से गोली की तरह निकली है। दिस इज व्हाट T20 क्रिकेट is also about. It's not just about power, it's about finding the gaps, it's about placing the ball in those gaps and playing off the pace of the bowler. क्या लाजवाब शॉट खेला। बेन डकेट ने हलचल मचा दी है अपने शॉट के बाद। एक फील्डर ले लिया गया है फाइन लेग पर, जबकि दूसरे मौजूद हैं स्वीपर कवर के तौर पर। भागना शुरू किया यूनिवर्सिटी रोड एंड से गेंद करने के लिए वसीम ने मिडल स्टंप पर एक और अच्छी गेंद स्टंप्स को कवर करने के बाद ड्राइव कर दिया मिड ऑन की जानिब। वहां पर मौजूद थे आसिफ अली, दाएं जाने पहुंचे हासिल करने के लिए 29 for 3। यस, बिलीव इट और नॉट, पाकिस्तान ने इवेंटफुल स्टार्ट हासिल किया है। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स में आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे फिल सॉल्ट, जिनको खेला था नवाज की पहले ओवर की गेंद पर मिड विकेट की जानिब अपने बाएं जाने भागते हुए एक मुश्किल कैच को आसान बनाया वहां पर वसीम ने। एंड फिर एलेक्स हिल्स का शानदार कैच लिया दायरे के अंदर जब खेलने के लिए गए थे मिड विकेट की जानिब, हवा में मोहल्लक हुए और फुल लेंथ डाइव लगाकर उस्मान कादर ने कैच किया। विल जैक्स को बॉल कर दिया था हसनैन ने। वसीम की अगली गेंद पैड पर लगी, लेग स्टंप को मिस करती और गेंद पहुंची है स्क्वायर लेग पर, जहां पर लेग बाय का एक रन हासिल करने का चांस अवेल किया। 30 for 3। मोहम्मद वसीम के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि इज कमिंग बैक आफ्टर अबाउट 2 to 3 week ले ऑफ एंड इज कमिंग बैक विद एन इंजरी। ये भी नहीं कि उनको खाली रेस्ट दिया था, बट ही अपीयर्स वेरी फिट। वो जो उनका साइड स्ट्रेन था जिसकी वजह से वो पूरे एशिया कप से बाहर हो गए थे, बल्कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए थे। ही डजंट सीम टू बी शोइंग एनी साइंस ऑफ दैट इंजरी। ओवर द विकेट एक मरतबा फिर यंग वसीम भागना शुरू किया है, पुल किया इस गेंद को जल्द पिक करके मिड विकेट की जानिब, और 2 टप्पे खाने के बाद रोल करती हुए जमीन के साथ खतरनाक बेन डकेट के बैट से निकली चौके के लिए। It's a Bisconi Crux boundary. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Bisconi Crux. शॉट ऑन दी ऑफ स्टंप गेंद थी और डकेट ने देखते हुए पावर प्ले है, कोई फील्डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, और लाजवाब शॉट मारा। ओवर द विकेट वंस अगेन स्ट्रेट खेले हैं और गेंद नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्टंप्स को बीट कर गई। बाबर आजम गेंद के पीछे लेकिन नहीं रोक पाएंगे। बैक टू बैक बाउंड्रीज फॉर बेन डकेट इन इंग्लैंड। It's a Bisconi Crux boundary. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Bisconi Crux. नॉर्मली जब किसी भी फास्ट बॉलर को शॉर्ट बॉल के ऊपर चौका मारता है बल्लेबाज, तो ही इज प्रिपेयर्ड कि अगली गेंद ओवर पिच्ड होगी, और ये थी भी स्लोअर ओवर पिच बॉल, इनफ टाइम फॉर डकेट टू हिट इट स्ट्रेट बैक फॉर 4। दूसरे ओवर की अपनी आखिरी गेंद करने के लिए आ रहे हैं और एक मरतबा फिर वसीम के सर के ऊपर से खेल दिया है। फिर बाबर आजम गेंद के पीछे भागे, डाइव लगानी थी लेकिन रह गई है डाइव, और गेंद रवाना हुई चौकों की हैट्रिक के साथ बाउंड्री के पार। गेम चेंजिंग ओवर बन सकता है। 5 gone, 42 for 3। 3 बाउंड्रीज एक रो में। It's a Bisconi Crux boundary. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Bisconi Crux. चलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पैंथर के टायर्स आपकी सवारी और जज्बे को रुकने ना दें, क्योंकि हम चलें तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टाइम पैंथर्स चले नॉन स्टॉप। लाइव हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं, जैसे नो बॉल पे रन आउट। हाशमी इस बबू फिट है तो हिट है। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड।
Now shop, dine and travel with the convenience and luxury of Bank Islami Debit Mastercards. Bank Islami, serving you the right way. हैरी ब्रुक्स सामना करेंगे जो कि सब तमाशे को देख रहे हैं दूसरे एंड से 4 पे 4 बनाए हारिस रऊफ गेंद करने के लिए आगे हैं गुडनेस ग्रेशियस माइट बी द डेट्रीमेंटल इफेक्ट जो कि पाकिस्तान अवॉइड करना चाहेगा ऑन द अपर शॉट को हवा में खेले थे नवाज मौजूद थे एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन दायरे के अंदर गेंद हाथों में आई फिर निकली फिर आई फिर निकली और अल्टीमेटली जमीन बॉस दैट्स गोइंग टू बी अ कॉस्टली मिस आई होप नॉट बिल्कुल शोल्डर राइट पे आई थी अपर कप करके हाथ को पकड़ने की कोशिश की और मेरे ख्याल में वो या तो कुछ स्लिपरी हैंड्स हैं स्वेटी हैंड्स हैं लेकिन वो बाउंस बैक हो गई फिर क्लच करने की जरूरत की और सिर्फ जो हाथ में आ सके वो हारिस रऊफ के बाल थे अपने हाथों में मिडल स्टंप पे गेंद जिसको टर्न कर दिया स्क्वायर की जानिब हैरी ब्रुक ने और एक रन भागकर बनाकर दूसरे एंड पे जाने का मौका हासिल किया हारिस रऊफ जिस पेस के साथ उतरे हैं ये बड़ा जरूरी होगा कि ये अपने पहले स्पेल में विकेट लें क्योंकि वो जो 19वें 20वें ओवर तक पाकिस्तान रोक के रखता है वो तो शायद वक्त आएगा ही नहीं या तो इंग्लैंड ऑल आउट हो जाएगा या फिर पाकिस्तान उससे पहले जिस तरह अंदाज का टोटल और इंग्लैंड की अप्रोच है उस गेम में शिकस्त खा चुका होगा तो ये जरूरी है इनके लिए इब्तिदाई स्पेल में विकेट हासिल करें ऑलमोस्ट ड्रीम स्टार्ट था जो कि अपॉर्चुनिटी निकल गई हाँ बिल्कुल आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू हिट ओवर द हेड ऑफ कवर वो शोल्डर लेंथ तक पहुंचे नवाज के ब्रुक और ब्रुक्स का आपने देखा था कि पिछली दफा क्या इनिंग्स खेली थी पिछले मैच में लेट्स होप ही डजंट रिपीट दैट ओवर द विकेट बैंड विकेट मैन इन एक्शन को ये गेंद डाउन द लेग साइड जिसको टर्न कर दिया स्क्वायर की जानिब वहां पर मौजूद हैं आसिफ अली एक रन भागकर बनाने का मौका हासिल किया और जो पिछले ओवर का इख्तिताम किया है बेन डकेट ने उन्होंने बाल्टी भर के चौके दिए ये 26 रन बना चुके हैं 5 चौके कुल लगाए और वसीम को उन्होंने आड़े हाथों लिया पहले शॉर्ट डिलीवरी जिसको खेले मिड विकेट की जानिब और उसके बाद 2 स्ट्रेट चौके लॉन्च किए हैं और दोनों मरतबा गेंद जो कि हालांकि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी उसको अपने क्विक फीट और निम्बल फुटेड होते होते उन्होंने कामयाबी के साथ बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया स्ट्रेट बाउंड्री का उन्होंने इंतखाब किया दोनों मरतबा वहां भी चौके निकाल लिए तो एक मरतबा फिर ये पार्टनरशिप खतरनाक बनती हुई हैरी ब्रुक सामना कर रहे हैं लाहौर कलंदर के हारिस रऊफ का डाउन द लेग साइड ये गेंद जा रही थी स्क्वायर की जानिब गेंद को टर्न किया या वहां पर इफ्तिखार फंबल करके पहली मरतबा गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए एक और रन बनाने का मौका हासिल किया इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ ये लाहौर कलंदर के लिए साथ खेले बल्कि यॉर्कशायर में भी इस सीजन में साथ खेल चुके हैं हाँ यस इंपॉर्टेंट पॉइंट आई डिडंट नो दैट आई थिंक दैट वे जरा सा आइडिया है एक दूसरे की गेंदबाजी बल्लेबाजी का बट आपने बिल्कुल सही कहा हारिस रऊफ हैज टू गो फॉर द विकेट्स वेरी अर्ली ऑन ही हैज टू ब्रिंग आउट हिज बेस्ट गेम एज अर्ली एज पॉसिबल स्पेशली क्योंकि हम देख चुके हैं एशिया कप में भी जब श्रीलंका को 5 पे आउट कर दिया था 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे स्लो वन ड्राइव कर दिया इसको मिड ऑफ की जानिब यहाँ पूरी रिस्पेक्ट देते हुए गेंद पहुंची वहां पर मौजूद एक मरतबा फिर इफ्तिखार तक 1 रन का इजाफा तो 5 विकेट जब गिरा दी थी एशिया कप के फाइनल में एंड सडनली वी टुक द फुट ऑफ द नेक और उसके बाद हमने देखा कि अगले 3 बल्लेबाजों ने श्रीलंका ने क्या किया तो इस वक्त बहुत जरूरी है 46 पे 3 इंग्लैंड है उससे पहले वो आई थिंक कोई 20 रन पहले वो 3 विकेट खो चुके थे 21 for 3 हो चुके थे तो बहुत जरूरी है कि वी कीप टेकिंग विकेट्स एंड हारिस रऊफ इज द मैन टू डू सो पिछले ओवर में पहले 3 गेंदों पे 1 रन बना था फिर आखिरी 3 गेंदों पे 3 चौके और अब हैरी ब्रुक ने अपनी खिफत को मिटाया खूबसूरत शॉट मिडल स्टंप पे गेंद रूम बनाया और शायद शॉट ऑफ द इवनिंग खेल डाली कवर ड्राइव करके चौके के साथ पावर प्ले मुकम्मल एग्जैक्टली इंग्लैंड 50 for 3 It's a Bisconi Crux boundary. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Bisconi Crux. पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल्फला की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। डेंगू का मूजी मर्ज फिर तेजी से फैल रहा है लेकिन आपने घबराना नहीं क्योंकि अब मॉसरेट दस्तयाब है। मॉसरेट पपाया के पत्तों का खालिस निचोड़ आपके प्लेटलेट्स को बहाल करता है। मॉसरेट डेंगू का मुअस्सर इलाज। मॉसरेट अवेलेबल इन टैबलेट्स एंड सिरप बाय हाइमॉन्ट। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल्फला की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड।
अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि आपकी समातों में ये खबर पहुंचने वाली है कि पावर प्ले के फौरन बाद ना आए उस्मान कादिर, ना अपना दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए हैं नवाज, बल्कि आ गए हैं इफ्तिखार। ऑफ स्पिनर इफ्तिखार के सामने मौजूद होंगे बेन डेकेट। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। या मास्टर स्ट्रोक बनता है पाकिस्तान का, या फिर अपने लिए खुद गड़ा खोदते हैं। अगले चंद गेंदें बता दें। ये ला इसलिए है कि बेन डेकेट बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, दे गोइंग फॉर द ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर टू लेफ्ट हैंडर रोल। बैकफुट पे गए, ड्राइव किया इसको एक रन बनाने के लिए। वहां पर बाएं जाने पहुंचे वसीम, लेकिन दूसरा रन भी चुरा लिया। वसीम के होने से ये फायदा होता है कि हलचल सी मच जाती है। पूरे लाइव वायर है ये फील्ड में। एक यकीनी चौका भी रोक चुके हैं, एक बड़ा अच्छा कैच भी इन्होंने लिया और गो किया। इनके पिछले ओवर का अख्तिताम बड़ा अंधोनाक था, लेकिन ओवरऑल बहुत बड़े एक्टिव और आपको देख के मजा आता है इनको। एंड कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी एंड बीइंग सो एनर्जेटिक, आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम। क्योंकि नॉर्मली जब आप साइड स्ट्रेन से आते हैं तो आप बहुत केयरफुल होते हैं कि वही कहीं इंजरी ना हो जाए। द लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज स्ट्रेस योरसेल्फ ऑन द फील्ड। इस वक्त अगली गेंद फेंकने से पहले कोई तातुल है, गेंद को पीछे की जाने फेंक कर अंपायर के फैसल अफरीदी से कोई बात की है इफ्तिखार ने, और अब गेंद को करने से कबल उन्होंने हाथ को जमीन पर, बल्कि जो पिच का बाकी मांदा हिस्सा होता है बैटिंग क्रीज के पीछे, उससे मिलने के बाद वो आए हैं। Possibly there could be some disruption. No, they are checking for a short run. हैरी ब्रोक ये रन मुकम्मल करने के लिए गए थे रिजवान की जानिब और कर लिया था उन्होंने, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। बड़ी तेजी के साथ उन्होंने बैट को ग्राउंड किया और क्या पलटे थे। फैसल अफरीदी ने सबको कहा है कि आप अपनी जगह पे जाएं, सब कुछ ठीक है। बेन डेकेट भी क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं, लेकिन काफी देर कर दी इस रिव्यू ने आते आते। हालांकि आई एम नॉट श्योर कि क्वेश्चन किसने किया था। फैसल अफरीदी भी किसी बात पे खुश नजर नहीं आते, किसी हेड मास्टर की तरह बार बार गुस्से से जैसे स्टूडेंट्स को देखते हैं, ये डिसिप्लिन की कमी पे वैसे लगे हुए हैं। असल में शर्मिंदा कुछ ये हो रहे हैं कि उन्होंने जो रिप्ले कॉल किया, अच्छा वो दूसरे अंपायर थे जिन्होंने इशारा किया था, बिकॉज उन्होंने अपना गलती मानी और हाथ सीने पे क्रॉस किया। बड़ी तेजी के साथ रन चुराया है ये, इसको हवाले से बताते हैं नवाज के, बल्कि इफ्तिखार गेंद करने के लिए रिवर्स स्वीप करते हुए आए हैं। गेंद जाके ऑलमोस्ट कंधे पे लगी है, झुकी है, ये स्वीप कर रहे थे अकेले तने तनहा। इफ्तिखार ने अपील की, उनका रिजवान तक ने साथ नहीं दिया। इफ्तिखार ने मुड़ के देखा तो कहा कि अपने ऐसे तो नहीं गिराते नशे में। I think Babar wasn't sure because I think the ball was bouncing over the stumps. तो ये इफ्तिखार को लाए हैं बेन डेकेट से छुटकारे के लिए, क्योंकि अगर ये मिल जाते हैं तो उसके बाद मोइन अली, देन डेविड विली, लाइम डॉसन। बैटिंग में डीप जरूर जाते हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी। बैकफुट पे गए, गेंद को टर्न कर दिया इसको लेके जाने। बड़ा एहतराम कर रहे हैं इफ्तिखार का, आई एम नॉट श्योर व्हाई, लेकिन वैसे इट्स अ एक गुड रन मूव। बनाया। आई थिंक बाबर को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने एक रिस्क ली है, और वही जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान शुड गो एंड ट्राई एंड गेट अनदर विकेट। बाबर इज रेडी टू बाय अ विकेट बाय बॉलिंग इफ्तिखार टू द लेफ्ट हैंडर, लेकिन अब मसला ये है कि ये ख्याल तो होना चाहिए कि वो सिंगल भी ले सकता है और सामने आ जाएगा राइट हैंडर, और राइट हैंडर टू इफ्तिखार हु डजंट टर्न द बॉल मच इज वेरी डेंजरस। बड़ी पुरस्कार खामोशी है नेशनल स्टेडियम। विकेट का मुंतज़िर 2 कदम आ गया है, स्ट्रेट बैट के साथ गेंद को मोड़ दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब। वहां पर मौजूद हैं आसिफ, एक और रन बनाने का मौका मिला। इन टॉकिंग अबाउट द ड्रॉप कैच बाय नवाज, गेंद बड़ी तेजी के साथ ट्रैवल करते हुए जो हारिस रऊफ की पहली गेंद थी पहुंची थी, दायरे के अंदर एक्स्ट्रा कवर पे मौजूद थे, उन्होंने फिंगर्स अप रख के उसको कैच करने की कोशिश की। पहली मरतबा गेंद निकली, फिर ऑलमोस्ट घुटने पे आके टकराई, वहां से पकड़ना चाहा लेकिन फिर निकल गई और ये अपॉर्चुनिटी रहा कहां गई। बैकफुट पे गए, अगली गेंद खेलने के लिए टर्न कर दिया, फिर मिड विकेट की जाने, फिर पहला रन तेजी के साथ, और ऐसे लपके थे कि जैसे दूसरा निकाल लेंगे, लेकिन अब मौका नहीं दिया हारिस रऊफ ने। 55 for 3 विद द सिंगल। और इस वक्त आई थिंक ब्रुक्स एंड डकेट आर अ बिट अनसर्टेन वेदर टू गो फॉर इफ्तिखार और नॉट, क्योंकि एक जब नॉन रेगुलर बॉलर आ जाता है तो बल्लेबाज जरा से तो सोच में पड़ जाते हैं कि इसके खिलाफ इतना उन्होंने होमवर्क नहीं किया होता है। इस ओवर के बाद आ रहे हैं दानिश, इसको रैम शॉट की सूरत में रिजवान के सर के ऊपर से निकालने की कोशिश की, ऑफ स्टंप के पास से होती हुई गेंद पहुंची रिजवान तक, पहली एफर्ट में वो कलेक्ट ना कर पाए। पूछ रहे हैं उनसे इफ्तिखार के क्या जुआ था, उन्होंने जहरी बातें कहना था, नहीं 7 gone, 55 for 3। Give me crutch, 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 give me crutch. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Give me crutch. Visconi Crux.
बैंक इस्लामी वन टच बैंकिंग से करें ट्रांजैक्शंस अपने थंब इंप्रेशन से, वो भी बिना एटीएम कार्ड और चेकबुक के। बैंक इस्लामी, सर्विंग यू द राइट वे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। चलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पैंथर के टायर्स आपकी सवारी और जज्बे को रुकने ना दें, क्योंकि हम चलें तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। 8वें ओवर का आगाज होगा। यहाँ पे नवाज गेंद करवाने के लिए तैयार हैं और इससे पहले बाल बचे थे। इफ्तिखार की गेंद फिर ब्रुक इनफैक्ट गए थे कीपर के ऊपर से इम्प्रोवाइज करने के लिए और बीच हो गए थे और लकी रहे कि कॉट बिहाइंड नहीं हो पाए थे। बहरहाल नवाज आ रहे हैं, ये पहले ही गेंद करने के लिए ओवर की इसको लगा पुश किया है मिडविकेट की जानिब, जहां पर एक रन ले लिया, दूसरा भी लेना चाहते हैं काफी तेजी के साथ। ये दूसरा भी मुकम्मल किया, ये देखते हुए फील्डर पीछे मौजूद हैं और जितनी देर में वो थ्रो करते 2 यहाँ पर मुकम्मल कर लिए। बड़ा क्रेडिट जाएगा बेन डेकेट और इनके साथी हैरी ब्रुक को। इन्होंने मैच विनिंग अनबीटन पार्टनरशिप बनाई थी जुमे की शाम, और आज एक मरतबा फिर जब इनको नजर आ रहा है कि पावर प्ले के फौरन बाद वैसे बाउंड्रीज नहीं मिल रही, तो सॉफ्ट हैंड की मदद से खेलकर पहले से इनके जहन में ये मौजूद था कि दूसरे रन को टारगेट करना है, और इस कॉल पे यस कहा हैरी ब्रुक ने। वापस पहुंचे बेन डेकेट और इस तरह के कई रन उन्होंने चुराएंगे कि चौकों की भी कमी नहीं है, लेकिन पावर प्ले के बाद वो स्ट्राइक रोटेशन पे रिलाई करते हुए नवाज एक बार फिर गेंद करवाने के लिए तैयार है। इस बार गए थे स्वीप करने के लिए, मिडल की अपील कर रहे हैं, अब तक कर रहे हैं या संपारने का, ये आउट है, अपनी उंगली फिजा में बुलंद कर दी है। नवाज को यहाँ पर एक और विकेट मिल गई है। जब डेकेट गए थे स्वीप करने के लिए, एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए। डेकेट को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो रिव्यू ले या नहीं ले। ब्रुक के पास आए, बात कर रहे हैं कि रिव्यू लिया जाए या ना लिया जाए। यस, अब रिव्यू लेने का फैसला कर लिया और अब ये केस पहुंचा है टेलीविजन अंपायर हसन रजा की आवाज आप सुनेंगे। ऑन फील्ड डिसीजन है आउट, over the wicket गेंद फेंकने के लिए। Let's listen. We have a review for LBW. On-field decision is out. Front foot is a fair delivery. Front on spin vision, please. Over the wicket ये गेंद फेंकने के लिए आए और अब पहला रिप्ले हमारी आंखों के सामने। Keep rolling, nice and slow. Appears to be no bat involved. To confirm, Ultra-Edge, please. Point of impact could be वन मैटर, जो कि शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कोई एज मौजूद नहीं है, शायद इसको दोबारा कंफर्म करेंगे अल्ट्राइट से। Keep rolling, flat line, roll through to the pads, please. Yes, satisfied, no bat involved. Go for ball tracking, please. अल्ट्राइट के इम्कानात वैसे भी कम थे अकील, और अब बॉल ट्रैकिंग से देखते हैं क्या फैसला होगा। Original decision out. Pitching outside of, impact in line. Wicket sitting. Can you go back on field, please? Asif, I recommend you to stay with your original decision. Let you know you are on screen. Just wait the signal. डबल ट्रबल फॉर इंग्लैंड। ना सिर्फ बेन डेकेट गए बल्कि एक रिव्यू भी साथ लेकर चलते बने। बड़ी कामयाबी, इन फॉर्म बेन डेकेट इज बैक इन द हट। कराची ऑन इट्स फीट, 57 for 4 इंग्लैंड। लाइफ हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं। जैसे फर्स्ट बॉल पे आउट, हाशमी इस्बहो, फिट है तो हिट है। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। लाइफ हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं। जैसे लास्ट बॉल पे छक्का, हाशमी इस्बहो, फिट है तो हिट है। Now shop, dine and travel with the convenience and luxury of Bank Islami Debit Mastercards. Bank Islami, serving you the right way. और वही जी, तो पाकिस्तान को यहाँ एक और विकेट मिली है। कप्तान मोइन अली आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। कराची के क्राउड में जान आई, जो कुछ देर पहले खामोश बैठे हुए थे, लेकिन नवाज की इस विकेट हासिल करने के बाद, जो कि उन्होंने डेकेट की हासिल की है, कराची की जो क्राउड मौजूद है नेशनल स्टेडियम में, एक बार फिर शोर शुरू कर दिया है। मोइन अली जिन्होंने बड़ी खतरनाक बैटिंग का मुजाहरा किया था इस सीरीज में, पिछले मैच में इनफैक्ट, लेकिन इस बार अब देखना यह है कि आज क्या करेंगे मोइन अली, जो कि सामना करेंगे नवाज का। गेंद करवाने के लिए तैयार हैं, इस ओवर की तीसरी गेंद करवाने के लिए आएंगे नवाज। अब तक 2 विकेट हासिल की हैं ओवर द विकेट, चाहे गेंद करने के लिए। इस बार बीच हुए और नवाज को ऐसा लगा जैसे कॉट बिहाइंड हो, अंपायर की तरफ देखा, अपील की
वापस आ गए फिर। नवाज इज बैक एंड बैक विद अ बैंग। इन्होंने 2 विकेट्स हासिल कर ली हैं। ये जो दूसरे ओवर में आए इसकी भी इब्तिदा में विकेट हासिल की। ओवर द विकेट गेंद फेंकने के लिए आए थे। एंगल बनाती हुई गेंद लेफ्ट हैंड के स्टंप्स की जानिब जा रही थी। सिर्फ एक परेशानी हो सकती थी कि क्या पॉइंट ऑफ इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बिल्कुल सामने है, एग्जैक्टली सामने मौजूद था, तो तीनों रेड करार पाए। एक बार फिर आए और एक बार फिर ड्राइव करने के लिए गए, बीच हो गए इस बॉल पर। नवाज जो कि एक दफा फिर अपील करने के लिए गए थे अंपायर के पास, लेकिन रिजवान जिन्होंने अपील नहीं की वो समझ गए थे कि बैट और बॉल में कनेक्शन नहीं हुआ। खूबसूरत बाउंस मिला है नवाज को, जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और गेंद को वो अपने लिए ऑफ स्पिन की सूरत में खेलने के लिए गए थे। टॉप स्पिन रही, सीधी रहती हुई विकेट कीपर के पास पहुंची, आउटसाइड एज को बीट करके मोइन अली के। आसान नहीं लग रहा नवाज को खेलना। एक बार जो अगली गेंद थी इसको ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब मोइन अली ने, कि जहां पर 1 रन को मिल गया है। 23 गेंदों पे 55 रन इन्होंने बनाए थे मोइन अली ने, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के थे। दूसरा T20 इंटरनेशनल था इस सीरीज का। बॉलिंग ऑलराउंडर्स की आमद इसके बाद शुरू हो जाएगी। डेविड विली, लाइम डॉसन, आदिल रशीद, और बैटिंग में डीप जरूर जाते हैं, इतना इंग्लैंड को क्रेडिट है। ऑली स्टोन और रीस टॉपले इसके बाद आना बाकी है, जो कि जरूरत पड़ेगी तो विल सी। लेकिन अगर इंग्लैंड को पाकिस्तान ने हराना है तो एक बात खासी यकीनी है कि बॉल आउट करना पड़ेगा। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी डाउन द लेग साइड। ये गेंद थी वाइड हो जाएगी, क्योंकि अच्छा खासा बाहर ये गेंद करती थी। रिजवान ने भी इस गेंद को इवेंट से स्टॉप ही किया है, कलेक्ट नहीं कर पाए थे, तो एक एक्स्ट्रा रन यहाँ पर हासिल हुआ। 200वां T20 इंटरनेशनल और शाम को यादगार बनाते हुए 35,000 के करीब का मजमा, जिसको कंफर्म किया अब से कुछ देर पहले बड़ी स्क्रीन में। थैंक यू कराची, इट्स अ फुल हाउस वंस अगेन इन NSK। इस ओवर की आखिरी गेंद इस बार सीधा ड्राइव किया, और इसको नवाज ने दाएं जानिब ड्राइव करते हुए खुद ही अपनी गेंद पर इस जोरदार शॉट को रोक लिया। एक अच्छा ओवर मुकम्मल हुआ नवाज का। 8 ओवर्स के बाद इंग्लैंड 59 पे 4। चलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पैंथर के टायर्स आपकी सवारी और जज्बे को रुकने ना दें, क्योंकि हम चलें तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप। बैंक इस्लामी वन टच बैंकिंग से करें ट्रांजैक्शंस अपने थंब इंप्रेशन से, वो भी बिना ATM कार्ड और चेकबुक के। बैंक इस्लामी, सर्विंग यू द राइट वे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं, जैसे नो बॉल पे रन आउट। हाशमी इसका हो, फिट है तो हिट है। राइट जी, तो इफ्तिखार जो है वो एक बार फिर दूसरा ओवर उनको मिल गया है, जो पाकिस्तानी स्पिनर्स लगता है कि इंग्लिश बैट्समैन के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, और बने भी हैं अब तक। इफ्तिखार आ रहे हैं गेंद करने के लिए। ये तेज गेंद कर दिया, पे शॉट था ये, लेकिन कवर के ऊपर से कुछ चला गया, और 1 रन यहाँ पर हासिल किया। दूसरा भी लेना चाहते हैं लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ, तो 12 1 ही रन यहाँ पर बना। और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बड़ा ही कुछ जो अंदाज था मोइन अली का, इफ्तिखार का कुछ बेहतर नहीं रहा। अकील समर 32 साल इफ्तिखार 35 साल मोइन अली के ऊपर गिर गए तकरीबन, और फिर उनको मोइन अली ने आके थपके ही दी है कि आप जगह पे खड़े हो जाइए। ये मामला था क्योंकि अपने बैट को ग्राउंडेड करना था मोइन अली को, लेकिन उससे ज्यादा अहम खबर ये थी कि वो कंट्रोल में नहीं थे शॉट को खेलते हुए, जो कि गेंद तवक्को के खिलाफ शायद ज्यादा बाउंस कर गई थी। फील्डर मौजूद थे, वाइड मिड ऑफ की पोजीशन में बाबर आजम, उनके सर के ऊपर से गेंद गई, थ्रो की बहरहाल जाकर, और थ्रो जब तक पहुंचती ये मिनी क्रोएन हुआ, उनके ऊपर से ये उल्टी कलाबाजी खा के गिरे इफ्तिखार, लेकिन दोनों फौरन सीधे हो गए, और फिर दोनों ही इखलाक के बड़े अच्छे हैं, दोनों ने फौरन एक्सचेंज और स्माइल किया। शॉर्ट सेटमेंट पॉइंट है और एक्स्ट्रा कवर, ये ऑफसाइड की फील्ड है। शॉर्ट फाइन लेग भी लेकर रखा है। अगली गेंद जिसको ड्राइव कर दिया है मिड विकेट की जानिब, और जहां पर 1 रन आसानी के साथ हासिल किया। जी अगर आप ये आवाज सुन रहे हो तो हमारे तीसरे कमेंटेटर हैं रिजवान, जिनकी हम सुन सकते हैं क्लियरली जो एडवाइस है वो हर बॉल के साथ आ रही है। अच्छा, मोइन अली उर्दू जानते हैं, और उन्होंने शायद ये देखते हुए पश्तो में बात की है, क्योंकि इफ्तिखार भी इन्हीं के सूबे से ताल्लुक रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसीम जो फील्डर थे वो भी, तो गेम अवेयरनेस की दाद तो देनी होगी। रिजवान की फौरन उन्होंने अपनी कॉल को उर्दू से पश्तो में बदला। ये अगली गेंद थी, इसको पुश किया शॉर्ट कवर की जानिब, जहां पर बाबर आजम मौजूद थे। वैसे ज्यादातर अगर इनके साथ KP के बॉलर्स हों तो ये पश्तो में ही बात कर रहे होते हैं। यस तो आप मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं या आप नफी कर रहे हैं? मैंने कहा पूछ लूंगा, मुझे वो समझ नहीं। अगली गेंद है, इसको फिर ड्राइव किया इफ्तिखार की जानिब। नहीं, मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर KP के बॉलर उनके साथ इसलिए पश्तो में बात करते हैं ताकि अपने साथी जो फील्डर है वो भी ना समझ सके क्या कह रहे हैं। हाँ, ये बात जरूरी है, लेकिन जब तो आ जाए ना तो के बाद बहुत सारी चीजें तू मैं तक भी जाती है। अगली गेंद है, इसको ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की जानिब। 1 रन यहाँ पर हासिल किया है,
और इस एक रन के बाद मजीद जो इंग्लैंड का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 62, 4 विकेट नुकसान पर। वैसे आप सुना था दिल पे नहीं लेते, आपने लेना शुरू कर दिया। नहीं, वो दिल तक अभी बात पहुंची नहीं है, इस वजह से मैंने कहा पहले मामला रफा दफा कर लें। लेकिन पाकिस्तान ने कम से कम ये पहले ओपनिंग अटैक को तो जल्दी हवा कर दिया है। आने वाले खिलाड़ियों में अभी भी इनके पास बैटिंग डीप में मौजूद है, लेकिन अब टारगेट स्टीप होता हुआ 67 गेंदों पे 105 रन दरकार। रोशनियां उतरी हुई नेशनल स्टेडियम में, अपने मोबाइल फोन की टॉर्चेस को रोशन किया हुआ है क्राउड ने। अगली गेंद जो कि तेज गेंद कर दी थी इफ्तिखार ने और उसके बाद इसको ड्राइव किया मिड विकेट की जानिब। एक रन यहाँ पर बना 9 ओवर्स के बाद। इंग्लैंड 63 पे 4। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। Light, big, salty, delicious and crispy bars. Visconi Crux. सो हैरी ब्रुक सामना करेंगे नवाज कामयाब बॉलर का। 2 ओवर में 13 रन दिए हैं। हैरी ब्रुक मोहतात नजर आते हैं। कैच छूटा था नवाज से, लेकिन अब दोबारा हैरी ही उनके सामने है। इस बार खत्मों का इस्तेमाल किया है। इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया है। गेंद को डिस्टेंस भी मिला, एयर भी मिली और छक्का लग गया कराची के नेशनल स्टेडियम में। It's a Visconi Crux sixer. Light, big, salty, delicious and crispy bars. Visconi Crux. गजब का शॉट खेला है हैरी ब्रुक ने। इससे पहले चौका मेरे लिए वो शॉट ऑफ द इवनिंग था, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर इनसाइड आउट खेला, रूम बनाया और क्या जबरदस्त प्लेसमेंट, हाई एल्बो के साथ खेला और अपने पोस्ट को बरकरार रखा फोटोग्राफर्स के लिए। वेल प्लेड हैरी ब्रुक। बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया यंग मैन आपने। अगली गेंद जिसको हल्का सा पुश किया, शॉर्ट कवर्स की जाने, फील्डर मौजूद है। एक रन यहाँ पर फिर हासिल हो गया है। तो नवाज पे मेरा ख्याल ये इन्होंने चार्ज करने का फैसला किया है क्योंकि बहुत ज्यादा हवासों पे सवार हो रहे हैं इस वक्त इंग्लिश बैट्समैनों के। 64 गेंदों पर 97 रन। गेम ऑन है, आधे ओवर मुकम्मल होने जा रहे हैं और एंटिसिपेट करता हुआ कैपेसिटी क्राउड इतवार की शाम और बड़े खूबसूरत मनाज़र हैं आज शहर कराची में। मौसम भी लिव अप करता हुआ यादगार शाम को बनाने के लिए आखिरी T20 इंटरनेशनल जो कि कराची में खेला जा रहा है। एक बार फिर आ रहा है नवाज गेंद करने के लिए। इस बार मोइन अली जिन्होंने इसको स्वेप कर दिया है। गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की जानिब, कोई है ही नहीं दूर दूर तक जो गेंद को रोके। 4 रन मिले। It's a Visconi Crux boundary. Light, big, salty, delicious and crispy bars. Visconi Crux. लाइन में चूक गए नवाज। डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद को स्वीप किया है। पूरे कंट्रोल में नहीं थे, गेंद बल्ले के निचले किनारे पे लगी है, लेकिन चूंकि वाइल्ड स्विंग मौजूद था रोकने के लिए स्क्वायर लेग फील्डर को मौका ना मिल सका। लॉन्ग लेग की बाउंड्री क्लियर कर गई गेंद। मोइन अली का पहला चौका। अगली गेंद खत्मों का इस्तेमाल किया मोइन अली ने और ये गेंद जा रही है शारफ फैसल। छक्का लगाने में कामयाब रहे मोइन अली। It's a Visconi Crux sixer. Light, big, salty, delicious and crispy bars. Visconi Crux. 2 कदम आगे आए, विद द स्पिन खेले और गेंद के नीचे आके जो शॉट खेला है वो हनीफ मोहम्मद इंक्लोयर के अंदर जाकर गिरा। कराची बड़ा डिस्टेंस रखता है। यस 95 मीटर जो कि ब्रॉडकास्टर ने कंफर्म किया है। गेंद क्राउड से वापस आई है, लेकिन क्राउड खामोशी के साथ इस गेंद को हासिल करते देखता रहा। मोइन अली ने गियर बदल दिया अचानक से। 9 गेंदों पर 13 बना के नॉट आउट, पहले चौका और अब नवाज के खिलाफ छक्का। दोबारा से गेम को ऑन करते हुए 62 पे 87 दरकार। 3 बाउंड्रीज लग गई इस ओवर में। एक बार फिर ये अगली गेंद, इसको अलबत्ता ड्राइव करने का फैसला किया स्वीपर कवर की जाने मोइन अली, जिन्होंने यहाँ पर 1 रन हासिल कर लिया है और 61 गेंदों पे अब 86 रन यहाँ पर चाहिए। तमाशाइयों की बात करते हैं, अचानक से खामोश नजर आए थे और अभी भी चुप चुप हैं क्योंकि बाउंड्रीज हासिल हो गई हैं इंग्लिश साइड को। हारिस रऊफ को वापस लाया जा सकता है ख्याल, अगर क्योंकि मोइन अली स्पिन बॉलिंग के बड़े अच्छे खिलाड़ी समझे जाते हैं। हैरी ब्रुक भी कदम जमा चुके हैं, पेस के जरिए से बीट करने की कोशिश करें स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद, कुड बी अ गुड ऑप्शन। 18 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। अगली गेंद इसको पुश किया मिड विकेट की जानिब, 1 रन यहाँ पर फिर बना आसानी के साथ। 10 ओवर्स मुकम्मल हुए। इंग्लैंड 82 पर 4। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड।
delicious and crispy pass. Visconi Crux. पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल्फला की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। चलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पैंथर के टायर्स आपकी सवारी और जज्बे को रुकने ना दें, क्योंकि हम चलें तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप। बैंक इस्लामी ऑटो फाइनेंस से हासिल करें सेम डे अप्रूवल, वो भी 340 से जायद ब्रांचेस पर। बैंक इस्लामी, सर्विंग यू द राइट वे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। Hungry young man, young and eater, खाने का दुश्मन या टाइट माइंड हीटर, जीने के लिए खाने वाला, खाने के लिए जीने वाला हर कोई बोले बस give me crutch, 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 give me crutch. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Give me crutch. Visconi Crux. पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल्फला की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। लाइफ हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं। जैसे लास्ट बॉल पे छक्का, हाशमी इस पर हो, फिट है तो हिट है। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल्फला की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। पहले भी कहा था अपने साथ डॉक्टर कॉफ लोजेंजेस रखा करो, ये लो। ये हुई दवा। Doctor's number 1 choice. Dr. Cough lozenges. पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल्फला की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। चलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पैंथर के टायर्स आपकी सवारी और जज्बे को रुकने ना दें, क्योंकि हम चलें तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल्फला की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। Hungry young man, young and eater, खाने का दुश्मन या टाइट माइंड हीटर, जीने के लिए खाने वाला, खाने के लिए जीने वाला हर कोई बोले बस give me crutch, 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 give me crutch. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Give me crutch. Visconi Crux. पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल्फला की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड। नए ओवर की पहली गेंद, 11वां ओवर इनिंग्स का जो कर इफ्तिखार पहली गेंद। इस गेंद को खेला ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन की जानिब यहाँ मौजूद थे मोहम्मद वसीम और सिंगल हासिल करने में कामयाब रहे ब्रुक का स्कोर हुआ 21-17 गेंदों में, जबकि मोइन जो 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। इंग्लैंड का स्कोर 83, 4 विकेट के आउट होने पर, और अब 84 रन और चाहिए 59 गेंदों में ये मैच जीतने के लिए इंग्लैंड को। एक बार फिर आ रहा है इफ्तिखार लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मोइन अली को, जिन्होंने इस गेंद को ड्राइव किया मिड ऑन की जानिब, और इफ्तिखार खुद गए दौड़ते हुए। 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में, जो हो गया अब 84। अब तक बॉलिंग ऑप्शन पाकिस्तान का जो कि पाकिस्तान ने इस्तेमाल नहीं किया, उसमें उस्मान खादिर हैं कि जिनको अब तक बॉलिंग के लिए यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है कप्तान बाबर आजम ने। दूसरी तरफ जो 2 स्पिनर हैं उसमें एक इफ्तिखार अहमद जो है बॉलिंग कर रहे हैं, जबकि नवाज भी पाकिस्तान के लिए 3 ओवर्स कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 32 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं। सरप्राइजिंगली उस्मान खादिर आज अभी तक नहीं आए हैं गेंद करने के लिए। अगली गेंद, इस गेंद को बैकफुट पर आकर ड्राइव किया ब्रुक ने, और गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन की जानिब। 1 रन मुकम्मल किया है और सिर्फ 1 रन हासिल हो सकेगा क्योंकि थ्रो आ गया था विकेटों पे। इस 1 रन के साथ ब्रुक का स्कोर हुआ 22-18 गेंदों में। इंग्लैंड का स्कोर पे 86, 4 आउट। जी हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता मोइन अली जिन्होंने यहाँ पर लीड करने का फैसला किया बैटिंग करते हुए भी, क्योंकि आते के साथ ही जो प्रेशर था नवाज का, जिस तरह वो विकेट हासिल कर रहे थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उसको किल कर दिया मोइन अली ने अपने 1 ओवर में 2 छक्के लगा के। अगली गेंद, इस पर ड्राइव मोइन का स्वीपर कवर की जानिब, और फील्डर आया जब तक आसानी के साथ ये सिंगल मिलेगा मोइन अली को, तो मोइन का स्कोर हुआ 16, 12 गेंदों में, जबकि 86 स्कोर हुआ
4 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड का स्कोर है और अब 81 रन की जरूरत 26 गेंदों में। कमेंट्री करनी मुश्किल कर देते हैं ये विकेट कीपर्स। जी हाँ, रिजवान जो है मुसलसल हम देखते हैं हम उर्दू में कमेंट्री कर रहे हैं, ये पश्तो में कर रहे हैं। एक बार फिर आ रहे हैं इफ्तिखार गेंद करने के लिए, जोरदार ड्राइव लॉन्ग ऑन की जानिब और सिंगल हासिल होगा यहाँ पर भी ब्रुक को। 1 रन के साथ ब्रुक का स्कोर 23, इंग्लैंड 87, 4 विकेट के आउट होने पर 1 गेंद का आना और बाकी, जिसके बाद 11 ओवर्स मुकम्मल हो जाएंगे। 55 गेंदों पर 80 रन चाहिए, इतने मुश्किल नहीं T20 में। पाकिस्तान को हर सूरत विकेट्स यहाँ पर हासिल करनी होंगी। पाकिस्तान नहीं सोचेगा कि 20 ओवर तक जाएं, विकेट्स हासिल करें ज्यादा से ज्यादा। आखिरी गेंद के लिए आ रहे हैं इफ्तिखार और इस गेंद को बिल्कुल स्ट्रेट बैट के साथ खेल दिया वापस इफ्तिखार की जानिब। मोइन ने ओवर मुकम्मल, 11 ओवर्स के बाद 87, 4 आउट। चलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पैंथर के टायर्स आपकी सवारी और जज्बे को रुकने ना दें, क्योंकि हम चलें तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप। लाइफ हो या क्रिकेट मैच, कुछ चीजें फिट होने से ही हिट होती हैं। जैसे फर्स्ट बॉल पे आउट, हाशमी इस पर हो, फिट है तो हिट है। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल द वे फॉरवर्ड। तो अब 54 गेंदों पे 80 रन जो हैं वो दरकार हैं और जिस तरह से हम बात करें ज़ीशान, ये आसान मैच बन सकता है अगर ये पार्टनरशिप बन गई इंग्लैंड के लिए। जहाँ एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है, अगर एक पार्टनरशिप बनती है तो यकीनन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये टारगेट इंग्लैंड के लिए। और फिर जो आने वाले बैटर्स हैं अभी उनका आना बाकी है, जिसमें डेविड विली हैं, लियाम डॉसन हैं, आदिल रशीद हैं, ये सब बैटिंग कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है अनलेस के पाकिस्तान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पर परफॉर्मेंस देना होगी। हारिस रऊफ अपनी बॉलिंग के लिए आ रहे हैं और अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं, बीट करने में कामयाब हुए। अच्छी गेंद हारिस की और इसको जो कि लेग स्टंप लाइन से बाहर चले गए थे ब्रुक, इस गेंद को खेलने के लिए फॉलो किया उनको हारिस ने और गेंद उनके बैट के नजदीक से होता हुआ गया विकेट कीपर रिजवान के ग्लव्स में और बड़ी नजदीक से गई ये गेंद लेग स्टंप से। जी हाँ, इस गेंद की रफ्तार भी बहुत ज्यादा तेज नहीं रखी थी। 130 हमने देखा किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गेंद की थी। बैट्समैन लेग स्टंप से पीछे हटे और लेग स्टंप और बैट्समैन के दरमियान से ये गेंद जो था वो चला गया। एक सीधा सीधा ये बॉल था कि जिसपे बैट्समैन को बीट किया है हारिस रऊफ ने। जहाँ हारिस एक बार फिर सामने कर रहे हैं उनका ब्रुक जो 23 पर बैटिंग कर रहे हैं। हारिस लाइक गेंद करने के लिए इस मरतबा लेग स्टंप लाइन पर ये गेंद इसको खेल दिया है डीप स्क्वायर की जानिब। फील्डर मौजूद बाउंड्री लाइन पर जिन्होंने इसको फील्ड किया और सिर्फ एक ही रन हासिल हो सका ब्रुक को, जिनका स्कोर हुआ 24, इंग्लैंड 88, 4 आउट। ऑलमोस्ट ये वही बॉल था जो इससे पहले किया था, लेकिन इस बार जो ब्रुक थे उन्होंने सोचा बजाय इसको आउटसाइड ऑफ स्टंप पे खेलें, इन्होंने बॉल की लाइन में खेलने का फैसला किया और इसको निकाल दिया स्क्वायर लेग की जानिब और रन यहाँ पर हासिल कर लिया है। तो इंग्लैंड 88 पर 4 और इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में हारिस के नारे जो हैं वो तमाशाई लगा रहे हैं ताकि किसी तरह हारिस रऊफ पाकिस्तान को विकेट दिला सकें। जहां हारिस रऊफ ने विकेट दिला ही दिया था ऑलमोस्ट एक, जब नवाज उनकी गेंद पर कैच नहीं कर पाए थे, तो इनकी तो समझ लीजिए कि एक विकेट आ चुकी है। लेकिन बहरहाल एक बार फिर आ रहे हैं राउंड विकेट इस मरतबा मोइन अली को, जिन्होंने इसको तिरछे बैट के साथ खेला बैकवर्ड पॉइंट की जानिब और फील्डर यहाँ मौजूद। 1 रन का और इजाफा होगा स्कोर में। इस 1 रन के साथ इंग्लैंड का स्कोर बढ़ता हुआ 88, 4 विकेट्स के आउट होने पर 51 गेंदों का खेल बाकी है और 78 रन चाहिए इंग्लैंड को। मोहम्मद नवाज जिन्होंने 3 ओवर में 32 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की हैं। हसनैन ने 2 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद वसीम ने भी 2 ओवर किए, 22 रन इन्होंने दिए हैं, जबकि विकेट इनको कोई नहीं मिली। इफ्तिखार अहमद ने 3 ओवर में 14 रन दिए, ये भी विकेट लेस बॉलर रहे हैं। जबकि हारिस रऊफ ये दूसरा ओवर कर रहे हैं, 9 रन कुल मिलाकर उन्होंने अब तक दिए हैं और इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं। ब्रुक जो कि ग्राउंड का चारों तरफ जायजा ले रहे हैं इस बार, ज्यादातर इन्होंने इस वक्त लॉन्ग लेग और स्क्वायर लेग की जानिब देखा और फिर तैयार है खेलने के लिए। हारिस रऊफ आ रहे हैं गेंद करने के लिए, इस मरतबा इस गेंद को स्क्वायर लेग की जानिब खेला है। थोड़ा सा फाइन खेला है, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के दरमियान और सिंगल हासिल करने में कामयाब। तो इस 1 रन के इजाफे के साथ 90 स्कोर हो गया इंग्लैंड का 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर। ब्रुक 25 पर और मोइन अली 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। बहुत ज्यादा रफ्तार के साथ गेंद नहीं कर रहे हैं हारिस रऊफ, शायद पिच की नौयत को समझ गए हैं। जो अब तक उन्होंने गेंदें की हैं वो 130, 135 और ये गेंद भी स्लो वन थी जिन्होंने की थी। पेस को अपने वेरी कर रहे हैं हारिस रऊफ यहाँ पर और इसी चीज की जरूरत भी है कि वेरिएशन का इस्तेमाल करें। अगली गेंद स्लाइटली शॉर्ट गेंद और इस गेंद को पुल कर दिया मोइन अली ने और गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की जानिब। बड़ी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा वसीम की जानिब से,
जो दौड़े थे डीप स्क्वायर लेग की पोजीशन से और डाइव करते हुए इस गेंद को रोका और यकीनी चौका जाने से उन्होंने बचा लिया। जी हाँ, काफी जोरदार ये शॉट था। अचानक से मोहम्मद वसीम दूर से दौड़ते हुए आए और दाएं जानिब डाइव करते हुए इस गेंद को रोक लिया। ऐसे ही अचानक आए जैसे एग्जाम में कोई ऐसा पेपर आ जाए जिसकी तैयारी ना हो और आप सोचते रह जाए ये क्या हो गया, और पलक झपकते में इस गेंद को रोक भी लिया, डाइव भी की और बड़ा अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा वसीम की जानिब से। जी हाँ, इंजरी से वापस आए हैं लेकिन अच्छी रिकवरी है वसीम की। एक बार फिर आ रहे हैं हारिस रऊफ, मोइन उनके सामने बैटर और उस पर उठाकर खेल दिया मोइन अली ने और गेंद एक टिप्पा खाने के बाद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। It's a Bisconi Crux boundary. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Bisconi Crux. पहले भी कहा था अपने साथ डॉक्टर कॉफ लोजेंजेस रखा करो, ये लो, ये हुई दवा। Doctor's #1 choice, Dr. Cough lozenges. Now shop, dine and travel with the convenience and luxury of Bank Islami Debit Mastercards. Bank Islami, serving you the right way. चलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पैंथर के टायर्स आपकी सवारी और जज्बे को रुकने ना दें, क्योंकि हम चलें तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का #1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। सो इफ्तिखार अपनी बॉलिंग जारी रखते हुए अपना चौथा और आखिरी ओवर करेंगे। बड़ी अच्छी बॉलिंग की आज इफ्तिखार ने और जो 3 ओवर्स इन्होंने इससे पहले किए हैं उन 3 ओवर्स में इफ्तिखार ने 14 रन दिए, क्योंकि विकेट कोई नहीं मिला है, लेकिन बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग है आज इफ्तिखार की जानिब से। और सामना करने के लिए तैयार है उनका ब्रुक जो 25 पर बैटिंग कर रहे हैं 22 गेंदों में, जबकि मोइन ने 23 रन स्कोर किए हैं, 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। तो इफ्तिखार आ रहे हैं नए ओवर की पहली गेंद के साथ, सामने उनके ब्रुक ड्राइव किया वापस बॉलर की जानिब और गेंद उनके हाथ से लगने के बाद लॉन्ग ऑफ पोजीशन पर आया और 1 रन बनाने का मौका मिल गया ब्रुक को। अच्छा हाँ, काफी ज्यादा ये तेज शॉट खेला था जो कि इफ्तिखार की जानिब आया था और बम्प होकर उनके पास की गेंद पहुंचा, लेकिन बहरहाल इसको रोक नहीं सके, जिसकी वजह से जो रन था वो हासिल कर लिया ब्रुक ने फौरन ही। इफ्तिखार जिन्होंने अब तक कोई विकेट हासिल नहीं की है, लेकिन रन रोकने में बड़ा अहम किरदार अब तक अदा किया है इन्होंने पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, सबसे इकोनॉमिकल बॉलर इस वक्त इफ्तिखार ही है। एक बार फिर आ रहे हैं गेंद करने के लिए, सामने उनके मोइन ने इस गेंद को बैकफुट पर आकर लपेटते हुए खेला लॉन्ग ऑन की जानिब। यहाँ पर फील्डर मौजूद जिन्होंने इसको फील्ड किया और 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। आई थिंक आज शायद उस्मान कादिर को बॉलिंग ना कराएं बाबर आजम, क्योंकि आज 4 ओवर्स अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने इफ्तिखार से कराए हैं, तो मुमकिन यही है कि लगता है कि शायद वो बॉलिंग के लिए ना आए, बट यू नेवर नो। एक बार फिर आ रहा है इफ्तिखार गेंद करने के लिए और इस गेंद को ड्राइव किया और कोशिश की थी इसे कैच करने की, लेकिन गेंद उनके हाथ को लगने के बाद लॉन्ग ऑफ पर आया और 1 रन मिल गया यहाँ पर इंग्लैंड और ब्रुक को। राइट, बिल्कुल। और साथ साथ हमने देखा था कि आज उस्मान कादिर ने बड़ा अच्छा एक कैच लिया था और शुरू में जो विकेट हासिल की थी उस वक्त उनके हाथ पे थोड़ी सी कहीं चोट लगी थी और मैजिकल स्प्रे जो था वो बाद में भी उनको दिया गया। सो मे बी फील्ड में नजर आ रहे हैं, लेकिन बॉलिंग उनसे नहीं करवाई गई है। 45 गेंदों में 68 रन की जरूरत। एक बार फिर इफ्तिखार और इस मरतबा इनसाइड आउट खेला शॉट को मोइन अली ने और क्या दिल का स्ट्रोक था लॉन्ग ऑफ की जानिब, गेंद 4 रन के लिए बाहर। It's a Bisconi Crux boundary. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Bisconi Crux. तो मोइन अली जो है वो खतरा बनते जा रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से ये रन हासिल कर रहे हैं, कोई डर कोई फिक्र नहीं है इनको। बॉलर के अगेंस्ट जाते हैं, शॉट खेलते हैं, बाउंड्री हासिल करते हैं। एक बार फिर उसी एरिया में खेला क्योंकि ये वैकेंट एरिया है, यहाँ कोई फील्डर मौजूद नहीं है और इस एरिया में इन्होंने इससे पहले बाउंड्री लगाई थी, लेकिन इस मरतबा एक फील्डर आए दौड़ते हुए क्योंकि शॉट बहुत ज्यादा कुव्वत वाला नहीं था। 1 रन का और इजाफा हुआ। मोइन का स्कोर हुआ 19 गेंदों में 29, जबकि इंग्लैंड का स्कोर 104, 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर 1 गेंद और बाकी इस ओवर की, जिसके बाद 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल होगा। इफ्तिखार छोटे से स्टार्ट के साथ एक बार फिर ब्रुक उनके सामने आए गेंद करने के लिए। ब्रुक ने खेला इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की जानिब और गेंद
बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर के पास गई, सिर्फ 1 रन का इजाफा हुआ तो ओवर मुकम्मल। 13 के बाद 105, 4 आउट इंग्लैंड। पहले भी कहा था अपने साथ डॉक्टर कॉफ लोजेंजेस रखा करो, ये लो। ये हुई दवा। Doctor's #1 choice, Dr. Cough lozenges. पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से जायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। और अगर पाकिस्तान को ये मैच जीतना है तो फिर इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना बहुत जरूरी होगा, और खास तौर पर ये 2 विकेट जो है मोइन अली और ब्रुक की, ये जरूर हासिल करना होंगी। अदरवाइज कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ 62 रन चाहिए। 42 गेंदों का खेल अभी बाकी है और पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस बात का कि इस गेम को वो 20 ओवर्स तक लेके जाए। कम अज कम इन 2 विकेट्स का हासिल करना उनके लिए बेइंतहा जरूरी, और इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। नवाज को एक बार फिर गेंद दिया है बाबर आजम ने, जो अपना चौथा और आखिरी ओवर करेंगे। इससे पहले 3 ओवर्स में उन्होंने 32 रन देकर 2 विकेट्स हासिल किए हैं। ब्रुक्स सामना करेंगे उनका, जो 28 पर बैटिंग कर रहे हैं 25 गेंदों में, और मोइन 29 पर कर रहे हैं 19 गेंदों में। क्वेश्चन हियर इज, क्या उस्मान कादिर इंजर्ड हैं आफ्टर दैट कैच? क्योंकि 1-2 दफा हमने देखा कि उनके हाथ पे स्प्रे तो किया गया, बट ही वाज स्टिल इन द फील्ड टिल द 10th और 11th ओवर। अभी भी ढूंढते हैं कि वो कहीं पे फील्डिंग कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज उनको अगर 13 ओवर हो गए और अभी तक गेंद नहीं दी है तो या तो वो इंजर्ड है। पहली गेंद इस ओवर की बाहर निकल कर आया, इस गेंद को स्ट्रेट बैट के साथ ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की जानिब ब्रुक ने फॉर अ सिंगल। He moves on to 29 of 26. England 106 for 4. या तो वो इंजर्ड है, और या क्योंकि वो बाज़ दफा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और क्योंकि इफ्तिखार 3 ओवर निकाल चुके हैं, तो या तो फिर उनको एज अ बॉलिंग ऑप्शन कंसिडर नहीं किया जा रहा है। और पेसर्स जो कि जरा सा आज जिन्होंने बेहतर गेंद की है, स्पेशली हसनैन ने, उनसे ही फिनिश कराएंगे आज मैच को। क्या देखना होगा ये, लेकिन उस्मान नहीं लगता कि आप शायद आए गेंद करने के लिए। नवाज की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, निकल कर आए ऊंचा शॉट खेलने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिवली बीट हुए, गेंद जाके लगा स्टंप्स पे और मोइन अली आउट होकर वापस। चलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पैंथर के टायर्स आपकी सवारी और जज्बे को रुकने ना दें, क्योंकि हम चलें तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का #1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप। Wow, what a ball, and Moeen made the mistake after a while. 20 गेंदों पे 29 रन तो बना चुके थे, बल्कि 19 गेंदों पे 20वीं गेंद पे बीट हुए। और नवाज की एक बात है, जो उन्होंने पिछली विकेट भी ली थी और ये भी जो विकेट ली है, बॉल टर्न करी है। नवाज हैज स्पन द बॉल मोर देन एनी ऑफ द इंग्लिश स्पिनर्स, एंड इफ्तिखार से भी ज्यादा। उस्मान तो आज गेंद करने नहीं आया, सो वी कांट गेज फ्रॉम देयर, बट एक बात है, नवाज की गेंद ब्रेक हो रही है, स्पिन हो रही है, और फ्लाइट में भी वो डिसीव कर रहे हैं। वेरी गुड बॉलिंग। जहां बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा नवाज की जानिब से। अब तक 3 विकेट्स नवाज ने हासिल कर ली है, अपना चौथा ओवर कर रहे हैं। 33 रन दिए नवाज ने, और ये तीसरा विकेट है जो आज उन्होंने हासिल किया है। और ये भी मुमकिन है कि आज एक नई स्ट्रेटेजी के साथ उस्मान को आखिरी ओवर्स में लेकर आए बॉलिंग के लिए। देखना पड़ेगा, मगर आई डाउट इट। याद है उमर गुल को 2009 के वर्ल्ड कप में उन्होंने 12वां ओवर दिया जाता था। 12वां, 14वां, 16वां, 18वां ओवर करवाते थे वो। ये एक नई स्ट्रेटेजी उस वक्त ये थी कि बॉल रिवर्स स्विंग होती थी, क्योंकि जरा पुरानी हो चुकी होती थी। हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं, वो चाह रहे हो कि बॉल जरा सी और पुरानी हो जाए और फिर दें तो शायद ब्रेक ज्यादा हो, लेकिन इट विल बी टू बिग ऑफ अ रिस्क। और अगर ऐसी बात होती तो फिर इफ्तिखार को इतनी अर्ली नहीं दिया। तो मुझे लगता है इफ्तिखार को लाए इसीलिए हैं कि उस्मान इज अनफिट टू बॉल। इस गेंद को जो कि नए आने वाले बैटर हैं विली, उन्होंने खेल दिया था लॉन्ग ऑन की जानिब। फील्डर मौजूद हैं तो पहला रन हासिल किया डेविड विली ने। ही इज ऑन 1 and England 107 for 5. Wow, Ken Nawaz, he's got 3 balls left in his spell, 3 for 34. इस वक्त इंग्लैंड को 49 गेंदों में 60 रन चाहिए। 39 गेंदों पे 60 रन चाहिए। It's getting to be a close match. जहाँ ब्रुक का विकेट अगर मिल जाता है तो it's going to be a prize wicket. नवाज आना गेंद करने के लिए, और ब्रुक ने इस गेंद को खेल दिया आहिस्ते के साथ लॉन्ग ऑफ की जानिब। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए मुड़ना चाह रहे थे, लेकिन फील्डर बड़ी तेजी के साथ गेंद पर लपके और
उनको महदूद रखा सिर्फ 1 रन तक। सो 1 रन के इजाफे के साथ 108 स्कोर हो गया इंग्लैंड का 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर। ब्रुक की कोशिश थी कि 2 रन लें, जब भी उन्होंने टैप किया था लेग साइड की तरफ और ये सोचा था कि जब तक बाउंड्री से फील्डर दौड़ते हुए आएंगे वो शायद 2 निकाल लेंगे, लेकिन इतना मौका नहीं मिला उनको। नवाज एक बार फिर आ रहे हैं गेंद करने के लिए, बैकफुट पर आया, उस गेंद को वापस खेल दिया नवाज की जानिब। विली ने अपनी गेंद पर खुद एक फील्डिंग की और तमाशाइयों की जानिब से एक शोर इस बात पे कि ये डॉट डिलीवरी थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट कहूंगा, ये जो बहुत मैचअप्स होते हैं कि लेफ्ट हैंडर है तो लेग स्पिनर को ना दो, ऑफ लेफ्ट आर्मर को ना दो। आप ये बताएं, नवाज ने बेन डकेट को बोल्ड किया, मोइन खान को बोल्ड किया। बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर ही इज बोल्ड 2 लेफ्ट हैंडर्स। सो आई जस्ट डोंट बिलीव इन दिस थियरी। आई मीन जो अच्छा बॉलर है वो विकेट लेगा, चाहे सामने लेफ्ट हैंडर हो या राइट हैंडर हो। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। एक बार फिर आ रहे हैं गेंद करने के लिए, अच्छी गेंद, एक बार फिर बड़ी शानदार गेंद, शानदार ओवर मुकम्मल हुआ नवाज का। 14 ओवर्स के बाद 108, 5 आउट इंग्लैंड। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से ज़ायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। चलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पैंथर के टायर्स आपकी सवारी और जज्बे को रुकने ना दें, क्योंकि हम चलें तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप। राइट, सो नवाज के का जो कोटा है ओवर्स का वो पूरा हुआ और अब मोहम्मद वसीम आए हैं गेंद करने के लिए। 2 ओवर्स में 22 रन दिए वसीम ने। अपना पहला मैच खेल रहे हैं इस सीरीज का और इस सीरीज में जो कि 7 T20 इंटरनेशनल्स खेले जा रहे हैं उसका आज चौथा मैच इस वक्त खेला जा रहा है कराची के नेशनल स्टेडियम में, जिसके बाद फिर जो रिमेनिंग 3 मैचेस हैं वो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। और यहाँ पर अब कोशिश ये है इंग्लैंड की कि इस मैच को जीता जाए, जबकि पाकिस्तान भी इस मैच को जीतने का उतना ही ख्वाहिशमंद। इस दौरान नए ओवर की पहली गेंद, जिसको स्लाइटली शॉर्ट गेंद था, जिसको पुल किया था और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। It's a Bisconi Crux boundary. Light, big, salty, delicious and crispy pass. Bisconi Crux. और जरा सा लेग स्टंप की तरफ मूव हुए थे ब्रुक और फॉलो किया वसीम ने उनको, बट स्टिल ब्रुक की स्किल देखें आप कि ऑल्दो गेंद उनके बॉडी की तरफ ही आ रही थी, स्टिल ही फ्लिक्टेड अवे एंड देयर वाज अ फील्डर at deep square leg, but it was hit so well, placed so well, it went past that fielder for 4. वसीम एक बार फिर आ रहे हैं गेंद करने के लिए और इस बार भी डाउन द लेग साइड ये गेंद की और इतनी ज्यादा गेंद बाहर की है वाइड, बल्कि बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी वाइड। और मेरे ख्याल में इस वक्त फुल क्रेडिट जाना चाहिए रिजवान को। ही डाइव्ड फुल लेंथ, दैट कुड हैव एंडेड अप एज 4 वाइड्स, बट वेरी वेल डाइव्ड एंड वेरी वेल कलेक्टेड। एक चीज जो यहाँ पर नोटिस की जाने वाली है सोहेब कि ये हर बार जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं ये बैट्समैन को फॉलो कर रहे हैं। ये समझ नहीं आती अगर बैट्समैन लेग स्टंप पे जा रहे हैं आप ऑफ स्टंप के बाहर क्यों नहीं करते गेंद, जो कि नॉर्मली होता है। और ये देखिए एक बार फिर गेंद लेग स्टंप के बाहर और इस बार विकेट मिल जाएगा। आप समझ में आया वो क्या करना चाह रहे थे। जी हाँ, तो ये विकेट मिल गया वसीम को, अपना पहला विकेट उन्होंने हासिल किया और इंग्लैंड को ये नुकसान हुआ। 6ठे विकेट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट थी ब्रुक्स की वो उन्होंने हासिल कर ली। चलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पैंथर के टायर्स आपकी सवारी और जज्बे को रुकने ना दें, क्योंकि हम चलें तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान का नंबर 1 टायर पैंथर टायर्स, चले नॉन स्टॉप। पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजें और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 750 से ज़ायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से पैसे बआसानी वसूल करें। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। राइट, सो पाकिस्तान को वो जो कहते हैं मुझे तलाश थी जिसकी, तो पाकिस्तान को तलाश थी जिस विकेट की वो उन्हें बिलाखिर हासिल हो गई और 6ठा विकेट पाकिस्तान ने हासिल कर लिया। और जिस तरह मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान को इस मैच में वापसी करती है तो ये 2 विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ब्रुक्स की और मोइन अली की। और दोनों विकेट्स पाकिस्तान ने एक ही ओवर में तकरीबन समझ लीजिए कि हासिल की। पिछले ओवर में नवाज ने मोइन को आउट किया था और इस ओवर में उसके फौरन बाद ही वसीम ने इस ओवर में ब्रुक्स को आउट किया। और इस तरह से अब 2 नए बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर मौजूद, लियाम डॉसन और उनके साथ हैं विली। Pakistan are not just into the tail, but both the tail enders have just arrived.
तो या तो ये होता कि एक बल्लेबाज ने फिर भी 7-8 गेंदें खेल ली होती, डॉसन अभी आए हैं और दूसरे एंड पे विली ने कोई 3 गेंदें खेली हैं। सो दोनों बल्लेबाज जो हैं जो कि इतने तजुर्बेकार नहीं है और आए भी फौरन है, एक लगे बाद दूसरे। डॉसन सामना करने के लिए तैयार है वसीम का। 10 इनका हाईएस्ट है T20 इंटरनेशनल्स में। ब्रैडफोर्ड पर आकर इस गेंद को आहिस्ते के साथ खेल दिया मिड विकेट की जानिब और सिंगल हासिल किया लियाम डॉसन ने। लेकिन PSL में इनकी बहरहाल अच्छी बैटिंग रही है, पिशावर ज़ल्मी के लिए खेलते रहे हैं ये और एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर माने जाते हैं। दूसरी तरफ डेविड विली भी एक अच्छे ऑलराउंडर समझे जाते हैं। लेकिन अब यहाँ से जो प्रेशर क्रिएट होगा इंग्लैंड के ऊपर, उस प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं ये होगा इंपॉर्टेंट। लेकिन और देखने से बात होता ये ज़ीशान, जब टेल एंडर्स आ जाते हैं एंड दे नो कि मैच इज ऑलमोस्ट गॉन, देन दे हैव नथिंग टू लूज, क्योंकि अगर वो आउट हो जाएंगे तो उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करते। तो बाज़ दफा ये पलट हो जाता है फील्डिंग साइड के लिए, बिकॉज अब प्रेशर पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर है कि 114 पे 6 कर दिया है 15वें ओवर में, यहाँ से तो जीतना ही जीतना है ना। तो अब प्रेशर आ गया है बॉलर्स पे टू विन द मैच फ्रॉम हियर। सामने जो बल्लेबाज हैं वो कहते हैं जी बल्लेबाज तो आउट हो गए मेन। अगली गेंद के लिए आ रहा है, बड़ी अच्छी गेंद वसीम की, बिल्कुल ब्लॉक होल में ये गेंद किया उन्होंने मिड स्टंप लाइन पे और लकी रहे विली के खेल गए इस गेंद को, अदरवाइज जरा सा भी चूकते तो प्लम LBW होते। हाँ, तो इसलिए अब प्रेशर इज ऑन बोथ साइड्स बट मोर ऑन पाकिस्तान देन ऑन इंग्लैंड। व्हेन आई टॉक अबाउट द टू बैट्समैन, दैट इज प्रेशर तो है इंग्लैंड के ऊपर, बिकॉज अभी भी उनको कोई 32 गेंदों में 53 रन चाहिए, लेकिन इन दोनों बल्लेबाज पे इतना प्रेशर नहीं है जितना पाकिस्तानी बॉलर्स पे। वसीम एक बार फिर अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं, 28 रन देकर 1 विकेट हासिल किया उन्होंने। सामना कर रहे हैं उनका विली ने ड्राइव किया इस गेंद को, ऑफ स्टंप लाइन पर ही गेंद थी और गेंद आएगा मिड ऑफ पे, फील्डर मौजूद और 1 रन हासिल हुआ डेविड विली को। इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ इंग्लैंड का 115, 6 खिलाड़ियों के आउट होने पर। जो सिंगल्स हैं ये प्रॉब्लम नहीं करेंगे पाकिस्तान को, लेकिन अगर कहीं आउट बाउंड्रीज निकलती हैं तो वो फिर एक बाइश तशवीश होगा। सिंगल्स में से प्रॉब्लम ये होता है स्ट्राइक रोटेट होती रहती है, एंड स्ट्राइक रोटेट का मतलब है कि बॉलर किसी एक बैट्समैन को साइक आउट नहीं कर सकता है। जहां वो इसने 1 या 2 बॉल कराई वो दूसरा बल्लेबाज सामने आ गया, तो ये बस जरा सा थ्रेट रहती है सिंगल्स कम टू फ्रीक्वेंटली। अगली गेंद अंदर आती हुई गेंद थी, इसको सॉफ्ट हैंड के साथ खेला डॉसन ने और जब तक पॉइंट के फील्डर दौड़ के आके से फील्ड करते रन बनाने का मौका मिल गया। 15 ओवर्स मुकम्मल, 116 इंग्लैंड 6 आउट। England are 116 for 6. I'm back for the last 5 overs of this innings and this particular match. And Pakistan have crawled their way back. And how have they crawled their way back? By picking up wickets at moments where you didn't expect them to take wickets. We have Mohammad Nawaz picking up 3 very crucial wickets. And literally, Pakistan was struggling until the wicket of Moeen Ali coming down the track to Mohammad Nawaz and getting bowled through the huge gap that he left in between bat and pad. Just going to select the correct match and then I will bring on my face and then we can go about watching the rest of this particular match. So Pakistan have Mohammad Hasnan left. He's got a couple of overs. Haris Rauf has a couple, and so does Mohammad Wasim Jr. No Usman Khader having been used this entire match. Why is he in the side? Why is he even in the side if he's not going to be used? But fair enough. The first ball of the 16th over, 2 quick runs by Liam Dawson and David Willey. These two, are not any mugs with the bat. They have the ability to hit the ball far and have the ability to bat long when coming in the lower order. I've seen Liam Dawson do it many times. I've seen David Willey do it at least a few times as well. England are 118 for 6, requiring 49 of 29 deliveries. Mohammad Hasnan, who's been one of the stars of the show from a Pakistani perspective with the ball so far in this particular innings. Let's see how it goes. Just going to remove my logo. Hasnan to Dawson. Dawson plays it through mid-wicket. They're going to go for 2 more runs. Quick running there. Throw to the non-striker's end. And they pick up the 2 runs. That wasn't great backing up, but England are
running in fast and running in as much as possible because they need it. They need the runs, and they're doing a pretty decent job with these two taking those doubles, 2 consistent doubles in a row. Now, Mohammad Hasnan, he knows how to bowl at the death, but he hasn't been the best at the death recently. Dahani as well got smashed in the previous game, who's not playing today. So Wasim Jr. will have to show if he's able to hold his nerve. And Haris Rauf has been doing great things for the past couple of years anyway. So there's no doubt he will. He knows how to bowl on this track. We've seen him. He's changing his pace very well on here and using the into the wicket kind of deliveries on a regular basis. Mohammad Hasnan getting ready to bowl to Liam Dawson. Liam Dawson taking a long walk to the square leg side, and then now he's ready. Hasnan running in. Third ball of the over. It's a low full toss. It's actually a pretty high full toss, but about his knee length full toss, and Dawson isn't able to do anything with that one. A dot ball, crucial in these moments to get dot balls. Yeah, that was not ideal from an English perspective. Dawson and Willie having an interesting conversation in the middle of the pitch, trying to sort out their plans, what they need to do. There's 3 balls remaining in this particular over. It's possibly the right idea to try and take a single and give Willie the strike against someone like Mohammad Hasnan. Hasnan has been bowling at decent pace. Hasnan to Dawson on his pads, but only muster up a single. I think Willie getting on strike is probably the right idea for them to try and give it a go. Let's see what David Willie can do against the likes of Mohammad Hasnan here. And the pace is up, but he doesn't need to bowl super pace, that like 150 plus, as long as he's changing his pace relatively enough. If he's trying to bowl Yorkers, nail those Yorkers in, I think he's got the right idea down, bowling 140 to 145, where he can control the ball, but also be very, very accurate in these last few overs. Very crucial, very important at the death, especially for your main bowlers to kind of get their line and lengths right, 100%. On the other hand, India have beaten Australia. They've won the series 2-1 against Australia after losing the first one. They've come back and, blasted Australia away, no doubt. Blasted Australia away for sure today. Hasnan to David Willie. It's a good Yorker, very good Yorker by Hasnan there. And Willie wanting to open up his stance and trying to plummet it down the ground, but very well executed Yorker by Mohammad Hasnan. And can't really say much about that one. It was tailing away from David Willie, and he couldn't really do much with that one. Couldn't do much with that one at all. Babar just having a chat, just changing the field slightly. And Hasnan just wants to end this over on a positive note, because Pakistan have kind of, like I said before, right at the beginning, crawled their way back into this particular match after not the best batting performance. They picked up quick wickets, but when you have, what a Yorker from Mohammad Hasnan on the feet of David Willie. He fell over, but thankfully was able to connect with the bat just a little bit so they can run and pick up a single to end the 16th over. Pakistan get England to 122 for 6 after 16, 4 overs remaining, 4 overs left, and England require 45 runs. 45 needed of the last 4 overs. You might say that's quite difficult. It is still possible, though. We've seen crazier things in this game of cricket, and there's no doubt that something like that could definitely happen today, too. We saw India easily win the match, 39 runs needed of 24 balls. So it is a possibility, a high possibility, but Pakistan just needs to keep going on with the momentum. Mohammad Hasnan had a very good over the previous over. Now, Haris Rauf will probably bowl the next one, and I'm assuming it'll be Wasim, Hasnan, and Haris, or Wasim, Haris, and Hasnan to kind of end things off, or something like that. But Haris Rauf to bowl the 17th over, 17th and 19th, and then Hasnan and Wasim will continue with the 18th and 20th. Oh my goodness, David Willie, you absolute beast of a man.
I don't even know how to describe this. Okay, it's a reverse scoop. Let's put it that way. That's the best way to put it. It's a reverse scoop, or it's a scoop past the keeper on his left-hand side. David Willey just paddles it right next to fourth slip or third slip if there was one, and that goes to the third man boundary. Crucial runs for England, and Haris Rauf not best pleased, but David Willey, great inventiveness, and that's the thing. That's what David Gower was talking about. David Willey, Liam Dawson, all-rounders, they have the ability to win them matches, right? Win matches for England. Around the wicket this time, Haris Rauf. David Willey does exactly the same thing again. And then again, it's running away to the third man boundary. Are you kidding me? Are you kidding me? Haris Rauf going a little shorter, but David Willey on the money once again. Smart batting there. Knew exactly what Haris was trying to go for and pushes it over the keeper. And another boundary, 2 boundaries in a row for England at the start of this over. England have started this over very, very strongly. And all the pressure is back on Haris Rauf. 2 fours to start the over. Let's see how he will bounce back. Look at that. Strike rate of 138 in T20 cricket for David Willey. He is a very, very experienced campaigner for T20 cricket, no doubt. T20 international, not as much, but still a pretty experienced campaigner, even in T20 internationals. But Haris Rauf around the wicket, he needs to nail the Yorker, because if he doesn't, same thing's going to happen again. Oh, and he nails the Yorker. Middle stump. Haris Rauf is pumped. I'm pumped. Pakistan is pumped. 7th wicket down. England lose their 7th, 130 for 7. And David Willey wanting to play that through the offside because Pakistan had pushed third man back. A beautiful Yorker from Haris Rauf, and middle stump rattled, scattered, and everything. England lose their 7th wicket. And Haris Rauf, I have not seen him this intense in quite some time. England require 37 of 21. England still have batting left because they bat till, I don't know, what, till Reece Topley. Topley's the worst batsman of them all. But I'm not going to say that because I'm not going to say that too often, because then he'll come out and score some runs. But who does England have next? I believe the next batsman in should it be Adil Rashid? Let's take a look, my friends. Let's take a look. It's Ollie Stoner. Yeah, so it should be Adil Rashid who comes in next. And it will make things extremely, extremely interesting. For everyone watching, please do like, share, and subscribe. Please like this video. Like, thumbs up, really helps the channel. Please subscribe for content on Pakistan cricket over and over again. Really would appreciate that. Thank you so much. Adil Rashid on strike. Haris Rauf back over the wicket to the right-hander. Get ready to bowl. And he's running in. Adil Rashid on strike. And it's full, it's straight. And Adil Rashid drops it and takes the single. Runs off. Smart move by Liam Dawson, just saying, yeah, let's go, let's go. I need to be on strike. You come on to the other end. Good running there. England move on to 131 for 7. 36 needed of 19 deliveries now. Is that right? 20 deliveries, sorry. 36 runs needed of 20 deliveries. Liam Dawson, yes, he's batted at 100 strike rate so far, but he's looked pretty damn good, right? He hasn't looked terrible, but he hasn't been performing the way that England probably need him to, which is boundary, 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 boundary. He's just surviving there, which is not too shabby in this instance. Haris Rauf to Liam Dawson. Full, it's straight. Dawson plays it to backward point for a single. England move on to 132 for 7. And Haris Rauf, great comeback after the 2 boundaries at the start of the over. He picks up David Willey and then only 2 singles after that point. Good comeback for sure. Hadn't seen Haris Rauf this animated in quite some time, so it was good to see him celebrating this wicket because of the 2 boundaries that were hit previously on in this over. Last ball of the over on actually off stump, but Adil Rashid plays it through backward square leg for a couple of runs. Yep, they came back for 2. Good job. And England move on to 134 for 7. 33 needed of the last 3. England need 11 runs and over
to win the match. 33 runs required off 18 deliveries. Will they do it? We'll have to see. 50 people in the chat. Thank you so much for joining. Please do like, share, subscribe, hit that thumbs up, hit that notification bell. Really helps the channel, really helps me do this on a consistent basis. Not just me, but the Urdu commentary as well. Thank you to FM 106.2. Really do appreciate that. But genuinely, Pakistan deserve to be bowling this way, right? After a not a very good batting display. They needed to come back strong. Picked up 3 wickets in the first 2 overs. England came back. England got 30s, 20s by their batsmen. But in the end, right now, England are the team that is under pressure. Hasnain to continue. I said that. And Liam Dawson dispatches him. I say Pakistan, England is under pressure. And Hasnain bowls a half volley. Not a half volley. He pulls it full, but not a Yorker and not a good length delivery. Therefore, Dawson gets on top of that over long off for a huge maximum. England. Oh my goodness. I should say nothing. I should say nothing about this. All right. Beautifully hit. 81 meters over long off. And again, the over starts off positive for England. 140 for 7. Liam Dawson on strike. Hasnain running in. What will he do? Hasnain bowls a slightly slower one, and he guides it past short third man. That's another boundary. What an over. What a beginning of an over for England. I should take back everything I said. Liam Dawson is genuinely has realized that, oh, I just need to get boundaries now. He has nothing to worry about. Beautifully timed, great gap detection, and goes past short third man. 4 runs. And no, don't. Hasnain, man, that's a no ball. And that's a free hit coming. Oh, my goodness. How long is his stride? Goodness me, that is a huge no ball, Hasnain. What are you doing to me? What are you doing to Pakistan? They need 22 of 17. They need 22 of 17. This is an outrageous over so far. Oh, my goodness. Oh, my God. Are you kidding me? Are you kidding me? Liam Dawson hits that through the gap between deep mid-wicket and long on, and that's gone for another 4. Mohammad Hasnain, literally his brilliant bowling in the first 3 overs, absolutely dismantled in this one. He bowls a no ball. He gets hit for 6, 2 boundaries. Pakistan are back under pressure once again. England only needs 18 to win. They need 18 of 16. It's pretty much a runner ball. Liam Dawson genuinely has brought the game back into England's hands. And I'm going to make a bold prediction. I don't see Pakistan winning anymore. I don't see Pakistan winning at all based on this. Mohammad Hasnain bowls a shorter delivery. And what are you doing, Hasnain? You have a short third man. And Liam Dawson guides it over short third man. That's another boundary. 14 needed. 14 needed of 15. Sensible batting. Exactly, Andy. Sensible cricket would have won this a while ago. That's very true. But this is sensible batting from Liam Dawson. 14 runs required of 15. This over. 22 runs off the over in 3 deliveries. That's what happens when you bowl a no ball. That's what happens when you miss your length, especially in the death. Thank you, Andy. Thank you for your comment, by the way. Oh, this is scary. This is scary as anything. 6, 4 no ball. 4, 4. Are you kidding me? No. Hasnain once again to Liam Dawson, and he hits that over square leg to the boundary. That's another 4. This over is the worst over of the match. This is horrible. This is absolutely horrendous from a Pakistani perspective. They need 10 of 14. They need 10 of 14. This over has been a horror show. 6, 5, 4, 4, 4. What's that? That makes 23 off the over, and there's still 2 balls remaining. It's a really enjoyable series, though, Asjad. That's very true. That's true, Andy. That's very true. Sorry for the throat, by the way. Yeah, it is true. It is an enjoyable series. It's just really disappointing because I had to
I needed, I wanted to do the last 5 overs in the death and stuff, but now Pakistan is bowling horrendously. So, I'm not too happy about it personally. 10 runs needed of 14. Hasnan to Dawson, good delivery. This time, the ball pitched, moved into Dawson. He defends it. A dot ball. Yes, dot balls are important, but we need to get Dawson out. Hasnan, you need to bowl Dawson out. That's all you need. You got to do. Don't got to do anything else. Right now, just get Dawson out. Dawson has played a gem of an innings, a cameo for lack of a better term. What a cameo. 29 off 13. Before this over, he was a runner ball. He was 100 strike rate. Now he's 223. Goodness me. Last ball of the over. Hasnan to Dawson. Once again, he plays it to cover, and England go for the single. Liam Dawson is back on strike. England needs 9 from 12. Dawson is back on strike. Haris Rauf will probably bowl the next over. 158 for 7. England. England are winning this, right? Yes, we've got... Actually, do you know what? We've got 3 more matches after this. If England wins this one, England only needs to win 1 out of the 3 in Lahore to win and take the series. This is... Oh my goodness, that is crazy. That is madness. England are probably going to win this one and then lead the series 3-1 until we go to Lahore on Wednesday. And he says a dot ball, a forward defensive. Love it. I know I'm a dinosaur. No, it's fine. I appreciate a forward defensive. I would have appreciated a forward defensive all this over, this entire over. If everything was a forward defensive, I would have been very happy, Andy. Not going to lie. Would have been ecstatic about it. Whew. Last 2 overs. Look at Babar. Babar's like, what did I do? Why did I give the over to Hasnan? What did I ever do to deserve this? Oh my goodness. Madness. Absolute madness. This. Haris Rauf to continue. Let's hope he has more luck in this over. Good Yorker there to start the over. And this is kind of what Haris Rauf does on a regular basis. I'm surprised though, Hasnan and the way that he bowled there. Very surprised. Ibrahim says Pakistan just let England back into the match. Yeah, they did. Do you know who did? Mohammad Hasnan. I can't. Oh, 1 over behind. That means in the last over or even this over, I think that means Pakistan is only going to have, is only allowed 4 fielders outside the circle, right? Haris Rauf to Dawson. Dawson pulls that one, and that's running away to the leg side boundary. That's gone for 4. That's gone for 4. England move on to 162 for 7. And this is a clinical performance by Liam Dawson. 34 of 16. My dad said this to me. He said, Dawson can bat. I was like, yeah, but can he do this? Let's see. Let's take a look. I think David Willey probably can, but Dawson alone might not be able to. I eat my own words. He is a very talented batsman. He's outstandingly brilliant right now, right? 34 off 16. Exactly what the English team ordered, and he delivered. Haris Rauf, another shorter delivery. And a good catch. Dawson goes. Good catch by the short mid-wicket fielder. But is it too late? Is it too late? Possibly. Andy says 9 runs, 12 balls. I can see 9 singles looking at the field. Could have been, right? Could have been. Jay Solanki says, what happened? Jay? About what? Which part? Right? Because Hasnan just got spanked for like 24 runs in his over, which brought England back in. England needed 33 of 3 overs, and then they needed 10. They needed 9 of the last 2 overs because of the way Liam Dawson, who is now out, thankfully, from a Pakistani perspective, 34 of 17. Thankfully, he is out, but Dawson played a gem of a knock, a gem of an innings. Told you about Hasnan. He's not good enough. He's easily put off his game. That's true. That is true. I don't think that statement is fully true. I think he is good enough. He's just not a death bowler. I think Hasnan, as a last 4 over bowler, should not be bowling in the last 4 overs. That's my take, at least. Andy says, interesting now. No need for that shot. It's stupid. You know what? I think he just thought it would actually connect a lot easier, and it didn't connect as well.
But yeah, not the ideal shot. Oh! Harris Rove gets him! Harris Rove gets Ollie Stone! Ollie Stone off stump, gone! Smash back! Wicket! Another wicket! England are 9 down! I don't know why I'm screaming. I think my daughter's gonna wake up. But England are 9 down. 162 for 9. England require 5 of 8. Ollie Stone is gone. He came in at number 10. First ball, a beautifully delivered, not in swinging, but kind of tailing into him. A delivery that smashes off stump, and Ollie Stone is gone out. Has gotten out. Harris Rove has picked 2 in 2. India won, yay. It was an intense match. Yeah, I heard. I saw like the details, but yeah, India won on the last ball, but they deserved to. The way Surya Kumar Yadav and even Virat Kohli batted, they deserved to win. Yes, sir. Harris is good. Is a good death bowler. He is indeed. He is indeed, my friend. Oh my goodness. I need to refresh this because for some reason it's not showing us the 9 wickets. Oh my goodness. Edge of the seat. Crazy, crazy things happening right now. Harris Rove on a hat-trick. Reece Topley on strike. A good Yorker. They're appealing. It's going down leg side. It's going down leg side. Why are you appealing like crazy? Why? Okay, yeah, you've got reviews. That's fine. That delivery was 155 kilometers per hour. That was quick. Pakistan review. So Pakistan review this one. It looked like it was going down leg. Like, it makes sense. It was going down leg. But I'll tell you something. I said Reece Topley, he might just win it for England at this stage. Beautifully in-swinging delivery. Yeah, that's missed everything. That was going to miss the stumps by like ages. Andy says England have dragged themselves back into it, then thrown it away. Daft cricket. Yeah, crazy cricket, isn't it? Cricket is a funny game, right? I can't believe... Okay, I'll be honest. I don't trust Wasim Jr. in the last over. So Harris, finish it off at this one if we're gonna win this. Otherwise, just let Wasim get spanked, man. Goodness me. Oh, Pakistan needs 1 wicket. England requires 5 runs to win the match. As a review means it's a dead ball, no run for England. That's what I was gonna ask. That's what I was gonna try and figure out. But that's smart. That is smart if that is the case. I'm pretty sure that's the case. Oh, smart bowling, smart tactics by Babar Azam. Yeah, that was smart. That was very smart. Because I was thinking that, but I wasn't 100% sure. But Ibrahim, as always, the cricket connoisseur 2.0, for lack of a better term. Harris Rove, last ball of his over. 4 runs needed. Actually, they have given the run, by the way. They have given the run. They have given the run, guys, just to clarify. That's what I used to think, and I wasn't sure, but I'm glad it's been clarified. Beautiful delivery by Harris Rove to end things off. Adil Rashid trying to guide it down third man, but a dot ball to end the over, the 18th over. Harris Rove, what a beast, man. Love him. 4 needed of 6. 4 needed of 6. Last ball, 163 for 9. England just need 1 hit. They need 1 hit, and England have won this match. So if you review, the run does count. It does count. We've just seen it. It does count. Inside edge, Chinese cut. I will take anything now. Andy, that's probably what's going to happen, right? That's probably what's going to happen. So Wasim Jr., just Yorker on off stump, bro. That's all you need, a Yorker on off stump. Oh, my goodness. Reece Topley on strike. Oh, my goodness gracious. Jay says, I think you need a wicket. We do, yeah. 1 wicket and Pakistan wins. Otherwise, I think England's going to take this one. 4 runs off the last over. Yes, it's the last pair, but it's just 1 hit. It's 1 boundary. It's just 1 boundary. So we can't disregard anything. Jay says, run out chances. You have to take chance. Yeah, agreed. Totally agree with you. Wasim Jr. to Reece Topley. He defends it. Wants to go for the single, but short cover. Runs in. Good fielding there. Collides into... Shan Masood collides into Adil Rashid. Dot ball. 4 runs needed of 5. 4 runs needed of 5. Oh, my goodness. This is scary stuff. It's genuinely scary stuff. Not going to lie. This is scary from a Pakistani perspective. It's scary from an England perspective. This is also edge of the seat. Oh, my goodness. Oh, goodness.
I have to say goodness too much. Like I have to try, no doubt. Beautiful delivery. Yes! Is that run out? Is that run out? I think Reece Topley's run out. I've got a feeling Reece Topley might be run out. Oh my goodness. Can Reece Topley be run out? We don't know. We don't know. No, actually, he's been given. Pakistan wins by 3 runs. Pakistan wins by 3 runs. Let's bring Rudy back for this. Oh, yes. Pakistan wins. Pakistan wins. What a victory. Out of nowhere, Hasnan helps Pakistan almost lose this match. Oh, my goodness. Direct hit by Shan Masood. Reece Topley is a yard out. He's diving. He's diving and everything. Oh, my goodness. Pakistan have won this match. The series is 2-all. The series is 2-all. Goodness me. Andy, I hate this bloody game. Out, Defo. Thank you very much for that. Pakistan Zindabad. Thank you, Haris. Thank you for that. Jay says, I think this is where the bowling team is under the most pressure. They are. But Shan Masood with a direct hit. I believe it was Shan Masood. Hasnan should be appreciating this. Okay, Hasnan should be like, thank God I didn't lose it for Pakistan, because he had the worst 18th over I've seen in quite some time by a Pakistani bowler, right? Probably since Shaheen Afridi last year against Australia or whatever that over was. But genuinely, Hasnan had a horrible over. Then Harisov came back, got hit for got hit for a boundary, and then picked up Dawson, then got Ollie Stone, and then Pakistan tightened the screws to say not many runs. They needed 5 of 8. They needed 5 of 7. They needed 4 of 6. They needed 4 of 5, and then the run out. Fantastic. Pakistan have won the second match. We have a situation where we are now sitting pretty much the same position we were 2 matches ago, which means the series is tied at 2-2 at the moment. It's tied at 2-2. Goodness me. Absolutely brilliant that. Shan Masood, indeed, Haris. Handy says, well played, Pakistan. Can't help but admire the game. 100%. Pakistan for sure. Jay says I was saying you need good fielding at this point. If you overthrow, you lose. Yep. So good fielding and good bowling under pressure is required. Very good bowling, especially death bowling execution. Yeah, last 2 overs were sensational. The third last over was not sensational. It was horrible. I feel so bad for Hasnan, but Pakistan deserved to win this game based on how they brought themselves back into it. The way Pakistan bowled, once again, it's been a while since we've said this, but Pakistan, number 1, win a match after batting first, right? But also win a match because of just their bowling, right? Their bowling was absolutely crucial. Their fielding wasn't the best ever, but it was very good. Their fielding was a lot more impressive than it has been, not just throughout the series, but for quite some time, since the Asia Cup, right? Since the Asia Cup, the fielding has not hit its mark over and over again. But today, fielding was pretty good, right? There was 1 drop catch I could think of. There was some really good outfielding by Wasim Jr. and by Haris Rauf and others, and Khushal Shah as well. But overall, and Usman Qadir with that amazing catch. I think that's why he didn't bowl. Maybe he was injured. But Usman Qadir took a fantastic catch. England lose. Pakistan win by 3 runs. That's it. They win by 3 runs. Whew. This was a match and a half. This was an edge of the seat. Not gonna lie at all. And he says, see you next time. Asjad, great series, enthralling cricket, but bloody hell, England could have simply nicked singles and kept wickets in hand. No excuses, though. Enjoy the way Pakistan played the game. Thank you very much. Thank you, Andy. Same here. England played brilliantly, not just with the ball, but with the bat. The way Brooks and Duckett, Brook and Duckett, and then Moeen Ali. Moeen Ali was great. Moeen Ali was fantastic today. So very happy about that. And as always, thank you so much, Faizan Khan. I genuinely appreciate it. Thank you so much for the super chat. It's very kind that you keep doing this. I really appreciate it. Thank you so much. Faizan says, and this game deserves a super chat. I have no words right now. Neither do I. It's very hard for me to talk right now. Thank you so much, Faizan. That is very kind of you. You do this almost every time. I think pretty much every time, not even almost, pretty much every time. I genuinely respect it. You don't have to. You don't need to, but thank you so much. It's very kind of you to do. But alhamdulillah, thank you so much for this. And thank you, everyone, for watching. Please like and subscribe.
Thank you so much, Pakistan, for doing what Pakistan just did. Haris Rauf, 3 for 32. Mohammad Nawaz, 3 for 35. You saw it, Hasnan. If you forget Hasnan's last over, he went for 2 for 15 or 2 for 16 in his first 3. And then he was smashed in his final over. Mohammad Wasim Jr. did a pretty good job. Not the greatest, but he did a decent job. And Iftikhar Ahmed, who would have thunk it? Most economical bowler by Pakistan today. Great job. Absolutely brilliant. Very happy about the way Pakistan fought back today with the ball, especially after they started losing wickets while batting, and the momentum could not have been shifted any further until Asif Ali came in the last over and hit 2 sixes to get Pakistan to the 166 mark. Otherwise, it looked like a tough go. And I said, to me, par was 180. I think Pakistan bowled beyond themselves to be able to win this match, and they played a fantastic game with the ball. Yes, there were issues here and there. However, can't disregard we won the match, all right? That's one end. But there are issues that need to be worked on, especially the death bowling, who to pick, right? Hasnan should not bowl in the last 4, right? If he does bowl in the last 4, I'm glad he only bowled 1, which was the 17th or the 18th or something like that. I think he shouldn't bowl after the 17th over, Hasnan. I don't think he should. He is easily targetable and he can fluctuate. But thank you to Haris Rauf and Mohammad Wasim Jr. at the end, who came in strong and allowed Pakistan to win this one. No, Jay, it's a 7-match series, so there's 3 more matches, but the venue is going to change from Karachi to Lahore. The matches will probably be Wednesday, Friday, and Sunday, if I'm not wrong. So do join us if you're interested. Yeah, 7-match series. Yeah. I think it's 7. England will win the next 3. Thank you for saying that. I hope they don't, though. Is batting going good now? Well, England's batting has been all right. It's been pretty good, I think, in this series. Pakistan's batting, again, the middle order has not fired enough. Asif Ali played today, and thankfully he did, because he had 2 sixes to get Pakistan to 166. He should have come in before Khushal Shah. Should have come in at 4, because Pakistan were only 1 down till like the 17th, 18th over. And then Shah Masood, who didn't look great today, got out. So yeah, Asif Ali should have been sent earlier. It was a good match. Like, as a neutral, it was a match that I would appreciate. I would have said, yeah, this is a really good match. But even as a Pakistan fan, I'm okay with the result. I'm okay with where we are. Pakistan win this one. Let me just quickly run through the match. It might be easier for people who are just joining, but thank you everyone who has joined us. Please like, share, subscribe, all that good stuff. As always, thank you for making time to watch me do this. I really appreciate it. Genuinely, really do appreciate it. So, Pakistan have a solid start. Once again, 82 runs in the first 10 overs. Babar Azam and Rizwan looking good. Babar Azam tries to be aggressive, gets out. Rizwan goes into his shell once again. Shan Masood doesn't look to be able to connect. He's trying to be aggressive, but England has found out his strengths. Hence and therefore, he isn't able to do what he wants to do. He gets out in the 18th or 19th over, and Khushal Shah comes in, can't connect the ball to save his life. Rizwan has to be aggressive, can't connect the ball as well as he'd like. Then Asif Ali comes in, hits 2 sixes, gets Pakistan to 166. In terms of the England bowling, Liam Dawson was good. Reece Topley was outstanding. Until those 2 sixes, Reece Topley was unbelievably good. The bounce, the change of pace, everything. Reece Topley was a star for England. Ollie Stone on T20I debut was very good. He was quick, but he was the one that Pakistan did target and used his pace quite well. Adil Rashid, as always, economical as a beast. And David Willey, in the end, was one of the best bowlers, who initially started off quite waywardly, and his last 2 overs came back and allowed England to come back into it. Pakistan couldn't score off him as easily. When England came out to bat, Pakistan, the first 4 balls, Salt was 8, right? The first 3 balls, sorry. Salt was 8. Salt was on a roll, 2 boundaries, and then Mohammad Rizwan got him. Mohammad Nawaz got him trying to sweep shot over deep mid wicket and gets caught. Salt goes. Next over, Hasnan gets Alex Hales. Caught Usman Qadir. Fantastic catch at short mid wicket. One-handed, left-handed, caught diving to his left. Then Will Jacks bowled. Again, similar to how Alex Hales got out against Dahani in the second T20I. Similarly, Jacks expected the ball to bounce a bit more. Missed it. Hit middle stump. Jacks was out of there. Then it was Duckett and Brook. Solid partnership once again. These two find a way to just score runs and stay consistent. Then Duckett goes because Mohammad Nawaz, LBW,
Impact on off, hitting middle. He goes trying to sweep once again to Mohammad Nawaz. Harry Brook and Moeen Ali have another solid partnership, but Moeen Ali tries to hit a few sixes and fours, and he connects. He is looking amazing. Iftikhar Ahmed, though, Pakistan brings in Iftikhar Ahmed, and he is the most economical bowler by Pakistan in this particular match. Didn't expect it. He did a fantastic job. Moeen Ali then has to face Mohammad Nawaz again, and Nawaz goes through the gap between bat and bad when Moeen Ali is trying to come down the track and bowled. Moeen Ali goes for 29. Shortly after, Harry Brook goes. Mohammad Wasim trying to smash it. Mohammad Stan takes it. England are 6 down. You have David Willey and Liam Dawson. And my assumption and my expectation was, Pakistan's going to win this one now, right? 33 needed of 3 overs. And then Mohammad Stan's fateful, horrible, horrendous, worst over that I've seen him bowl in quite some time. He bowls that, and Liam Dawson gets 24 runs. Liam Dawson takes advantage. 6, no ball 4, then another 4, then another 4. Fantastic over from an England perspective. Dawson gets England the advantage. England need 9 runs of the last 2 over, and Haris Rauf bowls. First ball of the over goes for 4. England needs 5 of 11 or something along those lines. And then Haris Rauf bowls a beauty. Bowls a beautiful delivery. A shorter ball, a shorter delivery, trying to elicit an irregular pull shot from Liam Dawson, and that's what he does. And it's caught very well by the subfielder, Mohammad Haris, which is also why I think Usman Qadir might be off the field, which is why he didn't bowl. That's another thought. That's, again, we'll have to go into it later on some other time. Liam Dawson goes for a really well-made 34 of 17. Then Ollie Stone, full straight on off stump. Ollie Stone goes golden duck by Haris Rauf. Then Reece Topley is on strike. Reece Topley can't connect to save his life, but there's an LBW call to take a single. England need 4 of 7. Another dot ball by Haris Rauf, 4 of 6. Next over, Reece Topley can't take a single. Second ball, Reece Topley tries to go for the single, but Shan Masood runs in like 100 miles an hour from short mid-wicket and throws it direct hit onto the non-striker's end. Reece Topley dives. He's out by a yard, at least a couple of yards. Pakistan take the 10th wicket. Pakistan win this match by 3 runs. What a fantastic match. Again, with the bowlers, Nawaz picked up 3. Everyone picked up wickets apart from Iftikhar Ahmed. But for me, even though we talk about Hassan's last over, his first 3 overs were sensational. And then Haris Rauf's 3 wickets, absolutely crucial. At a crucial moment, he keeps doing this over and over again. So very, very happy about that. Goodness me. Fantastic. I'm going to go through some of the last comments here. And he says, night all, thoroughly enjoyed it. See you next time. See you, man. Thank you so much. That 155 Yorker by Rafi, that was down leg. Yes, it was. Any interviews coming? No interviews, unfortunately. Not anytime soon. I have tried to reach out to many people. They've not really said yes. Let's put it that way. Fazan says, Asjad, be honest. Were you also hoping that Wasim remembers the Mankad rule towards the end there? I know I was. I was too. Not going to lie. I was as well. But I'm glad we won this way. This made sense overall. But yeah, thank you everyone for watching. Please do like, share, subscribe, do all that good stuff. The series is now tied at 2-2. We've got 3 matches remaining. Wednesday, Friday, Sunday, I believe. Can't wait. I think South Africa, India is going to be around the same time. Thank you so much. Until next time, take care, stay safe. And hopefully, Haris Rauf gets the man of the match, but I think it's going to be Mohammad Rizwan. Thank you, everyone. Oh, wait, I've got last comment. Andy says, enjoy your post-match comments. Shows a total understanding of the me and well summed up. Oh, well, thank you. But half a dozen sensible shots would have won it for England. Yeah, that's actually true. That's a very valid point that Andy raises there. Because England were just going for the aggressive approach rather than thinking about singles. They could have easily gone for the singles. They needed 5 of like 10 deliveries or something. They could have gone for the singles, but they didn't. That's a huge loss for sure. Thank you, Andy. Really do appreciate that. Ibrahim says, why did Usman Qadir play today? Yeah, same here. I think maybe he got injured after taking that catch. I've got a feeling maybe he got injured. I don't recall anything. If not, fair enough. But I just think in my head, it's like, oh, maybe he got injured. That's the reason why. Although, I'm glad he didn't because he was going to get spanked today. Spanked indeed. So, yeah, if you do know who the man of the match should be, in my opinion, I think it should be Haris Rauf.
the batter of the match. Yes, Rizwan, the bowler of the match for some reason is whoever it is, whatever it is. Thank you, everyone. Until next time, take care, stay safe, and catch you in the next one. Bye, 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 bye.